On behalf of JSPM Rajarshi Shahu College of Engineering, I, Dr. Kavita Moholkar, extend a very warm welcome to all our esteemed guests, faculty members and participants. Today, as we embark on a journey of knowledge and enlightenment with our 8-day AICT-sponsored faculty development program on Universal Human Values 2, we are very fortunate to have dignitaries on the dais. Our chief guest, Dr. Abhay Jere sir, our director, Dr. R.S. Joshi sir, Mr. Anil Bhosle sir, Dr. A.S. Devastari sir, coordinator, Dr. Sunita Yadav ma'am, and my dear participants. To begin this auspicious occasion, let's invoke the blessing of the divine. Please rise as we come together for e-enlightening of lamp and have Saraswati Vandana. Thank you, sir. Thank you for that beautiful and soul-rending radiation. May the grace of Goddess Saraswati inspire us and guide us for our learning journey today. Now, it's time to honor those who have graced us with their presence. Let's begin the felicitation of our esteemed guest. I invite Dr. R.S. Joshi sir, Director, JSPM and President, TSSM, to come forward and present a token of appreciation to our guest, Vice Chairman, AICT, Dr. Abhay Jere sir. Thank you, sir. Now I request Director, Mr. Anil Bhosle, sir, to kindly felicitate Mrs. Anita Mani, Observer, AICT. Thank you, sir. Now I request Dr. N.S. Muzumdar sir to felicitate our resource person, Mr. Umesh Dadavji. The co-facilitator, Mr. Amesh Kolte sir. Mrs. Lipika Maitra. Thank you, sir. It is indeed a privilege to have such distinguished guests with us today. To set the stage for today's program, I now invite our esteemed director, Dr. R.K. Jain, to deliver the welcome address. Good morning, everybody. And my greetings for the
very auspicious day. Today we have starting our this program on the Ashadi Ekadashi. So I think it's a good thing starting on the good moment and good time. It will give really a good fruits also. So my greetings for the Ashadi Ekadashi and friends. Indeed, it's a great pleasure, honor to welcome Vice Chairman of EICT, Dr. Abhay Jeri sir, a leader, a technocrat, an administrator, a motivator. Sir, really, from the bottom of my heart, my institutions, thank you for accepting our invitation and being here. And whatever guidance you are giving, we are always following it. Today we have our own Dr. R.S. Joshi sir, President of JSPM University, our Director, Anil Bhosle sir, Madam Mani, who is observer from EICT. We have coordinator Dr. Sunita Yadav, our Deputy Director Devasli sir, Vice Chancellor of COP Technical University Virud sir, all other facilitator and our resource persons from EICT for this course, principals from various colleges and principals from JSPM TSSM group, all the faculty members, deans and my dear students, and last but not the least, participants, those who have come from all over the country. I extend my warm welcome to everybody and thanks everybody for being here. Rajarshi Shahu College of Engineering and empowered autonomous institutions under Savitri Bai Phule Pune University. Sir, we started in 2001 with a group of edupreneurs. They came together, started this college, and in the journey of 24 years, under the leadership of Dr. Tanaji Sawant, sir, we have grown, in which we are recipient of Best College Award from our own university, Savitri Bai Phule University. We are recipient of Best College at state level by the group of unaided colleges association, and I proudly say that we also Best College, Best Teacher, Best Student and Best Principal Award, all at a time in year 2020 from one of the oldest technical body of our country, that is IST. These are the laurels to our college, sir. We are NV accredited 4 times. Sir, we are also having all UG courses and 2 PG courses accredited by NBA. One of the best grade in NEC. Because of all this, we proudly say that student and faculty of this college are student-centric. We are trying our best to make our student most comfortable person in the campus. I proudly say here, sir, IIC, which is your brain and you are the driving force for that. Here we are running this IIC since from the first day, and today, sir, we are the mentor institute helping other 5 colleges, and we are doing many other activities regularly which are given as per the calendar, even more than the calendar given by the EICT. In the area ranking, sir, another your initiative you conceived that, sir, we are among the top 25 institutions in the country in the private college category. And sir, another very important thing which you have brought in this country is the Smart India Hackathon, which has reached almost to every student in this college. Sometimes it is becoming difficult us to choose top 100 projects. And sir, I proudly say that many times our students are finalists and many times they have brought laurels and they got the award also. So sir, thank you very much for such innovative things you are bringing to our children, to our faculty members. And we assure you that we continue in future also to follow, to implement whatever thing ICT is given to us. And this USB program is also part of that. We started last year and it was very good response. So this year again we have taken the initiative, but this time we were not knowing that because of our last year results, maybe we got funding, that is one side, and then we have got guest, Dr. Jeri sir. So really it is a very good motivating and
We get energy by doing this, and a person like you coming to the institution. Sir, NEP is the new challenge to colleges, but I proudly say that, sir, Maharashtra government is selected 50 colleges last year in year 23-24, and we are among that. We started NEP last year, so now our students are in second year. And UHB, which we are learning here, so that is a 2-credit course in our curriculum, where Dr. Yadav madam and her team members, they are taking, and we have got full-time teacher to impart this course to the students. So we are imparting this course to every student, and we are ensuring that maximum teacher of this college will attend this course at least once. Along with UHB, sir, there are many other initiatives. We can say like IKS and other things we implemented in the curriculum from last year, and students appreciated those things. Being autonomous college and now empowered autonomous institution, sir, and when NEP has given the input to us, sir, we can say we have got very good tie-up with the industries. For every discipline of every program, we have got connected with at least one industry where they are helping us in curriculum design and maybe some other activities also for faculty developments. Example, Persistent supported us, sir, for design of the curriculum of Information Technology Department, and they have given some tracks. We are following that, and our students are really getting benefited. Industries like TCS, KPIT, Capgemini, Tech Mahindra, sir, they have suggested some modules. We are following those modules, and our students are really getting good packages. They are getting good learning through those. Not only industry, sir, some of the top institutions in the country are also associated with us. For example, IIT Indore and IIT Roper, so we are part of them. Our mechanical curriculum is entirely suggested by IIT Roper. So they are supporting in curricular development. Along with that, sir, our faculty members also getting, training from the faculty members at IIT Roper. They are visiting for at least 1 week. They are spending their time. Many students of my college are also getting now, sir, internship IIT Roper. We are not trying for nationally, sir, we are also trying for internationally. There are many universities, maybe from Taiwan, maybe from Thailand, Malaysia, Singapore, US, France, Australia. We have got tie-up, and our students are really getting good benefit of that. We are trying to bring them, to transform them into a global personality. And for that, sir, we are doing our best. Especially our Taiwan is a very good success story, sir. I'll share with you sometime. So this is what we are doing, sir. Ultimately, once again, I conclude, sir, this is a very student-centric organization where we are imparting best technical education to our children. We are trying that they should be a best citizen of the country. They should be having global competency on whom everybody should be proud, and ultimately they will be helping the society. And this is, I think, what NEP says. And ultimately they are going to contribute in making our country a proud country, a knowledge superpower. So this is what we are doing. So once again, I thank one and all. I assure all the resource persons, those who are here in the UHB and all the participants, I'll try to do my best to provide you the best hospitality and better resources so that you can learn. There'll be a good learning environment for next 8 days. And I hope that all the teachers, those who are here to learn this UHB 2 Pro course, ultimately they will bring this learning to their children, to the student, so that our student will be more sensitive. They will be taking care of the society in better way. And that is which is expected from this course. So once again, thank you to SAT for sponsoring this course, and thank you, sir, for coming here. Thank you very much. Thank you, sir. Now I request Mr. Umesh Jadavji to kindly give the overview of this faculty development program. I request to play the presentation. Council for Technical Education के वाइस चेयरमैन डॉक्टर अभय जेरे सर,
उपस्थित सभी dignitaries, participants, students, faculty members. I, on behalf of UHV team, would like to welcome you for this 8 days faculty development program on universal human values. Thank you, Jain sir, for taking us through the progress and the development of this organization. We have good achievements, in terms of jobs, in terms of skills. So the organization as an individual and the country as such whole, we have become one of the superpower in terms of skill developments. Not only in India, but all over the world, you will find the Indian students and the people who have studied in India are taking lead roles in running the industries, in running the skill development programs. From today to the next 8 days, we are going to discuss on the complementary things on the skill development, and that is values. So this 8-day workshop is basically preparing faculty members on universal human values. If you look into your individual aspirations, then you find that each one of you would like to be happy, you would like to be prosperous, and not only in happiness and prosperity, but you want to ensure the continuity of happiness and prosperity. So these are our individual aspirations. When we see the collective aspirations of human being, as a country, as a world, we want peace. We want harmony in the society, harmony in the nation, harmony in the world. And each one of us are following these individual aspirations and the collective aspirations. The new education policy talks about these things. How an individual aspirations will be fulfilled, and all these individuals through the personal transformation will participate into the societal transformation of the country and the world as such. These are the aspirations, but if you look into our concerns, today stress is a big issue. Depression. I mean, I'm not going to list down all the problems we are facing through today, but if you look into the individual level, most of the individuals are going through some sort of trauma, suicidal thoughts, depression, tension, frustration, addiction to some sort of substance, not being able to ensure the health of the body, even after completing their education, seems to be very confused about the life. When we look into the family, there are lots of issues that are happening in the interpersonal relationships between spouse, parents and children, brothers, cousins, siblings. At the level of society, we are able to witness fear. And at the level of environment, there are lots of environmental issues like पानी, हवा का स्तर दिन ब दिन खराब हो रहा है. ये सब हमारे कंसर्न्स भी है, इंडिविजुअल लेवल से लेकर नेचर के लेवल तक. इंटरेस्टिंग बात अगर हम लोगों ने ऑब्जर्व की तो दिखाई देता है कि पिछले 30, 40, 50, 60 वर्ष के इतिहास को अगर हमने देखा तो पूरे देश भर में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का नेटवर्क बढ़ रहा है. देहातों में भी स्कूल आ चुकी है. एक छोटे टाइप का अगर शहर रहा तो वहाँ पर भी हमारे कॉलेजेस है. If you look into the number of people who are going through the process of education and spending minimum 15 to 20 years in education are also increasing upon. So it's a very simple question. If the number of people who are going through the process of education spending 20 years in the schools and colleges, then these concerns, problems, they should have been decreased or increased. But what is happening? Now just try to look into all these issues which we are facing from individual to the national and international level. What do you think? Most of these problems are due to the lack of skills or lack of values?
it is due to the lack of values. And that is the reason All India Technical Council for Education, AICTE, has taken a small step of inculcating value-based skill education. We should be proud of our technical association, AICTE. This is the only technical body in the world who is talking on value-based skill education. Because they have found that we need to develop the world vision into our students so that they will be able to appreciate the human values, and with these values, it will get translated into their conduct and the living. Now, why this value education has needed today? Because if you look into all this educational reformations committee, I have reports of minimum 18 educational reformations committee established since 1982, even the Supreme Court, right? All these things, these reports and the Supreme Court is saying that the values are declining. And we need to inculcate value into our mainstream of education. So this value education, the human education, will help our students to have a holistic and the human world vision, जिसके साथ में वो ह्यूमन वैल्यूज़ को पहचान पाएंगे. ह्यूमन वैल्यूज़ को पहचानने का अर्थ ये होता है कि they will be able to participate to ensure the development and the harmony from individual level to the existence level. At the same time, the skills are required, the skills for living with the human conduct, which results into a human society. So this is the whole philosophy of universal human values. If you look into our present state today, it's a simple question. What do you think, the inhuman behavior is increasing upon, or the human behavior is increasing upon? So if you impart human education, the human behavior will get shaped. And that's the reason AICTE has taken this initiative to impart value-based education. So this is a crucial link which has been missed out from our education for many years. And that link is basically the value education. There's a need for human value education. I mean, if you even look into our preamble, constitutions, it talks about justice, it talks about humanity, it talks about liberty. If you say Mulya Prabha 2.0 document published by UGC also talks about the value education. AICTE is actually working on imparting value-based skill education. United Nations has also come along with the Sustainable Development Goals. Our new national policy for education 2020 also talks about the same thing. So right from our constitution to AICTE to UGC to United Nations, everybody has found that there is a need for value education. In fact, these are the aspirations articulated in National Education Policy 2020. Education is fundamental for achieving full human potential, developing an equitable and just society, and promoting national development. Skipping these few slides. So if you look into the efforts has been taken by the human beings, right from our origin of our race. Most of us have tried to understand the truth, the ultimate realities which exist in the whole existence. All those who have realized this truth, they try to explain this truth to the people so that people would understand love and express the love with the feeling of compassion. So this is the same tradition. Universal human value is not something new, but it's the same tradition of the people who have realized within, and it helped us through their realization. These are the basic guidelines of universal human value education. So when we talk about universal human value, it has to be universally acceptable, which means not based on the caste, creed, color, religion, nation. It should be a rational, verifiable, and leading to the harmony. So we are going to follow these 4 major guidelines
in our workshops, and these 4 major guidelines have also been followed in the development of curriculum for the universal human value. This course basically helps us to understand what is an individual role. What is my role towards myself? What is my role towards body? What is my role towards family? What is my role in the society? What is my role in the nature? And what is my role in the whole existence? This efforts has started in 1980s, the course on science and humanism at IIT Delhi. 2001, MHRD established National Resource Centers in Value Education at IIT Delhi, NCRT and IIM Lucknow. 2005, IIIT Hyderabad experimented this with 2-semester mandatory course on universal human values. In 2009, Uttar Pradesh Technical University, now it is called Abdul Kalam Technical University, scaling up into the 550 colleges. 2011, Punjab Technical University has again took rapidly. 2012 was kind of a breakthrough. Our neighboring country, which is popular, famous for gross national happiness, Bhutan, has also accepted universal human values. And then 2012 onwards, we can see the natural flow. If you look into today, more than 100 universities of every single state of India has introduced universal human value 2 as a 3-credit course and also implementing UHU1 in the student induction programs. These are some of the voices. So basically the whole vision is the human education for the human society. The process of the universal human value is not based on the do's and don'ts, but this is the process of exploration where the students are, the teachers place the proposals and the students are expected these proposals on the basis of their natural acceptance. Till today, we have developed 16 books, 8 different courses for the student, 12 types of faculty development program. We conducted more than 800 plus faculty development program. These are some of the figures. In 2023, 96 faculty development program face-to-face. In 2024, January and February alone, in the 2 months, we conducted 33 faculty development program, more than 187 online faculty development program from it starts on every Monday to Friday, has been conducted by NCCIP, AICT. More than 37 institutions across the India have recognized as potential nodal centers for universal human values. More than 77,000 faculties have already oriented, which means got the universal human values program certificate successfully. And this is one of the most difficult certificate to be achieved. Anita Mani Didi, the observer for this workshop, will let you know about this eligibility criteria for the certificates. So more than 220 universities appointed university coordinators. Every month there are 2 meetings happening with the university coordinators and university co-coordinators online, one in Hindi and one in English. Faculty goes through this faculty development program, but this is a continuous process, the transformation, so need to have lots of follow-ups. So all over India we conduct 18 weekly meetings, and we also organize everyday morning session from 5:30 to 6:30 in English and 6:30 to 7:30 in Hindi. All these things is happening with the network of faculty volunteers. All these volunteers who are rendering their services for the universal human values, they do it on the pro bono basis. They don't expect any sort of cash or kind from host institutions or even from the AICT. These are some of the documents you will already find on AICT portal. All the books are there. These are the websites for the informations. I would like to express my deep feeling of gratitude towards Vice Chairman AICTE, who has been always an unconditional and continuous support for this universal human value education. I also like to express my thanks to the host institution for
organizing this 8 days faculty development program, and I would like to welcome all the participants for this program. Thank you. Thank you, Umesh Bhaiya, for the overview of the Universal Value Faculty Development Program that we are going to start. Now I request Mrs. Anita Mane ma'am to provide the guidelines for the FDP. Thank you, Devi. A very warm welcome to one and all, the participants, the dignitaries on the dais. As Umesh Bhaiya has already informed, this UHV2 FDPs are the efforts which we are trying to evolve so that human values can come up. We do have, but still a more improvisation is required. Now, before I start, I would like to thank Vice Chairman who has been here for the program, and who, because of him, we have 8 days, 8 programs sponsored by AICT, and one of them we are attending today, which we are starting from today. Giving you the guidelines, it's not that difficult, but still, as a rule, we need to know the guidelines so somewhere we do not miss it out. Firstly, I hope everyone has filled up the pre-survey form, because now I think before it will stop working now. So if it was online, and I hope everybody has filled. That was the first criteria. Our program starts in the morning 9 and it will end till 6 o'clock. So we are together from 9 to 6. And in between we have certain 20 minutes break and a lunch break of 1 hour. Here, main thing we need to take into account is at least 90% attendance in each session. We have in a day around 4 sessions and plus 1 as a tutorial. So each session there is a linkage from one session to other session, and 90% attendance in it is required. Then timely completion of pre-survey, post-survey and assignments, whichever are given throughout the day, we need to complete and submit in the next day, if there is any assignment given. Main important part is no cell phones during the sessions. Your cell phones can be kept outside or in a switch off mode or in a silent mode, but not facing you the other way. Let it be in the bags, it will be much more helpful. During the breaks, you can check your important calls and messages. But this is one of the main criteria. See, here we are here to learn something, add on something and communicate with each other. It's not that strictly we need to do this, but for learning, something needs to be given. So these are the certain guidelines, and if we follow, certification won't be far. You will surely get your certificates. That won't be a difficult part. Thank you one and all. That was from my side, and I thank you the host team for allowing us to do the program here. Thank you. Thank you one and all. Thank you, ma'am. It gives me great pleasure to invite our esteemed President, JSPM University, Dr. R.S. Joshi sir, to share his thoughts and insights with us. Good morning to you all, respected dignitaries on the dais, Abhay Jere sir, Vice Chairman AICT, Dr. Birut sir, Vice Chancellor, COEP Technological University, and our governing board member of JSPM University, the dignitaries on the dais and off the dais, and the participants from different parts of Maharashtra and India also. I think I was told there are some parts from outside the state also. Welcome to you all. This is a flagship campus, as the director Jain sir has rightly said. 2001 September 15th we kicked off this campus with our principal as Dr. Vitkar sir,
Probably he is not here today, he is traveling abroad. Abhay Sir knows him. And he took over as a principal, and there were about 11 faculty. Yadav madam was there, Devastri sir was there, and I was there, and as a faculty members. So we started this, believing that yes, we'll make this college a great college in the years to come. But little did we know that it is not one college, but it will be in multiples. The vision which our founder secretary, Dr. Sawant sir, who is currently the cabinet minister for health and family welfare of Maharashtra government, the vision he had was a very large one. It was not one institute, but today we have 6 campuses, more than 65 institutes, more than 50,000 students are there, and 10,000 faculty members teaching and non-teaching together. So therefore, in JSPM, it is not one, but it is multiple. We say we don't have one engineering college, we have 7 engineering colleges. We don't say we have one pharmacy college, we have 6 pharmacy colleges. The new one is coming up in the next month. Not one school, but 10 schools. So therefore, it is a multiple of institutions which we have been running successfully, and this happens to be the 24th year of our existence. When we started this, basically we all came from a polytechnic background. We all had our basic training in teaching in polytechnic. So people didn't give much credence to this. So but in the years to come, we know that as Jain sir said, that this college, the flagship college, has achieved an unparalleled success as far as a self-financing institution is concerned. AICT, yes, all our institutes are accredited by NBA accredited, including our polytechnics, our engineering colleges. So therefore, even in that area, we are at the forefront of delivering quality education to the student. That has been the hallmark of the vision of our founder secretary, Tanaji Sawant sir. Coming back to the faculty development program, yes, whatever we do, student-centric program, and our faculty is at the core for the development. We want them to develop, we want them to have value added to them, not only the years of service, but actually at the end of 10 years, 15 years, he should feel that some value has been added to him personally as well as his career. So with these intentions, we are starting this. As I said, last year, it culminated into the formation of a JSPM university. In 23-24, we started the operations, the first year of the university, although our own people also had apprehensions where the university will run. It's a private university, there's a tough competition. With all this in mind, we went ahead with the cooperation and the well-wishers of the parents and the students. We logged in 2,300 students in the very first year itself of the university. Very first year, NEP 2020 implemented. So all these things we are at the forefront of all the schemes of AICT. We respect that because of that, we could deliver the quality of the students. Arranging FDP programs conducted by AICT, sponsored by AICT, all these things we are, sir, rightly, as I said, we are very much part and parcel of a All India Council for Technical Education. Having said that, today's program, it's a welcome or it's an important initiative. As I said, as sir said rightly, that this value education, yes, all of us, the students learn that. You go to the school education, already it is there as part of the curriculum, but it was not so much into the curriculum of higher learning. And it is time that we are trying to integrate into a part of a higher learning. What is the importance of values? What is the importance of human values? So when this operation, this exercise we did in the university also, so I told the people, we sat down together, we made a list of values. What should our student, our university should represent? What should be the core values of the university? Then during that day-long workshop, we identified some values. Normally, the whole of we are sitting together, how many of us we think of the values, our core values, how many of us we write them on a paper, these are our core values? Very few of us. Very few of us. We don't give much importance to our values.
It is time we stand up and take this into notion, and this workshop will help you to discover your values. Rather, you don't discover the values discover you. You go on practicing that, identifying that, and developing a consistent habit of delivering that, so the values will evolve, and you will be having that values which can direct you in taking a decision, making a choice in your life. Many times, see, the problems are always temporary. Problems are always temporary. If you look at a temporary problem, if that is your driving force behind your choice, then after that you are going to regret that. Because you are taking a choice, you are making a life choice depending on a temporary problem, and then you come back to the choice is not right, you will have to regret that. So how do we go about it? How do we discover our own values? These are the workshops where you start looking inwardly. What are my core values? What values I stand for? How I can deliver them to my own students so that they will also discover their values. And that should be the aim of this workshop, and definitely it is the aim of the workshop. And last year we conducted, and madam said it is an excellent feedback from the students. Students want it. Only thing is, it is the faculty which are the linchpins in this particular thing. They have to deliver that. They have to rise up to the occasion. Because our generation, how did we find our own values? Nobody taught us. There were no workshops. We looked at our professors. We looked at our parents. We looked at our seniors. And we formed our own values. The worldview, as sir said rightly, the worldview is formed by this particular aspect. But right now, where most of your information is driven by the media, so it is time that we wake up and find out our own values, our own value system. Therefore, this kind of workshop you must take seriously. As madam said, not 90%, it should be 100% attendance compulsory. You should do this seriously so that it will help you to discover your values, so that you can deliver those things to the students in the class, which is necessary for this kind of things. At the university, we have identified the 4 core values. Acronym we have given is that RISE, RISE. R is for respect. Respect is a core value, where you must respect the worth of each and every individual in this particular environment. I is for integrity, academic as well as personal integrity. S is for servant leadership. All of us, in some time or the other, we are in the position of a leader. We are position of a leadership. We are responsible for the worth of others. So that is the servant leadership. If you have that kind of a mindset, you are likely to deliver the things, you are likely to get people together. And the last one is empathy, E. E is, that means you respect others' problems, you understand others' problems and try to help them out. With these kind of things, we are going to work on these aspects. So I'm very happy when I came to know other day that JSPM sir is coming here for this. I wanted to share it with him also. So these are the things which at JSPM we try to inculcate, we try to imbibe. Without taking much of your time, I thank you very much for calling me here, be a part of this inaugural function, and I thank you all for becoming a participant to this wonderful workshop. And I hope at the end of this workshop, you all must come out with that kind of a system where your values will drive your choices in life, not only the circumstances. Thank you very much to you. Thank you, sir, for your guidance and encouragement. It is with great honor that I introduce our esteemed chief guest, Dr. Abhay Jere, sir, Vice Chairman, AICTE. Dr. Abhay Jere currently serves as the Vice Chairman of AICTE New Delhi and also holds the additional charge of Chief Innovation Officer at the Ministry of Education's Innovation Cell, MIC. Before his tenure at AICTE, he was the first Chief Innovation Officer at Ministry of Education. Dr. Jere has a distinguished career, previously working as a Chief Scientist of Life Sciences and R&D Head at Persistence System Limited. So please. He is the visionary behind the Smart India Hackathon, which has evolved
into the world's largest hackathon and open innovation model. This initiative has significantly contributed to establish a hackathon culture in India, earning a praise from Prime Minister Sri Narendra Modi. Dr. Jere also organizes international hackathons such as Singapore India Hackathon and Africa India Hackathon. Dr. Jere has played a vital role in creating the Atal Innovation Ranking Framework, ARIA, which ranks the educational institutions in India based on their innovation and achievements. To support the innovation ecosystem in educational institutes, he conceptualized Institutions Innovation Council, IIC, which has been established in all over 7,100 institutions involving more than 5 million students, faculty members, and professionals. This network has become the largest of its kind globally. He also designed the National Innovation and Startup Policy for faculty and students to empower higher educational institutions to focus on innovations, startup, and enterprises. Sir has trained 25,000 college faculties, school teachers across India to become an innovation ambassador. Sir is dedicated to promote innovation and entrepreneurship in India. He has launched the School Innovation Council program to foster creativity among students with participants of more than 2,800. An active scientist in biology and bioinformatics, Sir has worked in the US, Japan, and Europe, contributing to areas such as vaccine, personalized medicines, and genomics. He has completed his PhD at the National AIDS Research Institute in Pune and has received numerous awards, including Digital Thought Leadership Award by the World Assessment Council in Boston, the Distinguished Alumni Award by ICT Mumbai, and Dr. Shyam Prasad Mukherjee Award. Please join us in extending a warm welcome to Dr. Abhay Jere sir, whose visionary leadership continues to shape the landscape of innovation and education. For this very elaborate introduction. Human values is the need of the hour. We are looking at economical prosperity. At the same time, you're all hearing that we are the 5th largest economy already. We're going to become the 3rd largest economy in years to come. But finally, money is not the only one which puts a country in the front. AICTE, looking at this very carefully, started working in this direction since 2017. The significant groundwork that has been accomplished over a period of time, last 5 years, and also there are future plans which are placed, okay, starting with induction program at engineering institutions, a 3-week induction program, and also we have made 2 national committees, NC-UHV and then NCCIP, in collaboration with UHV team. I think these 2 teams are doing exceedingly well. AICTE is committed to not only to continue this initiative of universal human values, but also taking this into next level and to really derive the full potential of this. AICTE and its institutions have a crucial role in propagating the universal human values course to all the 8,000 plus AICTE institutions in the nation and helping them to prepare the adequate faculty for training these and also make all our students a true citizens of the global village. They have already developed more than 16 books, 8 courses, and 12 faculty development programs they have, and there is a voluntary team, as I told you earlier, 500 plus, and they have prepared a faculty. This is a big compliments to the UHV team. 75,000 and plus teachers have been trained. So this is all done honorarily with pro bono. So this is an amazing, I think we should applaud the entire UHV team. Please, give them a big clap. So there is a lot of these courses,
More than 2 lakh registrations have come, and large number of institutions and universities are also part of this leadership program, where the leaders, I mean, basically they are going to go back and implement in their colleges, will be a very valuable thing for the entire education sector. So I request and I to adopt this in your institutions and train more and more people, and will spread the message of universal across the nation. So thank you. Namaskar. Jai Hind. Honorable Professor Joshi sir, President JSPM, Jain sir, Director, the entire UHV team of JSPM here. I would really like to thank you for inviting me. When I was listening to the UHV team, because I was sitting here, they tried giving me the credit. But to be very honest, the credit goes to our earlier chairman, Professor Anil D. Sahasrabuddhe, for introducing this entire concept as a part of induction program. And then subsequently to Professor T.G. Sitaram, who is our chairman, who is giving a big push to this entire initiative. So credit belongs to them, it's not belong. I will be very honest here, because we are here for universal human values, right? Huh? So honesty is the first. बिरुड सर बसलेले तिथे, माझा मित्र प्रताप आहे, खूप सारे ओळखीचे फॅकल्टी मेंबर्स आहेत. मराठी इंग्लिश प्रेफर कराल का कसं? मराठी का इंग्लिश? कम इंग्लिश? इंग्लिश इज बेटर, कारण की आजकाली मराठी मी आता तशीच खूप सवय राहिलेली नाही. बाहर से बच्चे हैं, so then let's do it in English. मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, मैं वो बम्बई आता हूँ जाता होगा, वैसा है वो मेरा. But if you really look around what we see, and if you really look at our 5,000 years plus history, on one side, Bharat is known for its spirituality. On one side, we always talk about Vasudhaiva Kutumbakam. But if you really look at our day-to-day life, undoubtedly, we can say there is a lot of violence inside us. We get raged very easily. We are ready to cut corners. We are ready to compromise. And it is very evident from the way we drive on our roads to what we do at our job. These compromises which we do are so evident. It's sometimes we are very shameful about some of the behavior of our own people around. And sometimes we are also party to it. And from that perspective, this reignition of that value system within us, म्हणजे धूळ साठलेली आहे खूप आता त्याच्यावर. आता ती धूळ हटवायची गरज आहे. कारण जर आपल्याला खऱ्या अर्थाने एक सक्सेसफुल सोसायटी व्हायचं असेल,
तर सक्सेस, वेल्थ certainly is there, which people are chasing undoubtedly. But ultimately, the chase for that happiness, that satisfaction, that peace within is going to be very, very critical. And from that perspective, ही जी काय युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यूजचे आपण कोर्सेस करतो आहोत, हे खूप महत्वाचं आहे. आणि जेव्हा मी आता विचार करत होतो की काय बोलावं, तर एक मला वाक्य खूप छान आठवलं आणि बहुतांशी ते तुम्हाला माहिती पण असेल. जर रिपिटेशन होत असेल तर सॉरी. पण जेव्हा अलेक्झांडर ती गोष्ट आहे, जेव्हा अलेक्झांडर नंतर भारतामधून परत वापस म्हणजे परत जायला लागला, त्यावेळेस त्याचा जो छत्रप होता त्याचं एक वाक्य आहे जे खूप महत्वाचं आहे आपल्याकडे. तर तो म्हणला की इथं आपण राजांना हरवू शकतो, एखाद्याच आपण इथं राज्य पण करू शकतो, पण ते राज्य म्हणून राज्य करता येईल, आपण लोकांच्या मनावर कधी राज्य नाही करू शकतो. आणि त्याचं कारण असं आहे कारण की हा एकमेव असा समाज आहे जो राजापेक्षाही जास्त भिक्षुकाला मानतो, त्यापेक्षा गुरूंना मानतो, आणि जे गुरु सांगतील ते त्याच्याकरता जास्त महत्वाचं असतं रादर दॅन जो राजा सांगतो. त्यामुळे तुम्ही राजाला हरवू शकता, पण जो भिक्षुक आहे त्याला काहीच नकोय. त्यामुळे तुम्ही काय करता येणार आहात, तुम्ही कसे हरवणार आहात, त्याचा विचार कसा हरवणार, आणि ते खूप महत्वाचं आहे. आणि तो भिक्षुक कोण आहे, तो शिक्षक आहे. आता आपण तसे शिक्षक आहोत का, हा प्रश्न आपण आपल्याला विचारायची. कारण की तो तशा पद्धतीचा जर समाज आपल्याला परत घडवायचा असेल तर आपल्याला त्या रोलमध्ये जायचे. आणि कुठेतरी आपण भारत म्हणून किंवा आत्ताची पिढी म्हणजे मागची असेल, माझ्या बरोबरची असेल, की कुठेतरी आपण त्याच्यात निश्चित कमी पडतो. आणि मी तुम्हाला एक साधं उदाहरण देतो माझ्या आयुष्यातलं, की जिथे मला एक वेगळा विचार करायला भाग पाडणारी ती गोष्ट होती. मी 2003 साली जपानमध्ये मी गेलो होतो. भारतातल्या 3 मुलांना जॅपनीज गव्हर्नमेंट स्कॉलरशिप मिळाली होती आणि त्या 3 मुलांपैकी मी होतो. तर मला टोकियोलाही ऍडमिशन मिळाली होती त्यामुळं, पण स्कॉलरशिप मध्ये टोकियो खूप महाग आहे, त्यामुळं मी एक थोडीशी ऑफबीट युनिव्हर्सिटी घेतली, टोकुशिमा. थोडस रेड कार्पेट वेलकम होता तिथे इनिशियली. मला जॅपनीज येत नव्हतं, तिथल्या लोकांना इंग्लिश येत नव्हतं, त्यामुळे इनिशियल कम्युनिकेशनला खूप प्रॉब्लेम येत होता. तर एक आठवडाभर सेटल झाल्यानंतर मला माझ्या ऑफिसचा म्हणजे युनिव्हर्सिटी ऑफिसमधून मला एक फोन आला की तुम्हाला काही कागदपत्र सह्या करायच्या आहेत तुम्हाला, आणि तुम्ही याल का. तर मी माझा एक्सपेरिमेंट संपल्यानंतर, कारण की मी PhDचा तो पार्ट होता माझा, एक्सपेरिमेंट संपल्यानंतर गेलो. तर तो म्हणला खूप म्हणजे आम्ही ऍक्च्युअली डिजिटल डिक्शनरी घेऊन एकमेकाशी बोलत होतो, कारण की मला माहिती नाही तुम्ही किती जण कॅसिओच्या पूर्वीच्या डिक्शनरी आहेत ना, तशा इंग्लिश जॅपनीजच्या डिजिटल डिक्शनऱ्या पण होत्या. तर आम्ही ते घेऊन बोलत होतो एकमेकाशी, त्यामुळे प्रचंड अनकम्फर्टेबल होतो. पण मला असं लक्षात आलं त्याच्या बोलण्यावरून की बरीच एक 40-50 कागद मला सह्या करायच्या, त्यामुळे वेळ लागणार आहे समजून घेऊन. तर तो म्हणला आज नको येऊ, पण उद्या बसू. तर म्हटलं ठीक आहे. तर त्यांनी मला विचारलं, मी त्याला विचारलं की उद्या किती वाजता येऊ. तर तो म्हणला तू लॅबमध्ये आलास की ये. किती वाजता येतोस तू लॅबमध्ये, असं त्यांनी मला 8:30च्या आसपास, 8:30 पावणे 9च्या आसपास येतो. तो म्हणला मी ये. मग मी त्याला हळूच विचारलं की तू किती वाजता येतोस. तर तो म्हणला मी 7:30 वाजता येतो. म्हटलं ठीक आहे.
मग मी गेलो, नॉर्मल कॉन्व्हर्सेशन होतं. नॉर्मल कॉन्व्हर्सेशन झाल्यानंतर मी दुसऱ्या दिवशी तिथे गेलो. दुसऱ्या दिवशी गेल्यानंतर एक 15-20 मिनिटं आम्हाला एकमेकाशी थोडं कम्फर्टेबल व्हायला लागले, कारण की आम्ही डिक्शनरीनेच बोलत होतो एकमेकाशी तुटक मुटक. तर मी त्याला बोलता बोलता विचारलं, तू सकाळी 7:30ला येतोस जसं काल मला म्हणलास, मग तू लवकर जातोस का? 3:30ला ते जात असशील, कारण की युजली तुम्ही युरोपमध्ये ते बघता, कारण की मी बऱ्याच ठिकाणी बाकी गेलो होतो की तुम्ही लवकर येता लवकर जाता. तो म्हटला नाही, मी 6 वाजता जातो. म्हटलं सकाळी 7:30ला येतोस आणि तू 6 वाजता जातोस. तर त्यांनी मला एक खूप चांगलं उत्तर दिलं, जे अजूनही मला रेझोनेट होतं. तर तो मला म्हणला, आणि मी खरंच तुम्हाला सांगतो, मी एकटा बसलो की मी त्या वाक्यावर खूप विचार करतो. तर सारखं मी स्वतःला रिमाइंड करतो. क्लर्क होता साधा. तो म्हणला की माझा जॉब जो आहे तो 9 ते 5 आहे. ओके, युनिव्हर्सिटी पेज मी फॉर वर्किंग फ्रॉम 9 to 5. But we Japanese believe that we should give more than what we take. So सकाळचा हा जो 1.5 तास आहे आणि संध्याकाळचा तास 1.5 तास जो आहे, हा मी माझा देशाला देतोय. आज आपल्या युनिव्हर्सिटीचे क्लार्क, त्याच्यावर भाष्य करायची काही गरज, बरोबर आहे की नाही? पण जेव्हा हे इतक्या खालच्या डीप म्हणजे रुजलेलं असतं, हे खूप महत्वाचं आहे. त्यामुळं म्हणजे बरोबर आहे ना, वी शुड टेक लेस फ्रॉम द सोसायटी, गिव्ह मोर टू द सोसायटी, देन ओनली ॲसेट्स विल बी क्रिएटेड ना. तेच मला त्यांनी समजून सांगितलं. आणि हे माझ्याकरता खूप महत्वाचं, कारण की त्याच्यानंतर माझ्या लक्षात आलं असं की जेव्हा आपण डेथबेडवर असू, म्हणजे आता ठीक आहे भाषण करायला बोलायला ठीक असतं, पण जेव्हा एक आपण प्रोफेशनल, आणि मी हे माझ्या आजोबांशी बोलताना मला जरा जास्त त्याची जाणीव झाली की जेव्हा आपण जसं मरणाच्या जवळ जातो, जसे आपले अवयव कमी काम करायला लागतात, पण आपले बुद्धी मेंदू खूप शाबूत असतो. इट्स देअर, इट्स वर्किंग. देन we start reflecting back on our life. And because we have ample of time, usually at that time, we start asking questions and we start reflecting on each of our decisions. And usually when we start doing that, we expect some good positive answers for ourselves. कारण की ते तर आपल्याला दुसऱ्याला कोणाला द्यायचे नसतात ना. We have to give to ourselves. And if we don't get some good answers, then every moment eventually becomes more and more painful for us. किती तुम्ही खोटं बोलणार स्वतःशी? नाही बोलू शकत एका वेळेच्या पुढे. आणि त्यावेळेस तुम्हाला जर असे उत्तर मिळायला लागली स्वतःच्या आयुष्याकडून की फक्त स्वतः करता जगलो, खूप सेल्फिश होतो, लोकांची वाटोळं केली, जे मी घेतलं म्हणजे मी शिक्षक म्हणून असेल, इंजिनियर म्हणून असेल, किंवा काही जे काय आपल्याला जॉब होता त्याच्याशी मी प्रतारणा केली, त्याच्याशी ऑनेस्ट नव्हतो, then we actually start waiting for death. Because every day it becomes more and more painful. Because we think and think and think again. आणि मला माझ्या आजोबांशी कॉन्व्हर्सेशन मध्ये ह्या गोष्टीची खूप जाणीव झाली. So, if we want to give real good answers to ourselves when we are near death,
we need to ensure that we have right value systems. We need to think far beyond us. We have to ensure that we contribute more than what we take. And from that perspective, courses like universal human values are going to be important for us. AICT असे बरेच इनिशिएटिव्स करत आहे. म्हणजे काही काळापूर्वी तरी AICTचं रेप्युटेशन मी तुम्हाला सांगायची गरज नाही. एक 10 वर्षापूर्वी काय होतं. पण नाव वी आर ट्राइंग टू चेंज ourselves. We are trying to genuinely become facilitators. And from that perspective, खूप नवीन नवीन उपक्रम आम्ही आणायचा प्रयत्न करतो. कारण की we also believe that holistic development is extremely critical. म्हणजे अजूनही इंटरनली आम्ही डिबेट करतो की फक्त जेई किंवा नीट किंवा अजून सीईटी असेल, ह्या परीक्षा पास झाल्या म्हणून तो मुलगा चांगला इंजिनियर किंवा डॉक्टर असू शकेल का, ज्याची समाजाला खरंच गरज आहे. आपण कुठे कंपॅशन म्हणजे डॉक्टर आहे तर आपण कुठे कंपॅशन खरंच मेजर करतो का, त्याला विचारतो बाबा थोडं नीटला किती स्कोर आहे. आपल्याकडे एखादे टूल्सही नसतील की ऍट धिस स्केल मेजर करायची, आपण नाही करत. खरंच आपण पॅशन एखादा इंजिनियर म्हणजे 3 इडियट सगळ्यांनी बघितलेलाच आहे ना, आहे ना बघितलेलं. आपल्याला कोण आवडतो 3 इडियट मध्ये? रँच. पण आपण काय आहोत? चतुर. सगळे आहोत की नाही? त्याच्यातून आलेलो आहे धोका अवकातून. पण आपण रँचो आयडेंटिफाय करायचा कधीच प्रयत्न करत, आपल्या आजूबाजूलाही शोधण्याचा प्रयत्न करा. म्हणून आम्ही बरेचसे इनोव्हेशन, एंटरप्रेनरशिप कोर्सेस चालू केलेले किंवा आम्ही प्रोग्राम्स आणण्याचा प्रयत्न करतो. Whether there is scope for improvement? Yes, there is immense scope for improvement from our side also. We have to acknowledge that. But internally, we are convinced that some of these things are extremely important and critical for us. कारण की आपण विकसित भारतचा विचार करतो. आणि त्या अनुषंगाने मी थांबण्याच्या आधी एक नवीन महत्वाचा मुद्दा तुमच्या सगळ्यांसमोर मांडण्याची माझी इच्छा आहे. थोडासा ह्याच्यापेक्षा दूर, म्हणजे युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यूजची तर हे नाहीये, पण आम्ही आता सध्या ठरवलंय की जिथे जिथे जाऊ तिथे ह्या विषयाबद्दल बोलू. तो म्हणजे वर्किंग प्रोफेशनल्स करता जे AICT करत आहेत. तुम्हाला मागच्या वर्षी बघितलंच असेल तुम्ही की वी हॅव गिव्हन अराउंड approval to around 400+ institutions for conducting courses specifically for working professionals. But this year, if you really look at our last EC, we have taken another very revolutionary decision. And that decision is allowing actually working professionals to sit with regular students in a course. For example, if a working professional wants to do something in data science or AI, or blockchain, then there are a large number of these courses nowadays which are there, be in computer science, data sciences, computer science, data, AI, ML. These courses are there and you people have taken approval from us. But when you look at the entire course is not this 4-year degree program when I am talking about. It has many other zillions of other things rather than data science. The working professional need not learn all those things. The working professional can only do 1 semester, and within 1 semester also 1 or 2 courses which are there, or 2 semesters. But we want them to do that because what we believe
is that when working professionals will start coming and sitting with the regular students, the kind of camaraderie which can get developed, the learning which can happen both ways, they learning from youngsters and youngsters learning from them, and apart from that, networking which will happen, will be of immense help moving forward. So I will request all JSPM also to explore that possibility. It will certainly add to your revenue. पैसे की बात में तो सबको एकदम immediately समझ में आ जाता है. So it will add to your revenue also. Apart from that, like COEP, what Birud sir started last year with persistent, actually working professional MTechs, you should certainly do that. But more importantly, what you should do, sir, or again, I am saying this at every place, is that what JSPM will be 25 years from now. You already spoke about how you started and what you developed in last 24 years. But sir, internally we are very, very convinced that in next 25 years, the face of education globally is going to be very different. And the best example, which I again give in many of my talks, because we want colleges, we want to tell each and every institution that you need to evolve. And the best example in this regard is of banking sector. 20 साल पहले के बैंक्स देखो और अभी का बैंकिंग देखो. ओके? किसी ने सोचा नहीं था इतना रेवोल्यूशनरी चेंज होगा. Means what? This अभी क्या है? You require banking, but you will not. You don't require banks. Everything is online. कभी देखा है क्या बैंक? अभी मैं 8 साल से बैंक में नहीं गया हूँ. And many of the young kids might not have visited their bank ever. Okay? So you require banking, but you don't require banks. Similarly, you will require education. But you may not require then how you are going to sustain? And this is going to be more important for faculty members. कितने यहाँ faculty है? सभी faculty ही है. और कितने 40 के नीचे वाले faculty है? 40 से कम वाले faculty है. Okay. Then the question is how you are going to survive. So another important thing, and me and Anand Deshpande from Persistent, we were actually discussing this, how the education field is going to evolve. And we believe, and there is I think there is an RSCOE report, I think, which is there, which says that every student or the young professional who is getting into just a professional, is going to change his career thrice. And the professional span is going to be of 50-55 years, not 30-35 years, which we currently have. और 3 बार कम से कम career change करेगा. और आनंद मुझे कह रहा था actually, and because I don't want to take credit for his idea. He said our educational institutes now should think of actually not just attracting students for a degree program, but they should actually sell them maybe a subscription. कि 50 साल तो मेरे साथ रहेगा. पहला डिग्री करके जा, बाद में 10 साल के बाद और कुछ अपस्किलिंग रीस्किलिंग करके आना है तो फिर से वापस आ जा. और 5-6 साल बाद अगर तू फिर से चेंज करना है तो और कोई 6 महीने का 1 साल का कोर्स करना है तो वापस आ जा. You know? So, this is very important for management as well as for professors or faculty members who are sitting here.
you have to ensure that you treat your students with that dignity. Okay? Sir spoke about rise. One of the aspect was dignity, right? In it. Respect, the first. अभी क्या होता है, 4 साल बच्चा आता है, जितना निचोड़ सकते हो उसको निचोड़ते हैं, टेस्ट ट्यूब फोड़ा 500 रुपया दे, ड्यूरेट तोड़ा ये दे, नहीं आया 69% अटेंडेंस है, चल 5,000 रुपया, बराबर है ना? May not be a JSPM, but in majority, because we have been to this college. I am also a product of a private institution. I know what happens. बाद में वो बच्चा इतना तक पक जाता है कि वो बोलता है कि इस एक बार डिग्री मेरे हाथ में आने दो, फिर से वापस मुड़ के देखूंगा भी नहीं. फैक्ट है ना? हैं? इसलिए फिर एल्यूमिनाई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है. इसलिए बच्चा सोचता नहीं है कि मैं आई शुड बी अ प्राउड alumni and I should be a contributor. And many times it has been observed that पहला वो 5,000 रुपया निकालने के चक्कर में institute is losing few lakhs which he can actually contribute when he becomes 40, 45 and he wants to actually give back. He doesn't want to come to that institute. And that's where US institutions and Indian institutions differ. In US institutions, if you see, alumni contribute enormously. Even why US, if you really look at IITs, there was a call, I think, to IIT alumni to contribute by IIT Delhi, and they could raise few hundred crores in about 3 or 4 months. Few hundred crores from their alumni. Can we do that? If not, then why? Because again, the bottom line is value systems. So, it's good to talk about value systems when you are on dais, giving talks, giving lectures. But it's really very, very important to imbibe those value systems and actually not deviate from them on day-to-day functioning. I hope courses like this will help you reflect more and more, will promote you, will push you to ask tough questions to yourself, and then you will try giving honest answers to those tough questions. And once you get into that habit, I'm pretty sure you will be a really good universal human with good human values. And then only we can say that there is a real success to what this entire team is doing. So I wish you all the best, and I hope that slowly and steadily we will get into this transformation together. Thank you very much. Really appreciate it. Thank you, sir. It was really an eye-opening session for all of us. Thank you for that enlightening words. The bottom line that I can read is, let's reflect. Let's reflect on our values. Let's reflect on our education system and be competent enough to evolve. Find out what is being there. Instead of searching ranchos in others, why can't we transform? And the one more important point which sir has said, give more than what we take. As a faculty, as a facilitator, it's our duty to serve the society. So let us all pledge during this faculty development program that we'll embark on this journey. We'll inculcate the human values
which we are missing, which we know but which we are not practicing enough. And let's make that change in our students. Let's have a holistic development which caters to skills as well as the culture and the value system of our nation. Thank you, sir. With that, we move on to this core faculty development program. I hope this program will be an enriching experience for all of us. To embrace this knowledge and values, let me thank everyone for your attention and participation. Now I call upon the coordinator of this faculty development program, Dr. Sunita Yadav ma'am, to propose the vote of thanks. Thank you very much, ma'am. It is a great honor and privilege to propose vote of thanks on behalf of our institute, JSPM's Rajarshi Shahu College of Engineering. I take this opportunity to thank Honorable Dr. Abhay Jere sir, Vice Chairman AICTE, for accepting our invitation as chief guest despite of his busy schedule. Sir, your presence has been a source of guidance and inspiration for all of us, and we thank you for giving extra inputs regarding initiative of AICTE for working professionals. I would like to express my gratitude towards AICTE, NCCIP team and resource person for this 8 days Universal Human Values FTP, Dr. Mahesh Kolte sir, Umesh Jadhav sir, Lipika Mehta madam, Observer Anita madam, who are consistently working in the field of value education. My heartfelt thanks to our Honorable Founder Secretary Dr. T.J. Sawant sir for his always giving the Titanic support. I am running short of the words to express my humble thanks to Dr. R.S. Joshi sir, Vice President JSPM University, for his consistent guidance and support for the institute. I would like to thank our own Anil Bhosle sir, Director JSPM, for helping every time. I am thankful to our torchbearer for this event, our director, respected director Dr. R.K. Jain sir, for leading and inspiring us in working towards the goal of conducting this FDP, which is a very rigorous work we have done. I owe special gratitude to principals and deans of various colleges, Dr. Borvane sir, Dr. Priyanka Singh ma'am, Dr. Birut sir, Dr. Malti madam, Dr. Hinge sir, and Shir Bahadurkar sir. A big thank to all the deans, HODs, teaching and non-teaching staff for their continuous efforts for making this event successful. Last but not least, I would like to thank all participants who are present here from not only Maharashtra region, from other state of the India, and coming here for attending this FDP. We look forward for a productive and enriching experience together. As a local program coordinator, I'll ensure your fruitful and comfortable stay 8 days in this campus. Thank you everyone for your presence. Thank you, ma'am. So I request our chief guest, Dr. Abhay Jere sir, to kindly inaugurate the ISC newsletter. We have a Section 8 company here and a very active ISC cell. So it would be a very great honor for us, sir. You are the president of ISC. Come here, come here. Thank you, sir. As we come to the end of this inaugural event, I kindly request everyone to stand up for Vande Mataram.
Thank you, everyone. कधी येणार आमच्याकडे कधी येतो नाही सर दोन गोष्टी मला तुमच्याकडून खूप अपेक्षा आहे. एक म्हणजे की सर कारण की मॉडेल एक उभं राहील म्हणून की सर सेकंड अकॅडमिक सेशन वर्षात चालू करायचं सर. म्हणजे जर शक्य असेल तर जानेवारीची बॅच तुम्ही आम्ही आता नॉर्म्स रिलीज करतोय म्हणजे कमिटीचं फॉर्म केलेली आहे. तर एक तुम्ही मॉडेल हे केलं ॲडमिशनचं आम्ही 25% त्याचा विचार करतो. पण ते मॉडेल मॅडम प्लीज. एक्सेप्ट करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं?
हाथ खड़ा करेंगे और आज का पहला दिन है तो आपका नाम भी बताएंगे। I'm Mona Upadhyay. Mona Upadhyay from SP. So whenever a proposal is there, either we analyze it, we think about it, and then either we reject it or we accept it. Very good. I'm Praveen Atigre from Sanjeevan College. First we check that proposal based on our natural acceptance, means whether it is naturally acceptable to me or not. And according to that, I'll try to live in with it, means I'm going to validate it. ये सही है या फिर गलत है, ये वैलिडेट करने के बाद मैं वो डिसाइड करूंगा कि वो सही है या फिर नहीं है, और उसके अकॉर्डिंगली मैं एक्ट करूंगा। ठीक, बढ़िया। और बताइए। सर प्लीज। I'm Dr. Bhagyashree from RSCOE only. Sometimes it may happen that we don't want to accept that any proposal, but due to some circumstances we have to accept. By intention I don't want to be, but due to some reasons or whatever the surroundings are there that force me to accept that. Sir, myself Sunil, I'm from Hyperwater. Sir, मुझे ऐसा लगता है कि प्रपोजल जो भी किसी ने रखा है, तो होना तो ये चाहिए कि हमने उसको स्वभाव या म्यूचुअल एक्सेप्टेंस से एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन कई बार हम दबाव या प्रभाव में आकर कर बैठते हैं, लेकिन होना ही ये चाहिए कि स्वभाव से होना चाहिए, क्योंकि स्वभाव में हम कंफर्टेबल होते हैं। Not be there, I might be rigid for the new changes and new things, but it is not all about my natural acceptance. I should experimentize it, and if it is so important for by chance for myself, my soul, my family, my society, or my nature or existence, I should accept it. Myself Dr. Fahad Iqbal from MMNTC Malegaon. सर जब भी कोई प्रपोजल आता है तो मेरे हिसाब से हमें उसे न्यूट्रल होकर सुनना चाहिए और फिर उस पर थोड़ी सी रिसर्च एनालिसिस एक्सप्लोरेशन करने के बाद जो हमें सही लगता है, जो हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस कहता है और जो भी बेनिफिटेड है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको फिर एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना चाहिए। According to me, I will go through it in details, and if it is feasible as per natural acceptance, I will accept it or I will reject it. Dhanyavad. Sir, I am Rahul Paikrao from Amrutwaini Sangamner. My take on this is we should think about the intention of the person who is giving proposal as well, because it is not only my natural acceptance, but the person who is putting forth the proposal, his intentions also need to be checked, and then we should think of the proposal what is being proposed. I think I am Dr. Radhika Purandare from BIIT Pune. I think we categorize it into two categories. If I accept, then either I accept it naturally or under some pressure that I have to accept, or there is another category that I don't accept, but I accept it as it is someone else. No, it's just like having a tea or coffee. I don't like coffee. That does not mean that the other person does not like. So I accept it that someone else likes, I don't like. Or I reject it totally. This is not good. This is not good for them. This is not good for me also. So these are the categories that I would go for. I'm Nishant Nele from Government Engineering College, Vaishali. For me, whenever a proposal comes, first of all, I think whether it is for me or for the position where I am. Second thing is the proposal should be accepted based on its impact, like how big the impact will be. If I'm in an academic institution, so
So how much benefit the students will get. So this generally be my criteria for acceptance. Common conclusion. Hello, good morning everyone. This is Wilson Pinto here. I'm from St. Francis Engineering College. I work as training and placement head over there. So the whole, I'll not talk specific on the proposal part. We talk about universal human values, and as the word or the sentence says, it should be universal across nations, across religion, across states, across region, or across professions. Okay. Then why are people not able to cope up with that? Why are they not able to absorb these things? So you have to look at the structure of the societies, that why people do not fall in line with universal human values. You look at US, it was racially divided society, very racially divided societies where certain races were considered to be inferior races. Okay, it is documented, and a lot of people who have got Nobel Prize also has spoken against certain races. Okay, there was a huge amount of movement against disabled people across Europe, America. So we tried to demean people. We tried to have a segregation in the society. We are not being just society. We are not fair society. And when these things happen, obviously individuals will try to protect themselves and try to move away as much as possible from the universal human values. So they will create their own personal interest. That's why we see in India itself, you find humongous amount of inequality in terms of income, in terms of status. So when we are debating, discussing about human values, we need to also bring in the society aspect into it rather than focus too much on the individual aspect, because unless we are able to rectify what's happening in the society in general, we will not be able to rectify it at the individual level. It is far easier to say that I need to start from myself, I need to start from myself, and I need to improve myself as a human being. That is a commendable thought process. But at the same time, it is not a very realistic thought process. If the society is by and large unjust, unequal, then the person is going to protect himself or herself, is going to imbibe something which is not fair. That's my take on universal human values. Thank you very much. So I asked the question, if someone puts a proposal on you, what will you do? That's what it seems, sir. My take on that is, when some proposal comes to me, my ecosystem around me also will influence me to take a decision whether to accept the proposal or not to accept the proposal. So I live in a ecosystem. I don't live as an individual in the society. I'm by and large influenced by people around me, society around me, nature around me. So there's going to be a huge influence on me on how I think as a person. The teachers, students that I interact with, all influence. Thank you. First, listening completely what is the proposal is exactly about, that is important. तो समझने के बाद फिर वो whether it is true or false with respect to our conclusion or the reality, that will be a different process. लेकिन सुनना जरूरी है. आपके लिए जो बात कही जा रही है वो सही है या सही नहीं है? सही है तो वो सही है आपके लिए, अगर सही नहीं है then put it into the trash. ठीक है? इससे मुझे एक बात याद आ रही है कि एक बार मैं फेस टू फेस वर्कशॉप दे रहा था, अच्छे का मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा कि you made me so
प्रेफर टू सेल फोन? अनिता दीदी से नो सेल फोन्स, तो गूगल करने का चांस नहीं है। अच्छा, आपको किसी ने बताया भी नहीं था कि दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वर्कशॉप? बताया था? नहीं। आपने किसी से पूछा भी नहीं, पड़ोसी से? मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि आप लोग सभी आपका आंसर दे रहे हैं। तो जो आंसर आ रहा है ना, वो फैकल्टी को हम कह रहे हैं कि नेचुरल एक्सेप्टेंस। तो बार बार रेफर करते हुए अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, और यही बेसिकली इस वर्कशॉप का पर्पस है, टू इनिशिएट दिस इंटरनल डायलॉग। एनी क्वेश्चन? सर, नेचुरल एक्सेप्टेंस को सुन के फील करके जो डिसीजन लेते हैं वो सही होते हैं, वैसा आपका कहना है। लेकिन अगर मेरे संस्कार गलत तरीके से है, मान लो कि मैं किसी डकैत के घर में पैदा हुआ हूँ, मान लो, और वहाँ पे वही संस्कार कि यार जाओ मारो लूटो, तो जब भी मेरे सामने एक प्रपोजल आया कि ये अच्छा फैमिली है, नेचुरल एक्सेप्टेंस लूट लो, तो ये सही होगा क्या? हाँ, कभी मौका मिले तो उनके घर में जाकर उनसे भी पूछ लेते हैं, है ना? आप संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं या विरोध पूर्वक जीना चाहते हैं? मुझे लगता है कि कम से कम हम ये क्वेश्चन अपने आप से तो पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कि संस्कार बिफोर नेचुरल एक्सेप्टेंस, आपके संस्कार डिसाइड करेंगे कि आपका नेचुरल एक्सेप्टेंस कैसा है। ठीक है, दो बातें हैं ना, संस्कार का अर्थ क्या है, नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है, इसीलिए 8 दिन है, आराम से चर्चा करेंगे। अभी तो एक सिंपल सी बात है कि कोई अगर प्रश्न आपसे पूछा गया तो उसका कुछ आंसर आपको मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप आपके शरीर का पोषण करना चाहते हैं या शोषण करना चाहते हैं? पोषण करना चाहते हैं। ठीक है, एक आंसर आ रहा है, सबका आंसर एक आ रहा है। सम्मान आपको सहज स्वीकार्य है या अपमान? ठीक। तो ये जो भी बात कही जा रही है, ये बात सीधा सीधा, लेकिन नेचुरल एक्सेप्टेंस जो है वो अनकरेक्टेड है। ठीक है, तो इसी नेचुरल एक्सेप्टेंस को रेफर करते हुए ये पूरी जो वर्कशॉप की 8 दिन की हम चर्चा रखेंगे। चर्चा को प्रारंभ करते हैं। 3 सिंपल से क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन आपके चाहना के आधार पर है। You want to be happy? Yes. सब लोग आंसर दिए तो पता चलेगा कि सबका आंसर Yes. You want to be Yes. happy? Yes. You want to be prosperous? Yes. We want the continuity of happiness and prosperity. Yes. Let me tell you what is the meaning of continuity. Monday, happy. Sunday, also happy. Yeah, that is the meaning of continuity. Right? Happy in the vacation, happy in the workplace. That's the meaning of continuity. Every moment, while eating the breakfast, in between the breakfast and lunch also, every fraction of second, we want to be happy or not. So what do you want? You want to be happy, you want to be prosperous every moment. भैया ने जो कहा कि I don't mind कि मर जाओ, लेकिन जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करके परिवार को दें। तो ऐसी लगभग सबकी जो शेयरिंग सुनी, तो ये शेयरिंग से एक बात ध्यान में आ गई। क्या ध्यान में आ गई? कि फिजिकल फैसिलिटी इज नेसेसरी। इज इट नेसेसरी फॉर यू? Are you wearing clothes? That is also physical facility. Do you eat food? It is also physical facility. So tell me, is it necessary for you? It may be necessary for survival, but Yeah. So we are drawing a very simple conclusion. What that conclusion is, physical facility is necessary for human being, but something else is also required.
मान लिया है, सुविधा है तो संबंध ठीक है। सर ये भी होता है कि सुविधा कौन है? हाँ जी, कई बार ये भी होता है ये सुविधा कौन है? ये सुविधा ये होने से, ये फिजिकल फैसिलिटीज के होने से संबंध ठीक हो जाते हैं क्या? सर अगर जैसे मान लीजिए 3 लोगों का फ्रेंडशिप है, 3 सर्कल है, उनमें से 2 बहुत अच्छी पोस्ट पे चले गए और एक कम पोस्ट पे रह गया या नहीं सही से उसकी जॉब ये सब रही, तो उसमें भी तो सर फिजिकल फैसिलिटी कम होने की वजह से रिलेशनशिप ब्रेक होते हैं। मतलब वो 2 दोस्त जो हैं उस तीसरे दोस्त को इतनी इंपॉर्टेंस देना बंद कर देते हैं आगे की लाइफ में और वो उन्हें याद करता रहता है, लेकिन फिजिकल फैसिलिटी कम होने की वजह से वो उनसे उतना अच्छा बॉन्ड नहीं बना पा रहा है जो 2 लोगों में आपस में बना हुआ है, तीसरे दोस्त से उतना नहीं बन पा रहा। देखिए हम तो फिजिकल फैसिलिटी रिलेशनशिप पे भी तो इफेक्ट डाल रही है। मैं वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि क्या फिजिकल फैसिलिटीज रिलेशनशिप के ऊपर इम्पैक्ट करती है? मैं वही पूछ रहा हूँ। अभी तो वो सर सिमिलरली अगर एक घर में 2 भाई लोग हैं और एक भाई जो है बहुत अच्छी पोस्ट पे चला गया, एक ने नहीं पढ़ा, तो जो पेरेंट्स का ट्रीटमेंट है वो उसके साथ अच्छा हो जाता है, दूसरे वाले के साथ अच्छा नहीं रहता है, तो मतलब कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में फिर असर आने लगता है सर, अंडरस्टैंडिंग की वजह से प्रॉब्लम। ठीक है, बट सर हम ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ से फिजिकल फैसिलिटीज के कारण भी रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं बिकॉज ऑफ बैड रिलेशनशिप फिजिकल फैसिलिटीज आर ऑल्सो अफेक्टेड, सो इट इज द वी कैन से two sides of the same coin. Good morning, sir. Dr. Sanket Gudekar from humanvalues. I think that, sir, because of physical facility, comparison comes into the picture. Because like sir वहाँ पे बोला कि अगर बड़े भाई का कोई 2 BHK, छोटे भाई का 1 BHK, तो comparison भी आके physical, like we want to be more comfort. So comparison में आके फिर then there will be a problem with the relationship. ठीक है, 2-3 प्रश्न उठाते हैं to get the more clarity on it. जैसे प्रश्न एक ये है कि लेकिन 5 एकड़ खेती है, ठीक, और 2 भाई हैं। अभी 5 एकड़ खेती के कारण ये 2 भाई झगड़ रहे हैं या दोनों भाई एक दूसरे के साथ में संबंध पूर्वक जी नहीं पा रहे हैं इसीलिए झगड़ा हो रहा है? क्या लगता है? तो दोनों मिलकर 5 एकड़ करते हैं और 5 का 7 भी हो सकता है, 7 का 10 हो सकता है सर। तो ये खेती झगड़े का कारण है या दोनों एक दूसरे के साथ में संबंध पूर्वक जी नहीं पा रहे, ये मेरे कारण है। सर एक थोड़ा आता हूँ मैं, राइट, कुछ प्रश्न उठा रहा हूँ फिर हम डिस्कशन करेंगे। तो एक तो ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि लेट अस से समर से पहले घर में एयर कंडीशन नहीं है इसलिए झगड़े हुए हैं, ठीक है, क्योंकि एसी रहा तो समर में कंडीशन एनवायरनमेंट बन जाएगा। एसी लगाने के बाद में पति पत्नी का झगड़ा खत्म हो जाता है क्या? क्लीन चाहिए, 24 चाहिए, ये दोनों एक दूसरे के साथ में संबंध पूर्वक जी नहीं पा रहे हैं इसीलिए झगड़ रहे हैं या वो 18 या 24 ये झगड़े का कारण है? सर एसी तो घी पे कितना टेम्परेचर बर्दाश्त कर लेगा? हाँ जी, एसी जब लगा तो वो घी का काम कर रहा है आग में, पहले जब नहीं था तो झगड़े भी नहीं हो रहे थे। नहीं, एसी नहीं था इसीलिए झगड़े हो रहे थे। मैं तो इसीलिए क्लियर किया ना कि एसी नहीं था इसीलिए झगड़े हो रहे थे। तो कितने ब्रांड की कितने नंबर ऑफ एसी लगाने के बाद में झगड़ा खत्म हो जाएगा, है ना? ये दूसरा प्रश्न मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक, बताइए आपके तरफ आए। सर अगर रिलेशनशिप को बढ़ावा देना है, अच्छे से जीना है, तो सपोज अगर मैं पूरा काम धंधा छोड़ के फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ रिलेशनशिप अच्छा बनाने के लिए, तो घर वाले बोलेंगे साला कमा नहीं रहा तो तू तो घर से निकल जा, ओके, और घर से निकल के कमाने को गया तो बोल रहे कि टाइम नहीं दे रहे। तो ये दोनों ही जरूरत ही है, इसमें राइट बैलेंस, राइट अंडरस्टैंडिंग चाहिए। देखिए क्या ना, हम लोगों का कंफ्यूजन यही है, हम लोग
कहते हैं कि किसके लिए कमा रहे हैं? फैमिली के लिए, है ना? आदमी बोलने के लिए क्या बोलता है, मैं कमा किसका रहा हूँ? देखो मेरे लिए तो कोई जरूरत नहीं है, मैं तो क्या सूखी रोटी खा दूंगा, लेकिन कमा किसके लिए रहा हूँ मैं? फैमिली के लिए। ठीक, फिर बोलते कि फैमिली के लिए कमा रहा हूँ तो फैमिली के लिए टाइम भी नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कम से कम अभी के लोग शिकायत के लिए मौका ही नहीं छोड़ा है कोरोना ने, क्योंकि कोरोना से पहले लोग कहते थे कि मुझे परिवार के लिए समय नहीं दे पा रहा हूं, तो कोरोना ने कहा कि तथास्तु, पूरा समय 5 महीना आप और आपका परिवार केवल, और वो भी दरवाजा बंद करके बैठा है, कोई आएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको, राइट? पता है उसके जो स्टडीज चल रहे हैं अभी कोरोना के इफेक्ट्स परिवार के जीवनी के ऊपर, तो अधिकतर स्टडी का निष्कर्ष ये निकल के आ रहा है कि परिवार के लोग जितना एक दूसरे के साथ में रहे उतने ज्यादा उन्होंने झगड़े किए। अगर संबंध का भाव नहीं है तो कितने टाइम आप एक दूसरे के साथ में स्पेंड कर रहे ना। वो इनिशियल स्टेज में शुरू कर देता ना, हमने केक बनाओ, कभी पाइनएप्पल केक बनाओ, कभी स्ट्रॉबेरी केक बनाओ, वो चला बहुत कुछ। फिजिकल फैसिलिटीज से हम संबंध को ठीक ठीक करने का प्रयास करें, लेकिन नहीं चल पड़ा। ये दोनों भी बातें अलग है। फिजिकल फैसिलिटी एक अलग बात है और संबंध एक अलग बात है, और ये दोनों भी बातें महत्वपूर्ण है। लेकिन ये दोनों में अधिक महत्वपूर्ण क्या है? रिलेशन। मैं ज्यादा टाइम कहाँ लगा रहा हूँ? फिजिकल फैसिलिटीज के लिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने ये मान लिया है कि जितनी अधिक फिजिकल फैसिलिटी उतना ज्यादा मैं सुखी। आपको एक छोटा सा इंसिडेंस बताता हूँ। लगभग 8-10 साल हुए होंगे, मैं और मेरा परिवार, मेरी पत्नी का नाम है रेनू, मेरा बड़ा बेटा है आदित्य, मेरा छोटा बेटा है शिवार। तो लगभग 8-10 साल पहले हम लोग शहर के ए क्लास रेस्टोरेंट में गए थे। इसलिए कह रहा हूँ मैं ए क्लास, क्योंकि वो महंगा रेस्टोरेंट है ना, बहुत महंगा रेस्टोरेंट है। तो शहर के लगभग सबसे महंगे रेस्टोरेंट में हम लोग डिनर के लिए गए थे। हम ऐसे बैठे कॉर्नर टेबल पे, हमने हमारी फूड की ऑर्डर दे दी। उतने में देखा कि लगभग 20 से लेकर 25 साल के बीच में के एक लड़का और एक लड़की उस रेस्टोरेंट में आ रहे थे। ठीक है, वो दोनों के हाथ में कुछ व्हाइट पैकेट्स थे। तो इसी व्हाइट पैकेट देखे तो हमारे बच्चों ने शुरू कर दिया गेस करना। छोटा बच्चा कह रहा है कि भैया दीदी का बर्थडे होगा। ठीक, मेरा बड़ा बेटा छोटे बच्चे को कह रहा है कि नहीं नहीं, मुझे लग रहा है कि दोनों का एनिवर्सरी होगा। अब वो चल रही उनकी चर्चा। अब वो दोनों आ गए और बिल्कुल ऐसे साइड वाला टेबल जो था, इतनी दूरी थी, वो टेबल पे उन्हें जगह मिली। वो एक पैकेट खोला गया तो उसमें से केक बाहर निकला। ठीक, फिर बाद में पता चला कि उस लड़की का बर्थडे है। तब तक उन्होंने ऑर्डर भी दे दिया खाने की। बर्थडे केक कट हुआ। केक कट होने के बाद में कुछ एक दूसरे के साथ में बातचीत करने लगे। वो बातचीत इतनी धीरे से कर रहे थे कि हम तक कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आराम से बहुत बातचीत कर रहे थे। ठीक है, उतने में हमारा खाना आ गया। हमारा खाना आने के बाद में हमने खाना शुरू कर दिया, और जैसे हमने खाना शुरू कर दिया तो वो वहां पे जो बातचीत कर रहे थे ना, उनकी आवाज हमें सुनाई देने लगी। और बाद में ये हुआ कि आवाज केवल हमें नहीं सुनाई दी, लेकिन पूरे रेस्टोरेंट में सुनाई दे रही थी। और अगले 5 मिनट के बाद में उस लड़की ने वो केक जो टेबल के ऊपर था, वो वहां पर अपने हाथ से उठाकर रेस्टोरेंट की जमीन के ऊपर फेंक दिया और वहां से चल पड़ी। उसके बाद में वो दूसरा पैकेट में क्या था वो पता चला। दूसरे पैकेट में बहुत बड़ा गिफ्ट था। क्या इशू था? ए क्लास रेस्टोरेंट, गिफ्ट, बर्थडे केक, महंगा खाना। क्या लगता है, सुविधा की कमी थी? समझ की
अंडरस्टैंडिंग इन रिलेशन, समाज और समाज की कमी, रिलेशन को या संबंध की कमी थी। समझ अधिकतर समय हम दुखी क्यों हो रहे हैं? ये सुविधा की कमी के कारण दुखी होते रहते हैं, या कहीं ना कहीं अपने में संबंध का भाव नहीं बन पाता, दूसरे में संबंध का भाव नहीं बन पाता, एक दूसरे के साथ में हम संबंध पूर्वक जी नहीं पाते, उसके कारण हम अधिकतर दुखी हैं। तो इसको जांच परख करते रहिए कि मेरे दुख का जो कारण है वो अधिकतर क्या है, सुविधा का अभाव या संबंध का अभाव। दूसरा निष्कर्ष निकाल देते हैं फिर, फिजिकल फैसिलिटी इज नेसेसरी बट रिलेशनशिप इज आल्सो नेसेसरी। दिस इज ओके? यस। हमारा पहला निष्कर्ष क्या था? फिजिकल फैसिलिटी इज नेसेसरी बट समथिंग मोर इज रिक्वायर्ड। नाउ व्हाट दैट मोर इज रिक्वायर्ड इज द रिलेशनशिप। तो ये दोनों भी आवश्यक है। अगर ये दोनों भी आवश्यक है तो ये दोनों के लिए काम करना आवश्यक है। केवल सुविधा के ऊपर काम करते रहने से संबंध ठीक हो जाएंगे? जैसे एनिमल किंगडम में अगर देखा जाए तो वी गेट टू सी लॉट्स ऑफ एनिमल्स, दे आल्सो नीड फिजिकल फैसिलिटी, बट द नीड ऑफ द फिजिकल फैसिलिटी ऑफ एनिमल इज एडिक्वेट, इट्स सफिशिएंट। जैसे कोई कुत्ता है, भूख लगी, क्या चाहिए उसको? खाना चाहिए। खाना मिल जाए आराम में आता है नहीं आता? गाय को भूख लगी, घास मिला, आराम में आएगी नहीं आएगी? आदमी को भूख लगी, खाना मिला, आराम में आ जाता है क्या? नहीं। तो खाने नहीं है तब भी परेशान, खाता हूं, खा रहा हूं, तब भी परेशानी के साथ खा रहा हूं, और खाने के बाद में भी 100 अलग अलग परेशानी चलती रहती है। तो आर यू एबल टू सी दिस इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। एनिमल के लिए फिजिकल फैसिलिटी एडिक्वेट है, ह्यूमन बीइंग के लिए आवश्यक तो है लेकिन कंप्लीट नहीं है। इसीलिए गाय को जब भूख लग जाती है तो घास ढूंढती है, जैसी घास मिली आराम से किसी जगह पर बैठेगी, जुगाली करते बैठेगी। आदमी का ऐसा नहीं होता। हमारे पास में सुविधा नहीं है तो हम दुखी, परेशान हो जाते हैं। जैसे कोई कपड़ा लेना चाहते हैं और वो कपड़ा केवल शोरूम में ही दिख रहा है, अभी तक घर पे नहीं आया, तो बहुत परेशान होते रहते हैं। जब भी उस शोरूम के सामने से जाएंगे तो कपड़े को देखेंगे, राइट? फिर किसी दिन वो कपड़ा हम ले लेते हैं, लेकिन वो कपड़ा लेने से क्या हम सुखी हो जाते हैं? कपड़ा नहीं था तो दुख, अब वो लेने के बाद में भी दुख। लेने के बाद कई बार वो पहनते भी नहीं, ऐसे पड़ा रहता। लेने के बाद में पहनते भी नहीं, ऐसे पड़ा रहता। एक बात मुझे याद आई, टी ब्रेक के बहुत सारे किस्से मेरे पास में। एक वर्कशॉप में टी ब्रेक में वो पेपर का कप है ना, उसमें चाय पी गई थी। अब वो चाय की चुस्की लगाते हुए मैंने आसपास के पार्टिसिपेंट्स के तरफ देखा और मैंने उनसे पूछा कि इसमें कितनी चाय होगी। इंजीनियरिंग कॉलेज के फैकल्टीज थे। तो विद इन अ सेकेंड एक फैकल्टी ने इतना कॉन्फिडेंटली बता दिया कि आई थिंक 125 ml। बढ़िया, 125 मिलीलीटर। फिर मैंने उनसे पूछा कि ये तो कप जो है ये कागज का बना हुआ है, इसको नीचे से मैं फाड़ सकता हूँ, इसको मैं नीचे से फाड़ अगर दूं तो कितनी चाय? कितनी चाय लगेगी? पूरी चाय बाहर गिर सकती है, कभी भरेगा ही नहीं। वो भरेगा ही नहीं। क्यों? बेस ही नहीं है। ठीक है, आप में से कितने लोगों को पता आपके पास में कितने जोड़ी कपड़े हैं? एग्जैक्ट नंबर। एग्जैक्ट नंबर का मतलब होता है कि जिसको मैं पहनता हूँ, जिसको मैं नहीं पहनता हूँ। 10 है। ठीक, तो लगभग हर एक वर्कशॉप में ऐसे 2-4 हाथ खड़े हो जाते हैं। देखिए, कपड़े नहीं है, परेशान। कपड़े हैं तो पता नहीं कितने हैं। वो जो
कप को अगर बेस नहीं है तो आप ये कह रहे हैं कि कितनी भी चाय डाले वो कभी भर नहीं पाएगा। तो मेरे पास अगर कितने जोड़ी कपड़े हैं वो एग्जैक्ट नंबर अगर मुझे पता नहीं तो वो आवश्यकता से अधिक है, आवश्यकता से कम है या बिल्कुल इनफ है, ये कैसे पता चलेगा? कितने डे स्कॉलर है यहाँ पर? डे स्कॉलर्स कौन कौन है पार्टिसिपेंट्स? गोइंग होम, you are going home in the evening, not staying in the hostel. 1 2 3 4 5 6 7 8 okay, day scholars के लिए assignment. Count your clothes today. ठीक है, जो भी लोग घर पे जाएंगे वो आज अपनी सभी वार्डरोब, कवर, सूटकेस, ब्रीफकेस, जहाँ जहाँ पर भी कपड़े हैं वो सब कपड़े को उतारिए, अपने ही कपड़े को, है ना, और काउंट करके एक बार देख लीजिए। कौन काउंट करना चाहेगा? आंसर 2-3 दिन की बात करेगा। पहले डे स्कॉलर्स को पूछने दीजिए, शायद आपको उतना समय लगेगा काउंट करने के लिए। कोई काउंट करेगा? कौन काउंट करना चाहेगा आज कपड़े? ठीक, 1 2 3, ठीक है, आप 3 कम से कम 3 लोग काउंट करके देख लीजिए, ठीक है, और कल सुबह बताना। क्या है कि जब तक मेरे पास में कितने जोड़ी कपड़े हैं वो जानना भी जरूरी, उससे जाकर तो आपका शॉपिंग लिस्ट बन पाएगा ना, कि ज्यादा है, कम है और आवश्यक है, कहाँ लेने के, कितने लेने के। तो अभी तक जो हमारी चर्चा हुई उस चर्चा का निष्कर्ष यहाँ पर आकर रुक गया कि मानव को सुखपूर्वक जीने के लिए, निरंतर सुखपूर्वक जीने के लिए सुविधा भी आवश्यक है और संबंध भी आवश्यक है। ये दोनों की आवश्यकता है, ठीक है। इस कंक्लूजन के साथ में फिर अभी लंच के लिए हम ब्रेक ले लेते हैं। अनिका दीदी, ब्रेक कर ले लंच का, आगे बढ़ सकते हैं फिर हम। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई शेयरिंग? जैसे आपने बताया कि फिज़िकल फैसिलिटी और रिलेशनशिप में आपस में कोई संबंध नहीं है, रिलेशनशिप भी होना चाहिए, वो ज़्यादा होना चाहिए, फिज़िकल फैसिलिटी भी होना चाहिए। बट सर इसी में कन्फ्यूज़न है कि दोनों में रिलेशन है या नहीं है, क्योंकि आपने जिन एग्जाम्पल से समझाया उन एग्जाम्पल से ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप इनफ है, फिज़िकल फैसिलिटी का इससे कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन कुछ अगर दूसरी एग्जाम्पल्स ली जाएँ तो वहाँ पे लग रहा है कि फिज़िकल फैसिलिटी का रिलेशनशिप से भी मतलब रिलेशन है। ठीक है ना, देखिए हम अभी सीधा सीधा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर सकते हैं, सीधा सीधा अपने में डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। जैसे हम बहुत सारा सेलिब्रेशंस करते रहते हैं, जैसे बड़ा कोई फेस्टिवल है, सबसे बड़ा फेस्टिवल हमारे लिए, तो हमारे लिए जो भी सबसे बड़ा फेस्टिवल होता तो जनरली हम कलर बदलते, घर का कपड़े बदल देते, रोशनी बदल देते, लाइटिंग लगाते, मीठा मीठा खाने के लिए बनाते, ये सब कुछ करते, ठीक, गिफ्ट लाते, गिफ्ट देते, तो ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन इस परिवार में ये हो रहा है, उस परिवार में मैं दूसरे के साथ में संबंध पूर्वक जी नहीं पा रहा हूं, तो क्या मैं उस फेस्टिवल को एंजॉय करता हूं? इसका हम जितना डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस करेंगे तो इस ऑब्जर्वेशंस के साथ कुछ कंक्लूजन्स निकल पाएंगे, ठीक। तो कंक्लूजन क्या निकलेंगे कि सेलिब्रेशन जरूरी है, ये गिफ्ट जरूरी है, खाना जरूरी है, लेकिन ये होने से संबंध ठीक होते हैं। अगर ऐसे होता तो कम से कम फेस्टिवल वाले एक दिन तो हम एक दूसरे के साथ में ठीक ठीक जी सकते ना, राइट। इसी को हम बिल्कुल सिंपल एग्जांपल ले लें, घर में कोई बड़ा परिवार है और कोई ऐसा इंसान है जो आपसे नाराज है, लेकिन आप किसी फेस्टिवल पे आप उनके लिए गिफ्ट ले गए हैं और आप उनको जो गिफ्ट दिया है, जो वो काफ़ी टाइम से, जिसका वेट नॉट रिक्वायर्ड है दिस, आवाज़ नहीं आ रही है, सो मे बी दे आर एक्सपेक्टिंग कि वो कुछ उनके लिए लेकर आए,
डिज़ायर ही वही है, तो रिलेशनशिप सुधर सकता है, क्योंकि वहाँ पे डिज़ायर उस रिलेशनशिप को सुधारने के लिए वो वस्तु थी। देखिए ठीक है, रिलेशनशिप को सुधारने के लिए वो वस्तु थी, वो गिफ्ट दे दी, उसके बाद में रिलेशनशिप ये बड़ी बात है ना। उसके बाद में वो रिलेशनशिप में कितनी डेवलपमेंट होगी वो डिपेंड करेगा कि 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद में, 2 साल के बाद में वो कितना सस्टेन कर पाया, या केवल वो कोई एक मोमेंटरी था। जैसे मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ आपको। हमारी फैकल्टी में एक यंग फैकल्टी थी, उनकी शादी हो गई थी। शादी होने के बाद में 3-4 महीने के बाद में कुछ परेशान लगने लगे, तो सीनियर फैकल्टी फिर चर्चा करने लगी कि क्या हुआ भाई, बहुत हंसता था, खेलता था, अभी 3-4 महीने में कुछ ज़्यादा परेशान लग रहा है। तो कहने लग गया कि कुछ नहीं, पता नहीं क्या, समझ नहीं आ रहा है, फाइंडिंग वेरी डिफिकल्ट टू कोप अप विद द न्यू लाइफ। पत्नी के साथ में कैसे जीना समझ में नहीं आया, ट्रेनिंग ही नहीं ना। रिलेशनशिप का अगर आपको ट्रेनिंग नहीं है, रिलेशनशिप का अगर आपको ज्ञान नहीं है, तो आप कैसे जी पाएंगे, कैसे जी पाएंगे? तो उसके साथ में भी ऐसी कोई कठिनाई हो रही थी। तो कठिनाई के साथ में फिर वहां पर एक सीनियर फैकल्टी बैठे थे, तो सीनियर फैकल्टी ने कहा कि अरे बेटा, इतना था गंभीरता से सोच के, बहुत आसान है, आज शाम में जब जाएंगे तो एक साड़ी लेकर जाइए। हम लोग भी बहुत साड़ी अभी है, क्या लगता है ये साड़ी से खत्म हो जाता है? ये गिफ्ट से अगर दो लोगों की बीच की दुश्मनी अगर खत्म हो जाती ना, तो फिर तो हर 2 दिन में हम किसी न किसी को कुछ न कुछ तो गिफ्ट दे ही रहे हैं। तो इस सुविधा का कुछ रोल है, एक जेस्चर है, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग कह सकते हैं मैक्सिमम, राइट। लेकिन सुविधा से संबंध ठीक हो जाते हैं, या सुविधा एक अलग है और संबंध एक अलग है? सर अभी अप्रोच जो आपने बताया कुछ देना, वो तो बहुत मटेरियलिस्टिक अप्रोच हो गया, कुछ तो दिया है इसलिए। What I feel affection is more important than what we are exchanging in that. Right. So you will put affection in the block of relationship or physical facility? In relationship. Correct. What you are saying is right. Sir, physical. If I am giving gift and also have that feeling of affection, it will work. But giving gift and there is no affection. सर कभी मेला होता है, बहुत सारी फैसिलिटीज रहती हैं, जब तक बच्चा अपनी माँ के साथ है तभी एंजॉय कर सकता है। जब वो माँ से बिछड़ गया तो वो फैसिलिटी भी कुछ काम की नहीं, वो खाली ढूंढेगा रिलेशन जो माँ के साथ है, वो उसको कहते हैं अफेक्शन। और वही जब तक बच्चा और माँ का जो रिलेशन है वही अपना रिलेशनशिप है। ये फैसिलिटी वगैरह सब जब तक कोई अपने साथ रहेगा तभी एंजॉय कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। फिजिकल फैसिलिटी एक मीडियम हो सकता है टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप्स और टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप। See, that is the question. Sorry to interrupt you. That is the question. Can this medium improve the relationships, or it is just a gesture? It should be just treated as medium, not like उसको A symbol. A symbol. Right. Symbolic gesture, symbolic expression वहाँ तक ठीक है, लेकिन क्या फिजिकल फैसिलिटीज से रिलेशनशिप इम्प्रूव हो जाते हैं? अगर ये नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये दोनों बातें अलग अलग हैं। फिजिकल फैसिलिटी एक डिफरेंट ब्लॉक है और रिलेशनशिप एक अनदर ब्लॉक है, ये दोनों भी डिफरेंट है। तो दिस इज डिफरेंट एंड दिस इज आल्सो डिफरेंट। Sir, but due to physical facilities, sometimes relationship can also get improved. सर जैसे कि मैंने शुरू में एग्जांपल ली थी 3 दोस्तों की, उसमें से उनकी बात को सुन लेते हैं। सॉरी Just like अगर मेरे पास फिजिकल फैसिलिटी नहीं है
तो हमारा रिलेशनशिप कभी आगे बढ़ेगा ही नहीं। बहुत सारे रिलेशनशिप ऐसे होते हैं ना जो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल फैसिलिटी यू कैन से। फिजिकल फैसिलिटीज के होने से रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है या ये जो फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप है इसके चलते आगे बढ़ रहा है, वो इसी को ही ऑब्जर्व करते रहिए, राइट? इसी को ऑब्जर्व करते रहिए, क्योंकि अगर फिजिकल फैसिलिटीज से रिलेशनशिप अगर ठीक होती तो कम से कम जिनके पास में बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज है उनके घरों में रिलेशनशिप ठीक होनी चाहिए थी। ये तो बात ठीक है कि कम से कम समाज में ऐसे बहुत सारे लोग दिखते हैं नहीं कि बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन है फिजिकल फैसिलिटीज का, लेकिन परिवार में कदा है। Sir, my question is कि my take on this topic is कि for relationship compatibility, अगर हम बात करें, संवाद करें, communication can everything resolve. There is no need for physical materialistic thing to improve our relationship. But I came to this training, I understood this. Maybe with whom I am, I want to keep my relationship. He or she has not attended this workshop. He doesn't understand this. Now here comes कि कौन ज़्यादा मोल्ड होगा। तो ये ट्रेनिंग लेने के बाद तो मैं ही ज़्यादा मोल्ड होता जा रहा हूँ, तो ये कंपैरिजन का फिर इशू आ जाएगा। तो ये इशू तो कंटिन्यू मतलब ये चलता रहेगा, जब तक मैं इसको रिजॉल्व करूँगा तब तक मैं वापस से पहले मोड में आ जाऊँगा। तो मेरे को मतलब मैं टेक ऑन तो ले लिया कि हाँ ठीक है, मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, इसके लिए खुशी के लिए रिलेशनशिप हमें कंपैटिबल बनाना चाहिए। तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा? इसीलिए तो पूरे 8 दिन है ना, आराम से चर्चा करेंगे। सर एक कंफ्यूजन है, जैसे एक बच्चा है वो 21-22 साल का होगा, थैंक यू। मान लिया एक बेटा है और मदर है, उनका रिलेशनशिप बड़ा अच्छा है, थ्रू आउट स्कूलिंग कॉलेज बड़ा अच्छा रहा। अचानक से क्या हो जाएगा, जब वो बाहर निकला, उसे नौकरी नहीं मिल पा रही है या वो कुछ कर नहीं पा रहा है, तो धीरे धीरे वो फिजिकल फैसिलिटीज़ जब वो जनरेट नहीं कर पा रहा है तो अल्टीमेटली रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है। यहाँ तक हो जाते हैं, मतलब देखे हैं हमारे सामने, इतने सालों से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, चीज़ें सामने भी आती हैं, कुछ चीज़ें पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप, आपस के रिलेशनशिप सब दिखने में आते हैं। तो जब तक तो ठीक था वो, और जब वो उस लायक उसे होना चाहिए कि ही शुड बी समथिंग, सम ऑफिसर या अर्निंग है या कुछ ऐसा, नहीं कर पा रहा तो ख़राब हो गया। तो मुझे मतलब इस मामले में बड़ा एक भयंकर कन्फ्यूजन है, और ये कुछ ऐसा लगता है कि जब आप कुछ बेसिक लेवल तक फिजिकल फैसिलिटी जनरेट नहीं कर सकते, देन यू कैन नॉट मेंटेन एनी रिलेशनशिप। ठीक है, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं ना कि ये दोनों भी आवश्यक है। हाँ जी सर, नहीं वो फिर बिगड़ जाता है, खराब भी हो जाता है ना। क्या है कि फिजिकल फैसिलिटी भी आवश्यक है और संबंध भी आवश्यक है। सर कंफ्यूजन ये है कि आप इसे रिलेटेड नहीं मानते। ऐसा कुछ रिलेटेड सा लग रहा है, वही मदर थी, वही चाइल्ड था। बिल्कुल। लेटर ऑन जब वो इतना बड़ा होगा तो वो उसको गालियाँ दे रही है कि यहाँ घर में पड़ा रहता है, ये है वो है, ये सारी चीज़ें इट इज़ हैपनिंग ना। आजकल थोड़ा कम हो गया है, लाड प्यार ज़्यादा बढ़ गया है, हमारे टाइमों में लगा भी देते थे। रिजल्ट आने के 2 महीने में घर में बैठ गए तो आपको 2-4 अड़ोसी पड़ोसी बोलेंगे, फिर मदर भी और फादर भी दोनों ही बोल देते हैं। तो नाउअडेज थोड़ा मोड चेंज हो गया है बोलने का, करने का, वो चीज़ें। ठीक है, तो ये निष्कर्ष ठीक है, दोनों भी आवश्यक है, सुविधा भी आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, दोनों भी आवश्यक है। अगर दोनों भी आवश्यक है तो दोनों में अधिक महत्वपूर्ण क्या है? संबंध। यहाँ तक तो हम कम से कम देख पा रहे हैं। लेकिन सर समाज तो अभी बेसिक मतलब सुविधा से ज़्यादा, संबंध से ज़्यादा सुविधा को महत्व देता है। तो समाज को मतलब हम सब लोग अभी ये बात कम से कम क्या करेंगे ना, अभी
आज दिन हम हमारी बात करेंगे। ये समाज ऐसी, समाज कौन है? प्रोफेशनल सेटिंग। We are the society. I am the part of society. Right? I am the part of society. We are the society. हम लोग कम से कम अपनी बात को रखेंगे। मैं क्या सोचता हूँ, किस तरीके से मेरे विचार चलते हैं, मेरे में क्या चलता है, उसको देखेंगे। ठीक है? अभी ये जो 2-3 क्वेश्चन निकले, आपका क्वेश्चन था, आपका क्वेश्चन था कि अधिकतर लोग ये मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं कि सुविधा ही सब कुछ है। ठीक? राइट? अधिकतर लोग ये मान रहे हैं। आपका भी क्वेश्चन वही था कि माँ बेटे का वो। नहीं, मैं ये मानता हूँ कि संबंध जरूरी है, लेकिन वो खराब भी हो जाता है। मैं वही कह रहा हूँ ना, उसी के तरफ आ रहे हैं कि ये जो बच्चे आए, पढ़ाई किया, पढ़ाई जब तक कर रहा था तब तक ठीक था, पढ़ाई के बाद में जॉब जैसी चाहिए थी वो नहीं मिली या जॉब ही नहीं मिली। तो ये इस तरीके से कुछ क्वेश्चन है, कुछ ये क्वेश्चन है कि सुविधा ही सब कुछ है, इस तरीके से सोसाइटी ने मान लिया है। ठीक? जैसे सुबह इनॉग्रेशन सेशन में हमारी जो बातचीत चल रही थी, क्या बातचीत चल रही थी कि आज हम ये पूरा 20-25 साल बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? क्यों आगे देखिए अच्छा जीवन जी पाए। क्यों पढ़ा रहे हैं? फिजिकल फैसिलिटी टू कलेक्ट फिजिकल फैसिलिटी। क्यों पढ़ा रहे हैं हम बच्चों को? नौकरी लेना चाहिए, पैसे कमाना चाहिए। बस नौकरी लगेगी, पैसे कमाएंगे, Right? फिजिकल फैसिलिटी। देखिए जो नर्सरी का बच्चा होता है ना, वो जब नर्सरी में जाता है, वो भी जब वो घर पे आकर एक ठीक से नहीं लिखता तो उसकी माँ या पिताजी उसको तुरंत कहते कि बेटा पढ़ाई कर वरना केली बेचेगा। तो हमने पढ़ाई का सारा कनेक्शन किसके साथ में लगा के रख दिया है? केवल जॉब के, केवल अधिक से अधिक पैसा, अधिक से अधिक एक्यूमुलेशन। 25 साल की ट्रेनिंग क्यों दे रहे हैं हम लोग? इसको बढ़ाने के लिए। ये जितना बढ़ा पाया उतना वो हम कहते कि सक्सेसफुल हो गया। ठीक है? अब इस तरीके से परसेप्शंस डेवलप हो चुके हैं। अब इस तरीके से परसेप्शंस अगर बहुत सारे लोगों के हैं तो ये बहुत सारे लोगों को मिलकर ही, सबको मिलकर ही समाज बनता है। तो फिर समाज के परसेप्शंस क्या रहेंगे? कि सुविधा ही सब कुछ है। मैं तो केवल ये पूछ रहा हूं कि हम अपने आप से ये क्वेश्चन करें कि क्या सुविधा सब कुछ है या संबंध भी है? संबंध भी महत्वपूर्ण है। अगर ये दोनों भी महत्वपूर्ण है तो दोनों में अधिक महत्वपूर्ण क्या है? Sir, we need both relationship and physical facility, but we should give priority to relationship. Correct. इसमें महत्वपूर्ण है कि ये समझते हैं कौन सा सिनेरियो बताया कि बच्चा नौकरी नहीं कर रहा है तो रिलेशन खराब हो जाएगी, लेकिन उसके विपरीत भी तो उदाहरण है। बच्चा जॉब करने के लिए यूएस से चला जाता है, इधर माँ पिताजी गुजर भी जाएंगे, वो नहीं आता है, तो पड़ोस के उसका ये करना पड़ता है। तो इसमें भी तो रिलेशन खराब ही हो गया ना। तो नौकरी करके भी कहाँ रिलेशन सुधर पाए? देखिए वही बात हो रही है कि भले वो नौकरी कर रहा है, भारत में नौकरी कर रहा है, विदेश में नौकरी उसको नहीं मिली है, भारत में नौकरी उसको नहीं मिली है, विदेश में, ये सारी बातें किससे कनेक्ट हो रही है? फिजिकल फैसिलिटी। राइट? वो आवश्यक है, लेकिन संबंध भी आवश्यक है। संबंध भी आवश्यक है ना, ये दोनों आवश्यक है। संबंध ही आवश्यक है। अगर ये दोनों में अगर देखा जाए, इसलिए बार बार मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना कि दोनों में अगर देखा जाए तो दोनों में महत्वपूर्ण क्या है? तो रिलेशनशिप इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक? रिलेशनशिप इज मोर इम्पोर्टेंट। अभी केवल वो कंफ्यूजन जो बचा है ना कि क्या ये दोनों रिलेटेड है, कीप इट ओपन, है ना, उसको वैसे ही रहने दीजिए कि क्या संबंध से सुविधा या सुविधा से संबंध, है ना, ये दोनों में से किस तरीके से रिलेशन है या नहीं है, उसको ओपन रखेंगे। लेकिन कम से कम अभी ये दोनों भी महत्वपूर्ण है या नहीं है? ठीक है? तो दोनों भी महत्वपूर्ण है। अगर इसीलिए हम भी संबंध पूर्वक जीने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब ये जो 3 क्वेश्चन है ना, ये 3 क्वेश्चन से मेरे अपने पर्सपेक्टिव्स क्या है संबंध से लेकर वो क्लैरिटी होगी। ठीक? मेरा अपना दृष्टिकोण क्या है? मेरी दृष्टि में मैं क्या देख पाता हूं कि संबंध है
और मैं हमेशा ही सबके साथ संबंधपूर्वक जीने का प्रयास करता हूँ। ये हो गया पर्सपेक्टिव नंबर 1, that there is a relationship and I try to live with the feeling of relationship with every single human being, unconditionally and continuously. The second perspective, no, there is opposition. People fights, कोई किसी का नहीं है, किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, और केवल किसी के ऊपर भरोसा क्यों नहीं, उसके ऊपर उसके लिए लाइन भी लिखते हैं हम लोग, है ना। किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना, ये पिताजी बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, बोलते हैं, हम अपने बेटों को बोलते हैं नहीं बोलते हैं अनजान लोगों से कि बेटा किसी के ऊपर ही, अनजान तो बात थोड़ी इतना स्पेसिफिक करके नहीं बोलते, ये बोलते हैं कि किसी पे भी भरोसा नहीं करना। अब वो बच्चा सीख जाता है और फिर आगे चलकर वही वो पिताजी के ऊपर भरोसा नहीं करता तो पिताजी परेशान होते हैं। तो क्या है दूसरा पर्सपेक्टिव, दैट देयर इज अपोजिशन, विरोध है। तीसरा पर्सपेक्टिव क्या है कि जो दुनिया है ना बड़ी बदमाश है, जिसके हाथ में लाठी है उसकी भैंस है। तो आपके हाथ में लाठी रहनी चाहिए, आपको दूसरे के ऊपर डोमिनेशन करना चाहिए। देयर इज स्ट्रगल, और ये स्ट्रगल में जो डोमिनेट करेगा, जो एक्सप्लॉइट करेगा, उसकी जीत होगी। तो ये तीनों पर्सपेक्टिव्स हैं। अभी आप चेक कर सकते हैं कि आपका अपना पर्सपेक्टिव क्या है। नंबर 1, ये संबंध है और मैं हमेशा संबंध पूर्वक जीने का प्रयास करता हूँ, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, या विरोध है, या तीसरी बात है कि देयर इज स्ट्रगल, संघर्ष है। संघर्ष किस चीज? सर मेरा आंसर तो 1 आ रहा है, लेकिन जो थर्ड का आगे की लाइन है, देयर इज स्ट्रगल फॉर सर्वाइवर और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो भी कहीं ना कहीं अंदर से आ रहा है। सर संघर्ष क्लियर नहीं हुआ इस चीज का संघर्ष। क्या तीसरा पॉइंट है सर, तीसरा पॉइंट ये है कि क्लियर नहीं, हाँ, देयर इज सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, संघर्ष है। जो बल है, बलशाली ही जीतेगा, और अगर बलशाली जीतना है तो मुझे मेरे बल का प्रयोग बार बार करना है, और इसी तरह से दुनिया है। ये अगर मेरे पर्सपेक्टिव अगर है तो इस परसेप्शंस के साथ में मैं अपने बच्चों के ऊपर भी डोमिनेट करता हूँ। तो मेरा 2 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, वो यहीं बैठे और वो केवल बैठा ही रहे, ये भी मैं डोमिनेट करता हूँ। ये तो एक्सट्रीम होगा ना सर कि नहीं बैठा रहे, लेकिन कई बातों में उसको रोकना भी पड़ता है किसी। मैं वही कह रहा हूँ कि मेरा पर्सपेक्टिव क्या है उस पर डिपेंड करेगा मैं जीऊंगा कैसे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, इसको और थोड़ा सा ओपन होकर देखने के लिए, कि एक छोटा सा कमरा है, 10 बाय 10, 10 बाय 12 का एक कमरा है। उस कमरे में एक रोटी है और एक फिजिकली स्ट्रांग व्यक्ति है और दूसरा फिजिकली वीक व्यक्ति है। तो रोटी किसे मिलेगी? इसका रिलेशन ज्यादा अच्छा है। मेरा सर, मेरा भाई है, फिजिकली वीक है, दो लोग हैं वहाँ, क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है? देखिए, मैं तो सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना कि एक कमरे में एक रोटी है, ठीक, और 2 व्यक्ति है, एक फिजिकली स्ट्रांग है, एक फिजिकली वीक है, तो रोटी किसे मिलेगी? स्ट्रांग वाला हैंडीकैप को देगा, बड़े वाला जो स्ट्रांग है वो छोटे को खिला, छोटा भाई अगर हैंडीकैप है तो उसे दे देगा। देखिए अभी क्या हो रहा है, Are you able to see the perceptions, how the perception works? ठीक, यही नहीं कि वो स्ट्रांग को ही मिलेगी, राइट, लेकिन वो स्ट्रांग अगर मदर है, वीक अगर बेबी है, तो ये भी हो सकता है कि मदर नहीं खाएगी। जैसे बता रहे कि वो हैंडीकैप है, तो वो हो सकता है कि जो फिजिकली स्ट्रांग है वो नहीं खाएगा, वो शेयर करेगा। हो सकता है कि दोनों भाई भाई हैं, शेयर भी कर सकते हैं, राइट। पूरी तरह से दी भी जा सकती है
और पूरी तरह से छीनी भी जा सकती है। ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि मेरे अपने परसेप्शंस क्या है। तो जैसे मैं परसीव करता हूँ रिलेशनशिप को, उसी तरह से मैं रिलेशनशिप को फुलफिल करने का प्रयास करूंगा। लेकिन जहां पर भी रिलेशनशिप है वहां पर फिर डोमिनेशन या एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, वहां पर शेयरिंग है, वहां पर नर्चरिंग है। इसीलिए हम सभी ने संबंध को स्वीकारा है। जैसे यहां पर कोई है जो झगड़ा करना चाहता है, केवल झगड़ा करना चाहता है, नहीं। इसका मतलब क्या है कि हम सभी संबंध को जीना चाहते हैं, संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं, और हम कोशिश भी बहुत करते रहते हैं। लेकिन इतने सारी कोशिश के बावजूद भी घर में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट। और ये कहाँ हो रहा है सारा आर्ग्यूमेंट्स, झगड़ा? ये हो रहा है परिवार में, ये हो रहा है क्लोज फ्रेंड्स के साथ में, ये हो रहा है हमारे कलीग्स के साथ में, वर्क प्लेस में। इतना ही नहीं, रास्ते में भी चलते चलते हम कभी कभी किसी से भिड़ जाते हैं। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट, है ना? रास्ते में भी चलते कभी कभी भिड़ जाते हैं। लेकिन जब भी ये झगड़ा होता है तो हम उसको बंद करना चाहते हैं या उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं? बंद करना चाहते हैं, हम रिजॉल्व करना चाहते हैं। इसीलिए बहुत बार हमारी गलती ना होने के बावजूद भी हम सॉरी कहते हैं, हम पैचअप कर लेते हैं। ठीक, कभी कभी तो हम कसमें खा लेते हैं कि मैं कसम खाता हूं कल से झगड़ा नहीं करूंगा, लेकिन दूसरे दिन की शाम होने तक वापस झगड़ा होना शुरू हो जाता है। और जैसे वापस झगड़ा शुरू हो जाता तो हम ये चाहते हैं कि दूसरा सुधर जाए, और दूसरा ये चाहता है कि हम सुधर जाए। क्या ऐसा हो रहा है? इस तरीके से जो इंसिडेंसेस है, रिएक्शंस के, इरिटेशन के, एंगर के, दूसरों से बातचीत बंद करने के, ये बढ़ रहे या घट रहे? और पता है ये दूसरा कौन है? ये दूसरा कोई डीनी एचओडी नहीं है, ये दूसरा वही है जिसने मुझे जन्म दिया है, जिसको मैं माँ कहता हूं, उससे मैं बातचीत बंद कर देता हूं। ये दूसरा व्यक्ति वही है जिसके साथ में मैंने रस्में कस्में खाकर जिंदगी जीने का प्रॉमिस किया है, वो मेरा स्पाउस है। ये दूसरे व्यक्ति में वो भी हो सकता है जिसको मैंने जन्म दिया है। उसी के साथ मैं कभी कभी एक दिन, 2 दिन या कभी कभी बात ही नहीं करता हूं। अभी पीछे एक फ्यूनरल में जाना हुआ था, हमारा रिश्तेदार का फ्यूनरल था, तो उनका एक ही बेटा, वो बेटा दिख नहीं रहा था कहीं। जैसे ऐसी बातचीत शुरू हो गई कि बेटा नहीं है, कहाँ है आजकल, कहीं बाहर गया है क्या? तो फिर पता चला कि नहीं, बेटा भी उसी शहर में है जहां पर माँ का जो देहांत हुआ, माँ का देहांत हुआ था। और फिर किसी से इनपुट पता चला कि ये माँ और बेटे के बीच में 6 साल पहले झगड़ा हुआ था, और बेटे ने कसम खाई थी कि माँ तू मर भी जाएगी तो मैं नहीं आऊंगा। कौन है ये दूसरा व्यक्ति? उसके साथ हम सुनना बंद कर देते हैं, फिर धीरे धीरे आर्ग्यूमेंट्स, डिबेट्स, फिर एक दूसरे के साथ में नहीं जीना, नहीं रहना। भले एक शहर में रहते हैं लेकिन एक शहर में अलग अलग जगह पर जाकर रहना। क्या लगता है ये सारे जो इंसिडेंसेस है, इस तरीके से इंसिडेंसेस बढ़ रही है या घट रही है? दिन ब दिन बढ़ रही है। इसके साथ जो सुबह में इनॉग्रल में बात कर रहा था कि हमारा एजुकेशन भी बढ़ रहा है, स्कूल की संख्या बढ़ी, कॉलेज की संख्या बढ़ी, यूनिवर्सिटीज की संख्या बढ़ी, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ी। 20-20, 25-25 साल स्कूल में, कॉलेजेस में समय लगाने के बाद ये जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के जो इशू है, जो इतना बड़ा ट्रबल है, ये कम होना चाहिए था या बढ़ना चाहिए था? लेकिन ये बढ़ ही रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अब संबंध को पढ़ते हैं किताब में, ये
पढ़ कौन रहा है? मैं। पढ़ने वाला कौन हूँ? मैं। किसके लिए पढ़ रहा हूँ मैं? मेरे लिए। क्या मैं कहीं एजुकेशन में हूँ? हम इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच पढ़ रहे हैं, हम साथ में रहने की अप्रोच नहीं पढ़ रहे। हाँ, एजुकेशन में मैं हूँ क्या? एजुकेशन में केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, एटम है, मॉलिक्यूल है, मैं ही नहीं हूँ। और अगर मैं एजुकेशन में नहीं हूँ तो 20-25 साल एजुकेशन के प्रोसेस के थ्रू जाने के बावजूद भी मुझे क्या होना सहज स्वीकार्य है, मैं क्या चाहता हूँ, वो क्लैरिटी नहीं आ पाएगी। तो क्या लगता है, हम केवल बच्चों को जॉब के लिए तैयार करें या बच्चों को एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए तैयार करें? फुलफिलिंग लाइफ बच्चा जी पाए। आजकल तो क्या हो रहा है कि बच्चा ग्रेजुएट्स भी कर ले रहा है, अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से मास्टर्स भी कर लेता है, एमटेक भी कर लेता है, पीएचडी भी कर लेता है, कंफ्यूज रहता है। इतना कंफ्यूज रहता है कि उसको पता नहीं चलता कि टीचर के साथ में कैसे बात करें, पेरेंट के साथ में कैसे बात करें, भाई के साथ में कैसे बात करें, बीवी के साथ में कैसे बात करें। तो ये जो संबंध पूर्वक जीने के लिए संबंध को समझना भी आवश्यक है। तो ये तीसरी बड़ी बात निकल आ रही है। क्या निकल के आ रही है कि अगर मुझे निरंतर सुखपूर्वक जीना है तो निरंतर सुखपूर्वक जीने की मेरी चाहना की पूर्ति के लिए स्वयं में सही समझ, मानव के साथ में संबंध और शेष प्रकृति के साथ सुविधा, ये तीनों भी आवश्यक है। अभी हम ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक में ये एक्सप्लोरेशन को जारी रखिए। लंच करते वक्त भी आप इसको सोचिए कि अगर मैं निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता हूँ तो स्वयं में समझ, संबंध के भाव और सुविधा के साथ क्या मैं निरंतर सुखी रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगा। दीदी से कुछ सूचनाओं को सुनते हैं। Thank you, Bhaiya. A little this, who are fasting for the Ekadashi today, arrangements has been made in next room 306 and next to next room is 307 where non-fasting lunch is provided. So this was the instructions given by the host. You can have, and we'll meet again exactly by 2 o'clock. We start the session. Thank you. Basic is how to decide if we have to choose between the physical things or the relationship, and which one is to which we have to give more weightage. Thank you. We learn how to maintain balance between your relation and your physical needs, and how you can make happy yourself. Your happiness is important. If you are not happy, then you cannot make others happy. मैडम, हम लोगों ने लर्न किया कि आज ज़्यादातर एफर्ट जो है हम लोग फिजिकल फैसिलिटी को एक्यूमुलेट करने में लगा रहे हैं, बट अगर हमें खुशहाल ज़िंदगी गुजारनी है और उसे एक कंटिन्यूस फॉर्म में गुजारनी है तो हमें रिलेशनशिप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है। फिजिकल फैसिलिटी भी ज़रूरी है, बट रिलेशनशिप आर मोर इम्पोर्टेंट। मैम, हमने सिर्फ क्वेश्चन जनरेट किए हैं कि हैप्पीनेस क्या है और प्रोस्पेरिटी क्या है, और इन चीज़ों में बैलेंस के लिए ओनली फ्यू क्वेश्चंस वी हैव जनरेटेड इन दिस सेशन एंड वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू बी हैप्पी इन कंटिन्यू टिल नाउ। Okay, I'll just come back to you. Contrary to them, we have not learned anything till now. Okay. It is only sir has made us to think. We have just started our journey, and what I understood is everybody have their own perspective. You have something to say? Yeah, exactly the same. On the same page, I must say that there are many questions which were raised, as sir has rightly mentioned, and Umesh sir has actually let us think more about it, and it is something which was discussed there also. So I think it is a curiosity which was generated. Okay. Yeah, I'll ask. Happiness, prosperity, and continuity in happiness and prosperity, these are basic human aspirations, which I came to know after first session. Along with that, physical facilities are necessary, as well as relationships are also necessary, and right understanding. It's just a matter of what is the correct sequence. But these three things are important for human beings, not only physical facilities. Okay, thank you. We'll have the last one. It's all about
the natural acceptance. Anything that is naturally acceptable will definitely make us happy. And when we compare the physical facilities with relationship, definitely priority needs to be given to the physical, to the relations that we have, and then the second priority should be given to the physical needs. Thank you. We'll ask Bhaiya to take over. Thank you. So welcome back. We'll continue our journey of self-exploration from the point we left before lunch. What we have discussed in the first session is the basic aspiration of each one of us is to ensure the continuity of happiness and prosperity. For the fulfillment of this basic aspiration, we need these three things: right understanding in the self, relationship with other human beings, and physical facility with the rest of the nature. If all these three things are there in the set priority order, then I can be happy, I can be prosperous. Now the question is, are all three required? Yes. Yes? If all three required, then are we taking care of all these three? No. Priorities are misplaced. Okay. Some So, some things are we are missing. That is right understanding. Please use the mic. Most. After discussion, we are getting to know that we are somehow missing right understanding. Then sometimes relationship when we ran behind physical facility. okay. So all these three things are required. The set priority would be right understanding as number one, relationship number two, and physical facility as number three. But then are we working for all these three? So the answer is coming no. We are largely focusing on physical facility. So number one and number two is missing. And I think this is the role of education, to find out this missing link and take efforts for its fulfillment. I mean, just imagine if the right understanding and right feeling is missing in human being. Can a human being be happy? क्या परिवार ठीक ठीक जी सकता है? समाज ठीक हो सकता है? देश ठीक हो सकता है? दो देशों के बीच के संबंध ठीक हो सकते हैं? क्योंकि सब कुछ ठीक होने के लिए आवश्यक क्या है? सही समझ और सही भाव. और वही जो बड़ी जो लिंक है वो लिंक मिस हो रही है. और कहीं ना कहीं एजुकेशन के माध्यम से हमने एक प्री कंडीशनिंग को सेट कर पाए हैं. और क्या प्री कंडीशनिंग? फिजिकल फैसिलिटीज एवरीथिंग. दैट इज द रीजन इट हैज बिकम द प्रायोरिटी नंबर वन. इस प्रायोरिटी को अगर नंबर वन बने तो यहां पर तो क्वेश्चन मार्क बने रहेंगे. तो आज अगर हमारे इश्यूज देखें ना, जो कुछ हमारे प्रॉब्लम्स है, ह्यूमन बींग्स के प्रॉब्लम्स के बारे में बात अगर करें तो दिखता है कि समझ की कमी के कारण और संबंध के भाव के अभाव के कारण समस्याएं हैं. सुविधा कोई समस्या है क्या? देखिए, इस हॉल में भी एसी चल रहा है ना. बाहर चाहे कितना भी टेम्परेचर हो जाए, वो बाहर के टेम्परेचर 40 भी हो जाए, 40 प्लस भी हो जाए,
लेकिन उसके बावजूद भी इस हॉल का टेम्परेचर हम 20, 22, 18 कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के साइंस की ये उपलब्धि रही है। क्या उपलब्धि रही है? इस हॉल में यहाँ पर एसी फंक्शनल हो, उसके लिए पता है क्या 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 चीजें करनी पड़ी? एसी कैसे बनता है? उसके बाद में ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। ठीक, तो एक तो एसी के यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करना, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना, वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हुए जहाँ से पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन है वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन तक लाई, वहाँ से लेकर वो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ तक आई, उस इलेक्ट्रिसिटी के साथ में ये एसी चल रहा है। इतनी हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी की उपलब्धि है। लेकिन इस सारे उपलब्धि के साथ इस हॉल में बैठे वाले लोग एक दूसरे के साथ में ठीक जिएंगे, इसकी कोई गारंटी है? तो जितना भी हम डेवलप कर रहे हैं ना, ग्रो कर रहे हैं, वो कितना ग्रो कर रहे हैं? इन द सर्कल ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज। इससे अधिक हमारा साइंस, इससे अधिक हमारा टेक्नोलॉजी नहीं कर पा रहा। ये बात तो ठीक है। हम साइकिल से कार पे आ गए, कार से सेल्फ ड्रिवन कार पे आ गए। सेल्फ ड्रिवन कार के साथ में अभी बहुत सारे सेंसर्स को यूज कर रहे हैं। तो कार में ड्राइवर ना भी रहे तो कार चलती है ना, भीड़ भाड़ वाले रोड पे चलती है। जब चाहे सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, सेंसर्स पे ब्रेक लग जाते हैं, लेफ्ट टर्न लेती, राइट टर्न लेती, सिग्नल पे रुक जाती। इतना सब कुछ हमने किया। लेकिन उस कार में बैठने वाला व्यक्ति अगर उस कार को चला रहा है तो वो अपने में रिलैक्स रहे, अपने में स्थिर रहे। ये साइंस और टेक्नोलॉजी कर पाई है। तो जो हमारा एजुकेशन का फोकस जो हुआ है ना, क्या हुआ है कि हम केवल स्किल्स को डेवलपमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। और जितनी भी स्किल्स को विकसित करते रहेंगे, उसके साथ में वो जो फिजिकल फैसिलिटी का जो गोला है उसको हम बढ़ाते रहेंगे। वो आवश्यक है। लेकिन फिर संबंध और समझ की जगह पर बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स बने रहेंगे। और ये अगर मेरी मान्यता हो गई कि फिजिकल फैसिलिटी ही सब कुछ है, तो गाय के लिए भी तो फिजिकल फैसिलिटी सब कुछ है। तो दिस इज लाइक लिविंग विथ एनिमल कॉन्शियसनेस, क्योंकि एनिमल के लिए केवल सुविधा पर्याप्त है। इसी के चलते आज अगर देखा जाए तो समझ की कमी, साथ ही साथ संबंध के भाव की कमी, अगर वो संबंध का भाव मुझ में न हो, उस वक्त मैं दूसरों के साथ ठीक से जीता हूं या ठीक से जी नहीं पाता हूं। क्या लगता है आपको? अगर संबंध के भाव का अभाव मुझ में है तो उस वक्त मैं दूसरे के साथ में ठीक से जी पाता हूं या नहीं जी पाता हूं? जैसे एक छोटा सा उदाहरण, कॉलेज में गड़बड़ होती है, फाइट्स होते हैं या नहीं होते? होते हैं ना। कभी कभी बहुत बड़े भी हो जाते हैं, जिसे जनरली हम लोग आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट का नाम देते हैं ना, या तो कहते हैं कि डिस्प्यूट, राइट, हॉट आर्ग्यूमेंट्स। तो लेट अस मान लीजिए कि कॉलेज में आपके फ्रेंड के साथ में आपका एक हॉट आर्ग्यूमेंट हो गया। उस आर्ग्यूमेंट के बाद में क्या होता है? आप भी आपके घर चले जाते हैं और आपका फ्रेंड भी आपके घर चले जाता है। ये होता है नहीं होता? कभी ऐसा हुआ है क्या कि आपने पीछा किया उसके घर तक? किए? कभी नहीं किए। क्यों? बिकॉज वी डू नॉट वांट टू फाइट, वी वांट टू लिव विद द फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप। इसीलिए वो जो कुछ आर्ग्यूमेंट है, उस आर्ग्यूमेंट के बाद में फ्रेंड चले जाता है, आप भी आपके घर पे चले जाते हैं। आपके घर पे जाने के बाद में ये हो सकता है कि 2 घंटा अपने कमरे में बैठकर आप बहुत अच्छी प्लानिंग करेंगे कि कल रिवेंज कैसा लूं। ऐसा प्लानिंग करते नहीं करते? आज तो बात छूट गई है, लेकिन कल एचओडी के सामने
2 घंटा प्लानिंग करते रहते कि ये बात कहना भूल गई मैं, कल ये कहूँगी, कल इस तरीके से बदला लूँगी। 2 घंटा अपने रूम में बैठकर आप जब ये प्लानिंग कर रहे हैं रिवेंज की, उस वक्त आप कंफर्टेबल है या अनकंफर्टेबल है? आप स्थिर होते हो या अस्थिर होते हो? और उस समय आपका 5 साल का बच्चा आपके पास में आ जाए तो मुझे बताइए वो 5 साल के बच्चे की क्या गलती है जो वेट कर रही है कि माँ कब कॉलेज से घर पे आएगी और कब जाकर उसके साथ में मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगा। क्या आप इस बात को देख पा रहे हैं कि अगर मैं अपने में स्थिर नहीं हूं तो उस समय भले ही मैं चाहता हूं दूसरे के साथ में ठीक ठीक जीऊं, लेकिन जी नहीं पाता हूं। तो दैट लीड्स टू म्यूचुअल अनहैप्पीनेस। अगर मैं सुखी नहीं हूं तो परिवार के सुख की व्यवस्था में मैं भागीदारी नहीं कर पाता हूं। If I want to make my family happy, what is the prerequisite? I need to be happy within. If I want to see a harmonious society, what is the prerequisite? I need to be in a harmony within. But to have this harmony within, essentially right understanding and the relationship is required within. But such sort of an assumption which talks about physical facilities, everything, there's a lack of right understanding within, there's a lack of feelings of relationship within, which leads to the mutual unhappiness. I am unhappy within, and I transferred my unhappiness on the people around me. Similarly, is your physical facilities. What do you think? Is it important to understand what is the role of physical facility or not? How much physical facility is required? You want to be rich, right? आप श्रीमंत होना चाहते हैं या नहीं चाहते? हाँ या ना? मुझे बताइए कि कितना होने से आप श्रीमंत हो जाओगे? इसका मतलब कभी नहीं होगे। Look at what kind of programs we are following, right? I want to be the richest, but I do not have clarity that how much is required to be the richest, which means I am bound to be deprived. So how much physical facility is required? What is the role of physical facility? How do I produce physical facility? All these questions are important. So this right understanding within me provide answers to these questions. And with these questions, I will be able to do the correct assessment of my required physical facility. But today, it's not being done through our education. That is the reason, if you look around the society, we are able to see there are 2 different categories of the people. The category number 1, lacking physical facility, unhappy and deprived. There is no enough nutritious food to nurture the body. There are no proper clothes to protect the body. Shelter is not enough to protect the body. The deprivation will be there. The unhappiness will be there. But the category number 2 is having physical facility, unhappy and deprived. There's a whole lot of accumulation. Job is there, salary is there, house is there, car is there, mobile is there, laptop is there, 5G network is there, but still unhappy and deprived.
हम लोग कौन से कैटेगरी में हैं? सेकंड में, हैविंग फिजिकल फैसिलिटी अनअपेयरली प्राइड। और पूरा सरकार का भी अगर देखा जाए तो यही कार्यक्रम चलता है, जो 2 नंबर पे है उसको 1 नंबर पे ले जाओ, 1 नंबर पे उसको 2 नंबर पे लाओ। सुविधा नहीं है तो सुविधा दे दो, लेकिन सुविधा देने से भी क्या होगा, 1 नंबर का 2 नंबर में आ जाएगा। इससे अधिक क्या होने वाला है? Do you want to be in category 1, category 2? Can we have third category, lacking physical facility and still happy? Yeah, this can be a third category. Having physical facility, happy and prosperous. So where do you want to be? At least there is something where we want to be in the third category. Otherwise, every time, we want to be in the category number 1. But this is the third category we want to be. Having physical facility, happy and prosperous. और मुझे लगता है कि ये एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर स्टूडेंट को उसमें योग्यता को विकसित करते हुए वो स्टूडेंट अपने में सुखी हो पाए, समृद्ध हो पाए और आवश्यकता से अधिक सुविधा का उत्पादन या उपलब्धि कर पाए। लेकिन केवल फिजिकल फैसिलिटीज को ही फोकस अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इट्स काइंड ऑफ लिविंग लाइक एन एनिमल कॉन्शियसनेस। Human consciousness would means the combination of these 3 things in the set priority order. जब आप में समझ का भाव हो, लेट अस से किस तरीके से हमारा व्यवहार चलता है, you have some understanding. ठीक, ये दोनों भी हो सकती है, ये राइट भी हो सकती है, नॉट राइट भी हो। ठीक है, जैसे आप में एक समझ है, क्या समझ है कि संबंध है। ये जब समझ आप में बनी रहती तो आप में भाव कैसे बनेंगे? समझ अगर संबंध की है तो भाव कैसे बनेंगे? संबंध के बनेंगे या विरोध के बनेंगे? संबंध के बनेंगे। तो आपकी जो कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है उस अंडरस्टैंडिंग से आपकी फीलिंग्स डेवलप होती है। ठीक, तो यहां पर राइट के जगह पर रिलेशनशिप अगर है तो आपकी फीलिंग्स कैसे होगी? रिलेशनशिप जो आप में भाव चलते ना उसके अनुसार आपके विचार बनते हैं। आप इस बात को देख पा रहे हैं कि जैसी आपकी फीलिंग्स चलती है वो फीलिंग्स के अनुसार आप में थॉट्स डेवलप होते हैं। तो आप में अगर संबंध का भाव चल रहा है तो विचार कैसे चलेंगे? संबंध के। विरोध का भाव चल रहा है तो विचार कैसे बनेंगे? विरोध के। देखिए, सासू माँ के बारे में विरोध का भाव चलता है तो सासू माँ के प्रति विचार कैसे चलते हैं? विरोध के चलते या संबंध के चलते? विरोध के चलते, है ना। उसी तरह से सासू माँ के जगह, सासू माँ के साथ में संबंध का भाव चल रहा है तो फिर विचार कैसे बनेंगे? संबंध के बनेंगे। ठीक, तो जो भाव होते हैं उस भाव के साथ में हमारे विचार बनते हैं, तो विचारों में भी क्या रहेगा? संबंध। ये जो विचार है ये हमारे बिहेवियर में ट्रांसलेट होता है। अब ये बिहेवियर कैसा होगा? राइट हो गया। ये राइट बिहेवियर क्यों हो रहा है?
क्योंकि मेरी समझ सही है, उसके साथ में मेरे भाव सही हो रहे, ये सही भाव के साथ में विचार सही हो रहे, ये सही विचार मेरे व्यवहार में आ रहा, तो मेरा व्यवहार कैसा है? सही। सही व्यवहार का अर्थ क्या है? फुलफिलिंग, म्यूचुअली फुलफिलिंग। मैं भी सुखी और मेरे संपर्क में आने वाला दूसरा व्यक्ति भी सुखी। ठीक? यहां पर अंडरस्टैंडिंग अगर सही नहीं है तो भाव कैसे बनेंगे? विचार कैसे चलेंगे? व्यवहार कैसा रहेगा? जैसे इसका एक एग्जांपल अगर देखा जाए कि मुझ में अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है, ठीक? क्या लगता है कोई व्यक्ति आपको देखकर अच्छे स्माइल के साथ में गुड मॉर्निंग कहे, ये अच्छा व्यवहार है या बुरा व्यवहार है? अच्छा है या नहीं है? अच्छा व्यवहार है। फिर कभी कभी आपको बुरा क्यों लगता है? कभी कभी आपको बुरा क्यों लगता है? जैसे कॉलेज के पार्किंग में चले गए, आपने आपकी गाड़ी लगा दी, वहां पर कोई दूसरे कलीग आ गए, उन्होंने भी उनकी गाड़ी लगा दी, और वो दूसरे कलीग आपके बड़ा सा स्माइल शेयर करते हुए आपको कह रहे कि गुड मॉर्निंग सर। लेकिन उस वक्त अगर आपके भाव स्थिर नहीं है तो गुड मॉर्निंग आपको ऐसे नहीं लगता कि वो टीज कर रहे हैं मुझे? अब दूसरे के गुड मॉर्निंग कहने से भी परेशान होते हैं। उसने नहीं कहा तब भी परेशान, कहा तब भी परेशान। ये क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए होता है कि मेरे में जो कुछ समझ है वो समझ में कहीं ना कहीं इश्यूज चल रहे हैं। मैं अपने में कॉन्ट्रडिक्शन में चल रहा हूं। अगर मैं स्वयं में कॉन्ट्रडिक्शन में हूं तो मेरे भाव भी कॉन्ट्रडिक्टरी रहेंगे, मेरे विचार भी कॉन्ट्रडिक्शंस में चलेंगे और मेरा व्यवहार भी बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी रहेगा। ये दोनों बात को आप देख पा रहे हैं? ठीक? अगर ये आपकी समझ सही है तो भाव सही, सही भाव के साथ में सही विचार, ये तीनों अगर सही रहा, विल यू बी इन हार्मनी और डिसहार्मनी? दैट इज हैप्पीनेस। व्हाट इज हैप्पीनेस? टू बी इन हार्मनी विद इट इज हैप्पीनेस। अभी जो सही समझ की, सही भाव की, सही विचार की, सही समझ, सही भाव और सही विचार, ये अगर आप में बनना शुरू हुए, विकसित आप अगर कर रहे, तो उसकी कंटिन्यूटी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? तो सुख की निरंतरता संभव लगती है या नहीं लग रही है? मैं निरंतर सुखी रह सकता हूं। इसका मतलब क्या है कि मैं निरंतर अपने में स्थिर रह सकता हूं, मैं निरंतर अपने में कंफर्टेबल रह सकता हूं, मैं निरंतर अपने में हार्मनी में रह सकता हूं। लेकिन उसके लिए आवश्यक क्या है? मेरी समझ, मेरी भाव और मेरे विचार ये ठीक रहे। अगर ये ठीक नहीं है तो आप हार्मनी में या डिसहार्मनी में हो? So who is making you happy? Who is making you unhappy? Are you able to see to it? That I am responsible for my happiness, I am responsible for my unhappiness. No one is making me unhappy. मेरे में जो समझ है या मुझ में जो भाव चल रहे हैं, मुझ में जो विचार चल रहे हैं, वहां पर अगर गड़बड़ है तो मैं दुखी हो जाता हूं। इसको देख पा रहे आप? और इसी को कहा जा रहा है सुख। ये तीनों बातें ठीक होना। ठीक है?
तो ये समझ अगर मेरी ठीक हो जाए तो समझ के साथ मेरे भाव ठीक हो जाएंगे। समझ और भाव के साथ में मैं सुखी होता हूं। जब मैं अपने में सुखी हूं तो दूसरों के साथ में भी सुख से प्रस्तुत हो पाऊंगा। Sir, whatever we have discussed actually, don't we feel that it is going in one way only? Because I want to be nice to other person, that's one thing. But I know that the other person is not very nice to me. Then my thoughts for him can be of opposition. And with this discussion, I will be negative thoughts. Yeah, but you want to be happy or unhappy? Then if it depends on the other person how he is reacting for my. No. Do you want to be happy or unhappy? Obviously, I want to be happy. That's it. So if you have nice thoughts in you, are you happy or unhappy? But that's what I'm saying. It is becoming in one way only, I want to be happy, so I should have very nice thoughts in me, even if other person is not very fine with me. Yeah, but see, other person is deciding for you, right? Yes. Do you want to decide at your own or not? If the other person is deciding my behavior, which means I have no control here on me. So they are like remote controls. And if they are pushing a button, my moods fluctuates. Right? So I am getting operated by the other person. But I want to decide on my own right. So I can decide on my own right. Do I want to be happy or unhappy? I'm not saying, you have to be nice with the other people. I'm just simply asking you, do you want to be nice or you don't want to be the nice? You can decide. Okay? What I feel is कि we should be like, suppose somebody is influencing me to change my behavior of being nice. So I should concentrate on me itself and not the other person who is influencing. But sir, फिर उसमें क्वेश्चन ये आता है कि हम कितनी बार इग्नोर करें? 3 बार, 4 That is बार. up to you. Patience. Your patience is important. I think. चलिए पहले ये जो दो है, इन दोनों से लेकर कुछ इनपुट देते हैं, फिर आगे चलते हैं, फिर आपके तरफ भी आते हैं, है ना? ये कि निगलेक्ट करें, ठीक है, करके देख लीजिए, ना इग्नोर भी करना ना, करके देख लीजिए. At least try to neglect other person for 1 hour. Sir, neglecting someone is again contradictory. Yeah, that's what. But the suggestions are coming, right? Yes. So suggestions are coming. So that's the reason I'm saying. By neglecting, if you can be happy. See, after all, I want to be happy. And by neglecting someone, if I can be happy, then it's an easy way. So try to neglect. And see that, can you neglect? If yes, go ahead. आपको पता चलेगा कि जिसके प्रति विरोध का भाव आप में होता है, आप उसी व्यक्ति के प्रति ज्यादा सोचते हो. राइट? अभी आप थोड़ा सा इसको ना अपने विचार में जो कुछ चलता है, उस विचारों को अगर आप देखना शुरू कर दे तो आपको दिखाई देगा कि जिनके भी प्रति आप में विरोध है, उनके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हो. तो निग्लेक्ट करना तो बहुत दूर की बात है बेटा. यू कैनॉट इग्नोर, यू कैनॉट निग्लेक्ट. व्हाई? बिकॉज लिविंग विद द फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप इज नेचुरली एक्सेप्टेबल टू अस. कई बार ये भी होता है कि सामने वाले ने आपको इतना परेशान कर दिया कि जब तक आप उसको जाके 10-20 गालियां ना दे लो, इतना ना मारो, उसका मिले ही ना. मारिए.
देखिए, आपको लगता है ना 10 जूते मारने से वो ठीक हो जाएगा और आप सुखी हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो क्या है ना, हम इसको ध्यान से देख नहीं पा रहे हैं, राइट। ये दूसरे को 10 जूते मारने की नौबत जब तक मुझ में आई, तब तक मैं अपने में स्थिर हूं या परेशान हूं? दूसरा परेशान ही कर रहा है सर, इससे सीरियस। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, आप कहीं ना कहीं कमजोर हो या आपकी कमजोरी है, आपका बच्चा उसके पास फंसा हुआ है, कुछ भी है सर, नहीं मार के इस सिचुएशन में हो कि इज ट्रबलिंग यू, देन व्हाट टू डू। देखिए मैं बार बार वही कह रहा हूँ, यू व्हाट टू डू, इसका आंसर कहाँ से आएगा? स्वयं से, राइट। और अभी क्या हो रहा है कि यही आंसर को हम नहीं दे पा रहे हैं। ये these are two important questions. What to do and how to do, right? These are the most important questions of our life. ये दोनों क्वेश्चंस में महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन सा है? विदाउट व्हाट की क्लैरिटी। अगर व्हाट की क्लैरिटी नहीं है और इसके ऊपर आप फोकस करेंगे तो क्या करेंगे? What to do is the basic question, right? What to do is the biggest question. Based on this, I can decide upon. माने कोई मेरी स्टूडेंट है, मेरी बेटी है, यहाँ से गाड़ी के पास सड़क पे मैं बार-बार उसे तंग कर रहा है। एक बार जाके आप बोलोगे भाई साहब भी ठीक नहीं, दूसरी बार बोलोगे, तीसरी बार क्या करोगे? हो सकता है उसका इन्फ्लुएंस हो, पुलिस वाला छोड़ के चला जाए, तीसरी बार तो आप उलट जाओगे, तोड़ोगे, तो वो डिस्क्रिमिनेट होगा। दैट इज पार्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि सर इस कोर्स से मेरा वो क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। From last long times we have seen such kind of problems in our institutions. Sometimes हम उसको solve करा देते हैं, sometimes we are not able to get that solved. तो वो फिर एक बड़ी प्रॉब्लम होकर चली जाती है हमारे पास। हम solve करवा पाते हैं तो ठीक ठाक हो जाता है, कई बार होती है। और वो तो स्टूडेंट है आपकी फैमिली में कहीं, each and everyone is suffering something like this. तो what to do is a biggest question. आपके पास गन है तो हो सकता है पाओ में आगे एकदम से मार कर दे, आपके पास और कुछ है तो आप कर दें, आप हो सकता है चुप बैठ जाएं। माइक उनके साथ तो आपका बच्चा सफर कर रहा है, चाहे वो स्टूडेंट है या फिर आपका कोई फैमिली मेंबर है, तो वो इस हद तक सफर कर रहा है कि वो उसकी लाइफ डैमेज हो सकती है। तो आप उस सिचुएशन में हो, यार ये मुझे पता है कि हमें यहाँ से आंसर नहीं मिल सकता, लेकिन वो मिलेगा अपने अंदर से ही मिलेगा। देखिए, मैं तो सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि हमारी जिंदगी में ये दो बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्या करना, कैसे करना। ठीक, ये दो प्रश्न हमारे हैं। ये दोनों भी महत्वपूर्ण है, लेकिन दोनों में अधिक महत्वपूर्ण कौन सा? जैसे भैया कह रहे थे कि व्हाट टू डू इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसके क्लैरिटी पर ये तय होगा। जैसे क्या करना, ये तय हो जाने के बाद में कैसे की बात हो सकती है, राइट? क्या कम्युनिकेट करना ये पहले तय होगा या कैसे कम्युनिकेट करना ये तय होगा? एक मिनट, क्या तय होगा? व्हाट टू कम्युनिकेट ये इम्पोर्टेंट है या हाउ टू कम्युनिकेट ये इम्पोर्टेंट है? व्हाट टू कम्युनिकेट, करेक्ट? What to communicate. So, what to communicate? To communicate the right understanding and the right feelings and the right thought. Okay? How to communicate? Then all the skills of the communication matters. So both are important. The skill is also important, but the clarity on the what is also important. ठीक है?
अगर ये दोनों भी इंपॉर्टेंट बात है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्या करना, उसके साथ आएगा कैसे करना। ठीक, अभी अगर हमारे एजुकेशन में देखा जाए तो कहां पर फोकस कर रहे हैं हम लोग, हाउ, विदाउट प्रोवाइडिंग क्लैरिटी ऑन व्हाट। अगर बच्चे को व्हाट की क्लैरिटी नहीं हो पा रही है, व्हाट डू आई नीड टू डू एज ए ह्यूमन बीइंग, यही क्लैरिटी नहीं है, तो आप जो कह रहे हो ऐसी समस्या तो बनी रहेगी। समस्या है और आपको मेंटली परेशान करती रहती है। देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना, वो क्यों बनी रहेगी, क्योंकि एक आदमी ने क्या करना चाहिए वही क्लैरिटी एजुकेशन के थ्रू नहीं हो पा रही ना। I am talking about that person, you and me also. I am talking about all the human beings, right? So not only that person, but this person also, and all the people, correct? Because this is not an issue of one person. तो ये क्लैरिटी के साथ में ये क्लैरिटी बन पाएंगी, लेकिन ये जो what to do है ना, ये वैल्यूज तय कर पाएंगी। मेरे लिए वैल्यूबल क्या है ये मैं तय कर पाऊंगा, उसके साथ फिर कैसे जीना है ये डिसाइड कर पाऊंगा। क्या लगता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों इंपॉर्टेंट है तो प्राथमिकता किसके हुई, वैल्यू। तो वैल्यू बेस्ड स्किल एजुकेशन अगर रहा तो हर एक में फुलफिलिंग लाइफ को जीने की कॉम्पिटेंस को हम डेवलप कर पाएंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये क्लैरिटी नहीं बन पा रही कि एजुकेशन क्यों, तो हम लोग एजुकेशन दे रहे हैं केवल इसके लिए, और जब इसके लिए एजुकेशन देते हैं तो हम एकेडमिक्स के थ्रू बच्चों को कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयार करते हैं। और जब कॉम्पिटिशन्स के लिए अगर हम तैयार कर रहे हैं तो दिस कॉम्पिटिशन इज बेस्ड ऑन द फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप और अपोजिशन। इज इट बेस्ड ऑन रिलेशनशिप और अपोजिशन? अपोजिशन। इसका मतलब क्या है कि यू आर हैविंग द फीलिंग ऑफ अपोजिशन फॉर ऑल with whom you are competing, with the others. So who is the reference point? Reference point कौन है, आप है क्या दूसरे हैं? दूसरा। तो कौन तय कर रहा है आपके लिए? दूसरा। आप तो अपने लिए तय भी नहीं कर रहे हैं। क्या समस्या हो रही है पता चल रहा है ना? इतने सारे प्रॉब्लम्स के साथ अगर हम जीने की कोशिश करेंगे तो यहां पर तो गड़बड़ बनी रहेगी, यहां पर गड़बड़ बनी रहेगी, यहां पर गड़बड़ बनी रहेगी, उसके चलते व्यवहार में भी गड़बड़ बनी रहेगी। तो एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हर बच्चे में उस कॉम्पिटेंस को डेवलप कर पाए जिसके थ्रू एवरी चाइल्ड विल बी एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर हिम एज ए ह्यूमन बीइंग। ये ठीक है? यहाँ तो कोई क्वेश्चन? सर एक एग्जांपल है, अगर आप रबर बैंड को दोनों तरफ से खींचोगे तो टूटेगा। यस यस, रबर बैंड टूटेगा नहीं। और अगर वही रबर बैंड को एक जगह से फिक्स कर लो और दूसरी तरफ से भी खींचोगे तब भी वो टूटेगा। अभी यही एग्जांपल अगर लाइफ में दो लाइफ पार्टनर है, हस्बैंड एंड वाइफ, चलो दोनों का भी वैल्यू एजुकेशन हो गया, लेकिन हर एक के अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस रहता है। तो अगर वाइफ ऐसा चीजें कर रही है कि जिससे हस्बैंड को बहुत दुख हो रहा है, लेकिन वो राइट अंडरस्टैंडिंग की वजह से चलो सस्टेन कर रहा है, हैप्पीनेस कर ढूंढ रहा है, लेकिन एक लिमिट तक ही, उसके बाद वो सस्टेन नहीं कर पाएगा।
वो चाहेगा कि देखो, एक तो बात है ना कि सीधी सीधी हस्बैंड वाइफ की बात हो जाए, वो रबर बैंड को बीच में क्यों लाया? कहना यही चाहते हैं कि वो इसीलिए ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रबर बैंड एक मटेरियल है, ठीक? तो रबर बैंड का रूल ह्यूमन बीइंग के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता। ये सारा ठीक है ना? ठीक है, एजुकेशन हो जाएगी, आदमी समझ जाएगा, लेकिन एक मिनट ना, हम देखिए, हम कंक्लूड क्या कर रहे हैं? हम कंक्लूड करें कि एक आदमी समझ जाएगा, हम कंक्लूड करें कि एक आदमी में राइट अंडरस्टैंडिंग है, और पता है वो कौन है जो समझ जाएगा, जिसमें राइट अंडरस्टैंडिंग है? मैं। तो हम बार बार ये कंक्लूड क्या कर रहे हैं कि मैं समझ जाऊंगा, मुझ में समझ है, उसमें नहीं, दूसरे में नहीं है ना? हम इस बात को कंक्लूड कर रहे हैं। एक सेकंड ना, ये जैसे हम केवल यहाँ पर एक शब्द लिखा है राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट? अभी तक तो हमने इसकी डिटेलिंग भी नहीं की कि इसका मतलब क्या है, राइट? कम से कम एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क्या लिखा है कि समझ अगर मेरी सही है तो भाव मेरे सही है। तो भाव मेरे सही है, इसका मतलब यह है कि मुझ में विरोध नहीं है। अगर ये हो रहा है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हाँ चलो मान लीजिए कि वो एक मैं हूं। लेकिन अगर मुझ में भी विरोध चल रहा है तो इसका मतलब यह है कि मेरे भी समझ में कहीं ना कहीं कमी है। तो समझ की मुझ में भी कमी है, समझ की दूसरे की भी कमी है, दोनों की भी अगर समझ की कमी है तो मैं कहां से शुरुआत करूं? मेरी समझ के ऊपर पहले काम करूं या दूसरे के समझ के ऊपर काम करूं? तो पहले मुझे मेरी अपनी समझ के ऊपर काम करना होगा। इसीलिए मैंने सुबह के सेशन में कहा कि कम से कम 1.5 दिन अपने ऊपर फोकस बनाए रखें। क्या है ना, जितना हम अपने ऊपर फोकस बनाए रखेंगे, जितना हम अपने को स्वयं को जानेंगे, तो स्वयं को जानने के आधार पर हम दूसरे को ठीक ठीक जान भी पाएंगे। अभी क्या हो रहा है कि हम स्वयं को भी ठीक से जान नहीं पा रहे हैं, तो दूसरे को भी ठीक से जान नहीं पा रहे हैं। ठीक? तो जो मैं सुखी होना चाहता हूं, मैं निरंतर सुखी होना चाहता हूं, और वो निरंतर सुखपूर्वक जीने के लिए ये तीनों भी सेट प्रायोरिटी में मुझ में होना आवश्यक है। अगर ये तीनों भी सेट प्रायोरिटी में मुझ में है तो मैं सुखी हूं। अगर ये तीनों की प्रायोरिटी अगर कुछ गलत हो जाती है तो मैं दुखी हो जाता हूं। तो अभी मैं अधिकतर समय अपने आप में हार्मनी में हूं, या कुछ इरिटेशन चल रहा है, कुछ कंप्लेंट्स चल रही है, कुछ गुस्सा चल रहा है, राइट? ये जितने भी इंडिकेटर्स है, ये इंडिकेटर्स है स्वयं में डिसहार्मनी के। आपने खुद के लिए कब समय निकाला था इससे पहले? खुद के लिए मैं कह रहा हूं, परिवार के लिए नहीं। बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए समय निकाला, माँ के लिए, पिताजी के लिए, वो नहीं पूछ रहा हूं। मैंने ये पूछ रहा हूं सिंपल सा क्वेश्चन कि आपने खुद के लिए कब समय निकाला, इसे आपको याद आ रहा है? अभी 8 दिन का समय मैं अपने लिए बता रहा हूं, मैंने निकाला। ठीक, बढ़िया। लेकिन सर अभी हो सकता है कि ज़्यादा क्लैरिटी हो टाइम के साथ। ठीक है, बढ़िया। क्या लगता है ना कि हम हमारे लिए भी समय निकाले या नहीं निकाले? तो कम से कम 1.5-2 दिन ना अपने लिए समय निकालो। ये जितना अपने लिए हम समय निकाल पाएंगे आज का और कल का, उतना हम दूसरों के लिए ठीक चीजें जो करना चाहते वो कर पाएंगे। ठीक? तो तीनों के साथ में जीने को कहा जा रहा है मानव चेतना में जीना। फ्रीज हो जाता है। ठीक। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द एनिमल कॉन्शियसनेस टू द ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ये ट्रांसफॉर्मेशन मुझे तो मेरे लिए डिजायरेबल लगता है। आपको क्या लगता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता है या नहीं है?
ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को ही कहा जाता है होलिस्टिक डेवलपमेंट। So what is the meaning of holistic development? Transformation to the human consciousness. And this is the role of education to enable the transformation. ये जो सेशन है हमारा लेक्चर 1, वो लेक्चर 1 इसी के आधार पर था। अभी अगर देखा जाए, what is required for this transformation? Right understanding in every child. Now you tell me, are we able to develop this right understanding in every child today? So that is missing. Number 2, the capacity to live with the feeling of relationship. Are we able to develop this competence? So that's also missing. Number 3, the capacity to identify the need of physical facilities. क्या ये भी हो पा रहा है? कितनी आवश्यकता है उसको हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? वो भी नहीं कर पा रहे। कितने जोड़ी कपड़े की आवश्यकता है, कितने मोबाइल की आवश्यकता है, कितने पैसे की आवश्यकता है, हम उसको भी आज आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। एक कोर जो फीलिंग्स है जो जनरेट हो रही है एजुकेशन से, वो ये है कि एक्यूमुलेट मोर एंड मोर and consume more and more. प्रोडक्शन का फीलिंग भी नहीं रहा है। मैं आपको IIIT का एग्जांपल देता हूँ, हैदराबाद का, जहाँ पर फाइनल ईयर के स्टूडेंट के साथ में जब हम लोग डिस्कशंस कर रहे थे, तो बस बच्चों से पूछा कि आप क्या करना चाहेंगे इसके बाद। तो एक बच्चे ने बहुत ही आर्टिकुलेटली कहा था कि आई वांट टू गेट अ गुड जॉब। तो उनसे पूछा कि गुड जॉब का मतलब बिग पैकेज। तो उनसे पूछा कि बिग पैकेज को थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। तो उन्होंने कहा कि एसी कैबिन, लैपटॉप विथ वाईफाई, 5G नेटवर्क, बिग सैलरी एंड इफ पॉसिबल नो वर्क। Look at what kind of mindset we are developing. That we want salary, but then we don't want work. और यही सब तरफ देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? हमारे अपने ऑर्गेनाइजेशंस में भी देखे जाए तो इसी से लेकर शिकायत है कि सैलरी तो चाहिए, लेकिन काम अगर करना है तो नहीं चाहिए। इस तरीके से ये जो नंबर 1 और नंबर 2, राइट अंडरस्टैंडिंग एंड द कैपेसिटी टू लिव इन रिलेशनशिप, ये दोनों भी आज के प्रेजेंट एजुकेशन से मिस हो रहा है। एजुकेशन का मतलब होता है समझना, और मानव को क्या समझने की आवश्यकता है? ये जो सही समझ की जब बात हुई, तो जितना जीने का हमारा दायरा है उसको समझने की आवश्यकता है। तो हम कितने में जीते हैं? आई लिव एज एन इंडिविजुअल, मेंबर ऑफ फैमिली, member of society, a unit in the nature and a unit in the whole existence. स्वयं से लेकर पूरे अस्तित्व तक हम हर पल हर क्षण जीते या नहीं जीते? Are you the part of existence? Are you the part of nature? Member of society? Family? You are an individual. Correct? तो ये चारों भी स्तर के व्यवस्था को समझना, इसका अर्थ होता है सही समझ। अंडरस्टैंडिंग हार्मनी एट ईच ऑफ दिस लेवल, ह्यूमन बीइंग, फैमिली, सोसाइटी, नेचर एंड एग्जिस्टेंस। ये जो समझ है, ये समझ फिर भाव और विचार के साथ में जीने में परावर्तित होगी। तो जीने के लिए जो हम तैयारी करते हैं ना, इसको कहा जाता है संस्कार। तो संस्कार का अर्थ होता है तो प्रैक्टिस, प्रिपरेशन एंड कमिटमेंट फॉर लिविंग। इस एजुकेशन के साथ में ये संस्कार हमारे विकसित होंगे। इस एजुकेशन के साथ ये संस्कार विकसित होंगे, और इस संस्कार के साथ में हम निरंतर सुखी और समृद्धपूर्वक जी पाएंगे।
कोई क्वेश्चन? तो सही ये जो सीक्वेंस है अंडरस्टैंडिंग, फीलिंग, थॉट, ये मतलब हम अगर समझ रहे हैं तो ये कब तक एक्सटर्नल फैक्टर से इफेक्ट नहीं होगी अगर वो फैक्टर सपोज चले, मतलब वो फैक्टर्स अगर हमें परेशान करने वाले हैं तो ये सीक्वेंस कब तक इफेक्ट नहीं होगी, मतलब एक नेचुरली जो ह्यूमन बिहेवियर है उसके जब तक आप चाहते हैं कि परेशान ना हो। सर बट चुप बैठना भी अगर वहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है, जैसे सर ने कुछ एग्जांपल्स ली, तो चुप बैठना अगर वहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है तो ये फैक्टर्स हम, ये सीक्वेंस हम कब तक मेंटेन कर सकते हैं? मैं कह रहा हूँ ना कि जब तक आप सुखी रहना चाहते हो तब तक मेंटेन करेंगे। जिस समय आप आपके सुख को खोना, नहीं, हम तो सुखी रहना चाहते हैं, उस टाइम जो एक्ट है दैट इज नॉट लेटिंग अस लीव। अगर मान लिया मेरे बच्चे को कोई मार रहा है सामने से, तो हाउ कैन आई? देखिए मैंने वही छोटा सा एग्जांपल दिया ना, क्या एग्जांपल दिया था कि दूसरे व्यक्ति ने मेरे तरफ स्माइल के साथ में नमस्ते किया, लेकिन उस व्यक्ति के प्रति अगर मुझ में विरोध का भाव है। नहीं सर, आप गलत एग्जांपल दे रहे हो। मैं जो कह रहा हूँ उससे बिल्कुल गलत एग्जांपल दे रहे हो। आपके सामने आपके बच्चे को ट्रबल कर रहा है, वो ही इज किलिंग और ही इज हार्मिंग फिजिकली, मेंटली, तो ही इज नॉट गिविंग यू स्माइल एट ऑल, ही इज गिविंग यू ट्रबल। एट दैट टाइम द सीक्वेंस may or may not be disturbed, but you देखिए क्या है ना, कभी ठीक है, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ठीक है, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्लू काफी इंपॉर्टेंस होते हैं, लेकिन बहुत डिटेल में जाकर अगर चर्चा ही करनी है तो कभी ऐसा हुआ है कि आपके साथ में कि किसी व्यक्ति का आपसे परिचय हो रहा है, एक मिनट ना भाई, बस एक मैं थोड़ी सी बात भी कर रहा हूँ ना, जी सर, है ना, बात भी कर रहा हूँ, कम से कम 4 बार तो वही बात हुई आपकी, उसको सुना मैंने, अब मैं कम से कम रिस्पॉन्ड देता हूँ, तो अगर रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ तो उसको भी सुनिए कि कभी आप लोगों का किसी के साथ में ऐसे हुआ है कि फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन हो रहा, राइट, आपने बताया हाय माय नेम इज मिस्टर एक्स, दूसरा कहता है कि माय नेम इज मिस्टर वाई, लेट अस फाइट। आप सर माफ करना मुझे, आप फिर गलत चीज बोल रहे हो। नहीं, मैं आपके तरफ भी आ रहा हूँ। आप गलत बोल रहे हो। लेट अस फाइट नहीं है वो, आपकी लड़की न्यूज़ आ रही है, एक बार छेड़ा, एक बार दूसरी बार नहीं, वेट अ मिनट, आई अंडरस्टूड हिज क्वेश्चन। उसमें हाथ मिलाया नहीं आपने उससे? I understood his question. He is asking, is there any exception for this? I understood his question. नहीं, आप गलत पढ़ा रहे हो, आप बिल्कुल सही पढ़ा रहे हो, that is very right। मैंने 2-3 बार पढ़ भी चुका हूँ ये दिन, but under those circumstances, how to stop things? देखिए, एक तो ये मिलाने के बाद ये खत्म हो चुकी ना, हाथ मिलाना पहली बार था, समझा दिया भाई साहब ये चीज गलत है, you are disturbing my child। ठीक है। और फिर दूसरी सिचुएशन, आपके बच्चे का वहाँ ऐसा काम है, उसकी एजुकेशन है, कुछ है, वो छोड़ नहीं सकता। अदरवाइज नॉर्मली क्या करते हैं हमारे यहाँ, स्कूल छुड़वा के बैठे और बेटी को घर बिठा लिया, स्कूल बदल दिया, कॉलेज बदल दिया, कब तक बदलोगे? तो क्या हाथ मिलाओगे उस आदमी? No, it will not be resolved. मुझे आपकी जो ये एजुकेशन सिस्टम है, ये वेरी राइट, if everyone is going through this, things will not happen, but it is the story of 100 years back। अगर 100 साल पहले शुरू हो जाता तो आज सोसाइटी में नॉर्मली लोग समझते होते, आज से 100 साल बाद समझ चुके होंगे, टाइम धीरे धीरे नहीं करे, ये गलत है, लेकिन वहाँ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे और मैं ये नहीं है सर आपको विरोध करने के लिए कर रहा हूँ, मेरे अंदर कोई विरोध नहीं है, ना इसकी प्रॉब्लम है, बट देयर इज अ सिचुएशन। बिल्कुल। I may be facing, I may not be able to explain the things। ठीक है, होगी आपकी बात? उस सिचुएशन में तो सर हाथ मिलाने वाला नहीं, आपकी बात होगी पूरी। ठीक, अभी मैं कुछ बोलूँ? ठीक, देखिए मैं इसीलिए कहता हूं कि कभी कभी केवल क्लूज के साथ में काम नहीं होता है, बहुत उसके अलग अलग एंगल्स होते हैं और एक एंगल को हम देखना होता है। तो सबसे पहला एंगल हम इस बात के तरफ देख रहे हैं कि
मैं संबंध पूर्वक जीना चाहता हूँ या विरोध पूर्वक जीना चाहता हूँ, ये एक एंगल हुआ। ठीक, फिर दूसरा एंगल हमने ये भी देखा कि जब भी हम किसी व्यक्ति से फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस वक्त तुरंत झगड़े नहीं होते। ठीक है, उसके वो झगड़े के लिए ना 1 दिन 2 दिन 10 दिन जो भी है ना वो समय लगता है, वो समय के बाद में झगड़े शुरू होने लगते हैं। वो जो बीच का जो समय होता है 10 दिन का हो या 8 दिन का हो, जहाँ से हम पहले बार मिले और पहला झगड़ा हुआ, ये बीच के समय में 8 दिन के 10 दिन के समय में मैं अपने में संबंध का भाव उस दूसरे व्यक्ति के प्रति रख पाया या विरोध का भाव भी मुझ में आया, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना, ये बात बड़ी मैटर करती है। एक तो ये दूसरा एंगल हो गया। अब तीसरी, जैसी भैया बता रहे कि कोई आके सीधा सीधा आपको छेड़ रहा है, तो कोई परिचय भी नहीं है, तो क्या करेंगे? ठीक है, उसके लिए भी जो कोई सिस्टम्स है उस सिस्टम्स के पास में जा सकते हैं, राइट। जो भी आपको करना है वो तो कर ही सकते हैं। आपने तो ये भी कहा ना कि 4 थप्पड़ लगा देना, तो हमने तो वो कहा कि 4 थप्पड़ लगाने से अगर आपका काम बनता है तो कर लीजिए, उसमें हमारे लिए मेरे लिए कोई इश्यू नहीं है। मैं तो केवल ये कह रहा हूँ कि मैं निरंतर सुखी रहना चाहता हूँ, और जब वो थप्पड़ लगा रहा हूँ या थप्पड़ लगाने का भाव और विचार भी मुझ में चलता है, तो उस समय मैं अपने में स्थिर हूँ या अस्थिर हूँ, मैं केवल उसको ऑब्जर्व करने की बात कर रहा हूँ। अगर मैं अपने में स्थिर हूँ तो ठीक है। फिर चौथी बात यह है कि 100 साल पहले अगर ये वैल्यू एजुकेशन शुरू हो जाता था तो आज ठीक होता था। तो कब तो शुरू करना पड़ेगा ना, राइट। ये कम से कम आज अगर शुरू कर दिए तो 100 साल के बाद भी ठीक हो जाएगा, लेकिन शुरुआत तो करनी होगी। और शुरुआत अगर करी तो उसके लिए 100 साल की भी बहुत आवश्यकता नहीं होती है। जो लोग भी अपने में काम कर रहे हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये तीनों प्रायोरिटी ऑर्डर्स के साथ में जीने का प्रयास कर रहे हैं, हम तो ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि कम से कम 3 से 5 साल में एक अच्छी लेवल की स्थिरता उन सभी लोगों में देखी जा रही है। बात केवल ये है कि मेरे अपने जीने में प्रायोरिटी ऑर्डर यही है या यहाँ पर विरोध है, यहाँ पर कन्फ्यूजन है। अगर सही समझ के जगह पर कन्फ्यूजन अगर रहा और संबंध के जगह पर विरोध अगर रहा, तो मैं अपने में स्थिर रहूंगा या अस्थिर रहूंगा? अस्थिर। तो बात केवल ये हो रही है, और इसी को कहा जा रहा है मानव चेतना में जीना। और ये मानव चेतना में जीने के सोसाइटल इम्प्लीकेशंस अगर देखा जाए तो अखंड समाज और यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर के रूप में दिखाई देगी। जो सुबह एक बात हो रही थी ना, तो वर्ल्ड फैमिली की, ये उसके इम्प्लीकेशंस है। लेकिन अखंड समाज का अर्थ ये नहीं होगा कि सारे लोग एक ही भाषा बोलेंगे, सारे लोग एक कपड़े पहनेंगे। अखंड समाज का अर्थ ये होगा कि मुझ में खंड नहीं होगा। अखंड समाज बाहर होने की वस्तु नहीं है ना, मुझ में सबके प्रति संबंध के भाव बने रहेंगे। तो ये अनडिवाइडेड सोसाइटी और यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर उसको इम्प्लीकेशंस के रूप में देख सकते हैं। तो अभी तक का जितना डिस्कशंस रहा है लेक्चर नंबर 1 का, उसको तो क्विकली सम अप कर देता हूँ कि ये जो लेक्चर नंबर 1 में हम प्रयास कर रहे थे हमारी बेसिक एस्पिरेशंस को आइडेंटिफाई करने का, तो क्या आप इस बात को देख पाए कि आपके हजारों सपनों के पीछे एक बड़ा सपना है? आप इसको देख पा रहे हैं? आपके भले ही लाखों एस्पिरेशंस होंगे, लेकिन उन लाखों एस्पिरेशंस के पीछे एक बेसिक एस्पिरेशन है। और वो बेसिक एस्पिरेशन क्या है? सुख समृद्धता की निरंतरता। ये जो सुख समृद्धता की निरंतरता के फुलफिलमेंट के लिए आवश्यक क्या है कि स्वयं में सही समझ, स्वयं में सही भाव और शेष प्रकृति के साथ में सुविधा। ये तीनों बातें अगर मुझ में बनी रही तो मैं स्वयं में सुखी रह सकता हूँ, स्थिर रह सकता हूँ, और स्वयं में स्थिर और सुखी होते हुए दूसरे के लिए कुछ हेल्प कर सकता हूँ। तो यहाँ तक हमारा डिस्कशन रह चुका है। अभी हम लोग ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद में लौट कर आएंगे
और लेक्चर नंबर 2 को ओपन करते हैं। विजय से कोई सूचना है तो सूचनाओं को सुनेंगे। Sessions on lecture number 2, understanding value education. So basically in this lecture we'll try to understand the meaning of value. And this is the value of the marker. What does it mean? Value means the participation of a unit in the larger order. Correct? So this marker is participating into the teaching and learning of this classroom. So this is the value of the marker. Now this value is definite or indefinite? If you take this marker to US, the value will remain same or different? In 2050? Same? Right? So the value is definite, which means it does not change with the time, place and people. It remains same. That's the meaning of value. Value means participation. What's the value of cloth? Protect the body. Cover the body, to protect the body. This is the value of cloth, right? It's definite. That is definite. What is the value of ceiling fans? To provide air, right? Conducive environment, conducive temperature. That's the value of ceiling fan. What is the value of shoes? To protect the feet, right? That's the value of shoes. Can you write down any 5 things and its value? Write any 5 things. You may write something from physical order, or from bio order, or from animal order, or from plant order, or from human order. You can write any 5 things and try to write down the value of those 5 things. Value is definite. You can write any 5 things with their value. For example, marker is to write. So the participation of those 5 things into larger order. That way, you will be able to understand the value of unit. Done? Yes. Final? You want to read one? Book. Knowledge. What's the value of book? Gives us knowledge. Book and knowledge. What do you think? This is definite? Indefinite? Indefinite. Indefinite. Because if the book is not having the content of knowledge, right? So it's indefinite. Sir, vehicle for transportation. Vehicle for transportation. Very good. Vehicle is to transport, right? So if the vehicle is in condition, whenever you drive that vehicle, either the goods or the body will transport from one place to another place. This is definite. Good. Mobile. Watch. क्या value watch का? Time. Time. Correct. And it's definite. Sir, plants or trees to absorb carbon dioxide and release oxygen. Okay. Oxygen. Yeah. In the plants, absorbs and release. Food.
Sun will give Wait, light. wait. Money is medium of exchange. What's the value of money? Medium of exchange. Medium of exchange. Very good. Does money holds any other value? Does money holds any other value? Source of happiness? Source of happiness? Is somebody Let's go by one by one. He says money as a medium of exchange. Does money holds any other value? Yeah, but what you will be doing? Exchanging something. Can you do anything else than exchanging? Parameter of wealth. So, apart from this, money will have some face value or monetary value. See, what is the meaning of value? Value means participation, right? Its purpose. The value of this marker is to participate. Correct. Now, what's the price of this marker? 20 rupees. Okay, 20 rupees. Let us make this marker worth of 1 lakh rupees. Okay. Now, the price of the marker is 1 lakh. Is it valuable? Value will remain same. Is it valuable? Purpose will be same. Purpose is not so. Its purpose will be same, but its cost will be different. Wait a Purpose तो एक ही काम तो वही करेगा. Wait a minute, I'm asking simple question. Let's just take it very simple things. And then we'll try to address the most complex issues of our life. Most complex. But we'll go with the simple. Okay? Value, which means participation of a unit into the larger order. The value of potato is to nurture the human body. Okay? The value of marker is to participate in this teaching and learning, in education. Price of a marker is 20 rupees. Okay. If this 20 rupees marker is participating, yes, no? Does it holding any value? Yes. Now this marker is 1 lakh rupees. Does it have any value? No. Why? Because it is not participating. Participation is not there, value is not there. The potato may be 10,000 rupees per kg, but not participating to nurture the human body. No value. So what is the meaning of value? The meaning of value is to participate in the larger order. The value of a unit is its participation in the larger order, and this value of every single unit is definite. Are you able to see there is a difference between value and price? Something may be very priceable, but not valuable. So the price and the value have no relations. Correct? The price and the value have no relations. Okay? Something may not be very priceable, which means not expensive, but it is valuable. 20 rupees. But look at the value of marker. This is participating in ensuring right understanding and right feeling in each one of us for the next 8 days. Such a big value. Correct? Such a big value. So what we have discussed about money, that what is the value of money is transaction, exchanging. You are exchanging this money
to make some sort of physical facility available to you. Correct? Is there any other role of money? It not necessarily be physical facility. Then what do you exchange with the money? I want favor. I want favor from someone. Favor for what? Services or goods and Just tell me some information about the tender. Yeah. Why do you want to have that information about the tender? Because you want to get a tender. You want the physical facility. Correct? You want the physical facility, and that is the only role of the money. What? Exchange. Sir, whether the purpose can change value of that particular product. The value of anything is different. It doesn't change. Water quenches thirst. Whenever you are hungry, the water is drinkable, it will quench your thirst. What about when there is a flood? Say water is there, but it is taking life. Yeah. So you are not hungry, you are not thirsty. What I am saying, whenever you are thirsty and the water is drinkable, will always quench your thirst. Even you are in the flood and you are thirsty and the water is drinkable, will quench your thirst. It is that. It is that. Value has to be universal. Value is universal in nature. It is universal. You know, when we say it does not change with the time, place and people, which means it is universal. If it is definite, it is universal. It's definite, so it's universal. When we say it is definite, which means there is no conditions apply on it. It's unconditional. It's a health problem. It's a health problem. Yeah, unconditional, right? Unconditional. So the value is unconditional of the marker. Even this marker is in the hand of a teacher, or if it is in the hand of a carpenter, or a doctor, or a plumber, or an engineer, the value will remain same. Even if this marker is in the hand of an illiterate person, still the value will remain same. The illiterate person may not be able to write, but would have this. So the participation will be there, right? The participation will be there. So when we say value, value which means the participation of unit in the larger order, and this participation is definite. Just take some time, take a pause, 1 minute, 2 minutes, try to observe what the objects are there in the whole existence. And try to see that every single object holds value or not. The value of cell phone is to communicate. The value of car is to transport. The value of cloth is to protect. The value of marker is to write. Every single thing has a definite value. Right? Can we say that value of a particular unit may decrease or increase with its quantity? When we say definite, there is no increment, there is no decrease. It's definite. Sir, so if we say a holiday in Goa, say, it has a value, but for different persons it have different value. Means I like beaches, say, but he is a mountain person. He did not like beaches. So for that I have a value. See, the participation of Goa is not changing. Right? The participation of beach and the scenic beauty is not changing. It is giving us the value. It's you. Your perceptions are changing. So the perceptions of the visitor to a destination has changed, but the monument has not changed. It remains same. What about medicine? Medicine is for protecting the body.
value of medicine? To protect the body. Sir, But quantity, it increases value. see, the value of medicine is definite or it's not definite? It's you who is taking more dose, right? But the value of medicine is definite. What about gold, sir? Now, what's the value of gold? Gold. Nowadays, increasing our gold, much more increasing. What is the value of gold? Accumulation of wealth. It is an accumulation of wealth. Yeah. A very little medicinal value gold has, and that's it. That's the only value of the gold. The copper has more valuable than the gold. Right? Electrical conductivity is also more. The bronze has more valuable than the gold. But the gold has a very little medicinal value. And that's the only value of the gold. As usually changes the value, just like in electronic components, we are using gold as a conductor. And gold is the best conductor. Right? So that's the value of the gold. सर आपने कहा टाइम के साथ जो है वैल्यू चेंज नहीं होती है. फॉर एग्जांपल हम लोग आज से 50 साल या 60 साल आगे का देखते हैं और वहाँ पे इतना एडवांसमेंट आ जाता है कि वाइट बोर्ड सिस्टम खत्म हो जाता है, टच स्क्रीन या कुछ और सिस्टम आ जाता है, तब ये मार्कर की क्या वैल्यू है? तब भी अगर ड्राइंग बोर्ड रहा तो मार्केट की वैल्यू तो रहेगी. बट रहेगा ही नहीं सर. अगर फॉर एग्जांपल देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि तब भी अगर ह्यूमन बीइंग रहा और ह्यूमन बीइंग में प्यास रही तो पानी की वैल्यू बढ़ेगी. वो डेफिनेटली है. Means the item can be distinct item. अगर item है वो जैसे for example the example is given कि after 50 years पेन की कोई वैल्यू नहीं है, मार्कर खत्म हो सकता है, बट जब तक वो रहेगा तब तक उसकी सेम वैल्यू है. हाँ, जब तक बोर्ड है मार्कर है वैल्यू सेम. जब तक बोर्ड है मार्कर है वैल्यू सेम. उसके देखिए पर और कुछ चीज आ रही है, राइट? कुछ चीज आ रही है लेकिन वैल्यू तो वही रहेगी वो चीज की. तो चाहे जो भी यूनिट हो जो पूरे एग्जिस्टेंस में एग्जिस्ट करता है वो हर एक यूनिट की वैल्यू निश्चित है. ठीक? उस हर एक यूनिट की वैल्यू निश्चित है. क्या आप इस बात को देख पा रहे हैं? आर यू एबल टू सी टू इट? Are you able to see the value of ceiling fan? Are you able to see the value of cell phone? Are you able to see the value of markers? Are you able to understand the value of clothes? Are you able to understand the value of shoes? What is your value? I think it's the usage. How much? What is your value? It's participation. What is the value of human being? Sir, it's indefinite. Participation in self, family, nature, and society. But sir, it is indefinite. The value is the participation. So what is the value of human being? Unit of the existence. Yeah, that is, you are talking about what is human being. The human being is one of the units in the whole existence. My question is that what is the value of human being? Harmony in the society. So unit of a society. What's value? It is indefinite, sir. So the difference between a human and other animals is brain, or maybe that kind of understanding, or maybe we can create artificial things. That is a differentiation we can have. So to that extent, we can say a contribution to the society towards human values. We can say yes. To understand the human value, we need to understand the human being. Without understanding human being, we cannot understand the values, right? When I look within me, I want to ensure harmony
in the self. This harmony within is valuable for me and not disharmony. The stability is valuable and not disturbance. Correct? Similarly, I want to ensure health of the body. Correct? So this is valuable for myself, this is valuable for body. But I am also a member of family. So I want to ensure harmony in the family. Now you can check for yourself. Do you want this harmony in the family is valuable for you or it's not valuable for you? So something which is valuable for me, it holds value. Right? And this is definite. Similarly, I want to ensure fearlessness in the society. Fear or fearlessness in the society. Similarly, at the level of nature and existence, I want to ensure mutual fulfillment. In nature and existence. Right? This is valuable for me. If I am participating, ensuring harmony within myself, holding a value. If I am participating in ensuring health of the body, I am holding a value. I am participating in ensuring the harmony in the family, I hold the value in the family. Otherwise, my family member may keep waiting for me to go. Right? When he will get transferred to Mumbai, it will be better. Better he will go to Bangalore, different state. Correct? Why this thing is happening? Because harmony is valuable in the family, but I am not able to participate into it. Fearlessness, abhay, is what I want in the society. So my participation to ensure the fearlessness in the society is my value, my societal value. What is my environmental value? Participating in ensuring harmony in the nature. That is my environmental value. But if I am not able to do so, which means I am exploiting the nature, damaging the nature, so I am not valuable. Correct? Similarly, this whole existence is in the form of coexistence. So my value to the whole existence is of mutual fulfillment. Correct? So these are the human values, and these human values we are going to talk for the next 7 days from tomorrow. Now this is important. Can I decide on my own what is valuable for me? Or someone else would come and tell me that this is valuable. So the respect is valuable or disrespect? Just respect. If the respect is valuable, then I can ensure the feeling of respect in my every transaction. Because it is valuable. The trust is valuable or mistrust? Trust. So if I am ensuring the feeling of trust within, I am having the value. But if I have full of mistrust within,
which means that value is cutting. And whenever the values miss in me, that puts me into a trouble. That is the cause of my disharmony, my unhappiness, my tension, my frustration, my depression. Yes. Just like you mentioned, it has a definite value. Marker has a definite value. We can correlate something like that. Human being has a definite value. Whether the human being is born in Pakistan, Afghanistan, America, Hello. Looking at the example that you gave, wheat has a definite value for nutrition, marker has a definite value for participation in the classroom. I think more important is human as an entity, unit, has a definite value. Irrespective of the birthplace, in the country, in the creed, the region, color, has to have a definite value. So each human being is valued at the same unit. They could be American citizen or Afghanistan citizen or Indian citizen. Then probably you can connect those two human values. That's what I said. That is what is written on the board. That this is valuable for every single human being. Right? Is Camlin the brand? It's a brand of a marker. So even the brand changes, the value remains same. Right? So when we say the human values, it means it is universal. So we are talking about these universal human values. So no matter what brand you are. Look at the world now. If one American citizen dies, the president can bomb another country for continuous 3-4 years, But one African man dies or 10 African people die for a somewhat similar reason. African president doesn't bomb America, Yeah. It's because 20 people have died, African president doesn't go and bomb America. Is it because of the lack of values or with the clarity of the values? No, because the value of a person in America is considerably far different than the value of a person born in Africa. So he is disposable. Let me come back to the basic question. What is the value of American president? Same, right? As my value? Should be. Absolutely identical. Yes. But doesn't seem to be. Yeah. Because, what is the reality and what is my perception? There's a huge gap. Yes, sir. There's a gap between these two. There's a gap between what I really want to be and what I am. In the first session only, we have seen that gap. What I want to be and what I am, there's a gap. So if there's a gap in me, then there could be a possibility that the same gap or the similar gap will be there in the others. So the problems are happening because of that gap. But we are trying to identify the values. So if this is valuable for me, that I can take efforts for the development of my right understanding so that I can live with these values. I can be the valuable for myself, family, society, nature and the whole. See what is happening today in the 21st century. Even in the July of 2024, we are not able to decide upon what to do as a human being. What is important for us, the peace or war? Are we able to decide? So there is a saying. We are not able to decide on such a small thing that as a human being, we want to live with the feeling of relationship with everyone or we want to fight. 52% of the world resources are being spent every year on manufacturing the wars, arms and ammunition. 52%, just imagine. For what?
to kill the other. You know, once me and my friend, we were having this discussion. He's American, and then he was talking about America. And let me ask you the same questions to you also. Who is the strongest nation in the world? US, right? And he was talking the same thing to me. He was saying that we are the strongest in the world. And for that he has given the logic. And I'm sure that you are also applying the similar logic to say that United Nations is the strongest nation in the world. He said that we have accumulated the nuclear power which can destroy the whole world for 30 times. 30 times, that much of accumulation of nuclear power. That is the reason we are the strongest nation in the world. I said this is a very foolish idea. How many Earth you have? Great. Right? Only one Earth. Isn't that foolish idea to destroy one house? That one house can be destroyed for once only, right? Why 29 times extra resources you have spent? This is one. And then a very innocent question I asked him. I said, even if you use that nuclear power for just once, will you be there? You won't be there because you are the part of the earth. You are one of the nations on the earth, but we are not able to decide what do we want, peace or war. So such a fundamental thing, if we are not able to settle down on the basis of our natural acceptance by having this human education, the issues will be there, the problems will be there. But then there is the solution. What's the solution? Transformation of every individual from animal consciousness to the human consciousness. And if we keep imparting such sort of education, then slowly and gradually the individuals will transform. And this transformed human being will be an instrumental for the transformation of the society. Yes, did you? Yeah, I want to maintain peace. We have to have a war. Yeah. But then how many wars we need to have? Let us decide it, right? But why can't we think the other way, that we are manufacturing all these destroyable bombs and all those for safety purpose? Yeah, but why not we think like that? we can manufacture so many other good things, right, for the safety purpose. We can manufacture, but it is a need of the hour. When somebody is manufacturing nuclear, so we need to be in competition. See, that is what, I raised the whole discussion by saying in 21st century, 21 centuries are enough. More than enough. 21 centuries are more than enough to understand I want to live with the feeling of relationship. Why do you need these safety things? Because you are having so much of competitions with the neighbor and the people around you. Instead of that, if you are into living with your natural acceptance, the safety measures may not be required. Right? The safety measures may not be required. See, what is happening today, whenever there is some sort of problem, we try to work on the symptom of the problem, a symptomatic approach. And no matter how many times you cut those symptoms without working on the root, it will come again and again. And that is what is happening today. Right? So the base is the human being. The fundamental thing is that as a human being, do I want to live with the feeling of relationship or opposition? What is valuable for me? Is this things which is written on the board is valuable or it is not valuable? If we are clear with this, then we can develop the competence of every human being through education. And I think this 20-25 years, children are coming to the schools and the colleges, and that 20-25 years is the enough time to help in their transformation. कपड़े को सुख का एक बड़ा सोर्स मान के रखे. We are trying to derive happiness from clothes. Tell me one thing.
can you become happy by clothes? Even I'm asking you temporary. 1 minute. 1 minute happiness can you derive from clothes? I'm not asking for the 2 minutes, just 1 minute. Certain extent, yes, but there is one more thing associated. See, we are having a mindset that this is trading, we should go to the mall and then we should buy all those stuffs. The moment we spend on that, spend ho gaya. Then the another thing, then happiness goes. Okay, let me give you some examples, right? Just to have some thoughts on it. The clothes and the happiness. Few examples. Number one example, here is this cloth which you always wanted to buy for, let us say, past couple of years, and then finally you got it, right? And you are wearing this clothes coming to the college. In the parking, as usual, meeting to someone, and someone looks at you and say, wow, right? And normally we don't stop saying wow, but we connect with some actor or some actress, right? Just to feel, so let us say, wow, you are looking like this actor A. You will find that next second, you will start walking like an actor A, right? You start talking like actor A. And that gentleman goes, and then some other person comes, and he says that, oh good, new dress. When did you buy? Where? Pattern is beautiful, but you know the color. Now look at what happens to your happiness. The moment other person say the color is not matching or the pattern is not matching, the flowers are big size, the flowers are small size, immediately you will find your happiness disappears. Okay? So this is so momentary. My question, can you derive 1 minute happiness by the cloth? Take this question seriously. It means if you are disturbed within, if your understanding, if your feeling, if your thought are going through some serious crisis and you are putting the dress and these things change automatically. If it happens, then you can become happy by dress even for 1 minute. Dress is not going to change your understanding. The dress will not change your feelings. The dress will not change your thoughts. So do this such sort of observation. The cloth is to protect the body or the cloth is for happiness. The cloth is for respect. You know, we have so much of confusions. Because of this confusion, this understanding falls into the category of not right. Not right, wrong understanding. You know, what is the meaning of right understanding? It means clarity. Wrong understanding, which means confusions. So with the more confusion, you are more into disharmony. With more clarity, you are more into harmony. So much of confusions we have, and we need to check each of these confusions to see that what is valuable for me, what is the role of human being in the larger order, and these are the roles, right? I want to ensure this happiness in the self and the health in the body, ensure the feelings of relationship and prosperity in the family. I want to participate in creating fearlessness by participating into the societal systems like ensuring justice, peace and harmony. And similarly, I have a role in nature that is mutual fulfillment. So these are the universal human values, right? And this is going to be the content of our remaining 7 days talk from tomorrow. Any question? Sir, can we say the definite human value for the human being is a thought process? Can we say this? Yeah, these are the values of human being. Okay.
like just I'm visualizing कि for marker like being a human being we decided its value that marker can only write, but we can subdivide na कि marker can be used in teaching purpose, marker can be used to write over the parcel, marker can like we did for the human being. So similarly, if marker has to decide the value for the human being, then it can be said that the definite value for the human being is just to means they have the capacity to thought, they have the thought process only. Why we have like if we are talking about the definite purpose, definite value purpose, means that is acceptable universally. So there should be one thing now. Yeah, there's the one thing is that the marker cannot decide the value of human being. Yeah, yes sir, Okay. I agree. So let's have that clarity. Number two, the expanse of human being is each of these levels. You know, I am not just an individual. I am not only the member of family, but I live from an individual to the whole existence. So at each of these level, there is something valuable to me, right? So at individual level, the happiness within and the health of the body. At the level of family, harmony. At the level of society, the peace. At the level of nature, mutual fulfillment. At each of these levels, my value is different. Sir, my second question is yeah, you were asking what is the other value of the money. So can you please tell that? Yeah, there is no any other value of the money. With money, you can just exchange. You can make some physical facility available to you. Can we not have some future value of the money, like if we don't want its exchange, like if we invest it, and investment becomes a continuous process, so can there is another value for the money? By investing also, what are you doing? You are doing the same thing, right? Physical facility only. Okay, thank you. Sir, I have a in his concerns, we donate money. So I was thinking on that I am unable to answer myself. So what we get by donating money? Yeah, I donate the money and the other person will buy the physical facility. Money value won't change in that process. Correct. The other person will buy the physical facility. Maybe there will be a chain of, let us say, 10,000 people, you know, just donating money from one to another. But the 10,001 person, he will buy the physical facility. By donating, trying to buy blessings. By donating money, he is trying to buy blessings. That is what is, I mean, I'm not going to that detail today itself, but on the day 3 we will definitely talk about it. Today we are just discussing about the value, right? The value of money. It's definite or it's not definite. By donating, we participating in society, social See, that's what I'm saying. I said, with money, what else you can do? Can you do anything else than buying this physical facility? Can you do anything else? You are donating, the receiver will buy. Right? Either you will directly donate the physical facility or you will donate the money. So, wait a minute, right? Either you will directly donate the physical facility or you will donate the money. If you are donating the money, the receiver will buy the physical facility. Correct? So money itself is a physical facility. It can be get converted only into a physical facility. But is this enough for human being? Is this enough? No.
So relationship is also required. Can you buy this with the money? Can you buy relationship with the money? No. Right? So money has a definite value. And what's that definite value? Converting into a physical facility. So can we increase our participation so that our values will increase then? Value will not be increased, your participation will increase. Value will remain same. For example, you will be participating in transforming hundreds and thousands of students' lives. So from that 100,000, you may go to the lakhs and lakhs. But what you will be doing? Helping in the transformation. So the value is same. Value is same. Can we say that the purpose for which the unit is utilized may increase its value? Take an example of while writing the Declaration of Independence, 13 colonists sign on it, and that changes the entire history of the human rights. Yeah, but the pen has participated in written, writing something. पार्टिसिपेट जो भी लिखा गया उससे पूरे ह्यूमन राइट्स का जो है वो कोर्स ही बदल गया. वो पेन ने नहीं लिखा ना. वो पेन नहीं लिखा था डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस. वही कह रहा हूँ, वो पेन अगर उस समय मेरे हाथ में होती तो शायद मैं नहीं लिख पाता. राइट? वो पेन अगर मेरे हाथ में होती तो मैं नहीं लिख पाता ना. पेन का तो वैल्यू डेफिनेट है. क्या डेफिनेट है? वो लिखेगा. क्या लिखना? It depends on the author. So the pen itself doesn't write. The author is writing his wisdom, his knowledge. The value of the pen is definite. Okay? Yes. There are three persons. First person has Y category security. Second person has Z category, and third person has Z plus category. Here there are three persons who are having three different values. So how do you find this? See this X, Y and the Z plus, three different security, right? So the question is that there are three people. The one is having X security, the other is having Y, and the third is having Z plus. So what is the value? For all these three people, this is valuable. It's a set, right? All these three wants to be in a harmony with it. All these three wants to ensure the health of the body. All these three wants to ensure the harmony in the family, society, nature and systems. The value is same. कह सकते हैं कि उनके अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग खुद नहीं है अभी. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. कम से कम मेरे में नहीं है, दूसरों का तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन कम से कम मेरी अगर बात की जाए तो ये जो राइट अंडरस्टैंडिंग मुझ में अभी तक कंप्लीट नहीं है. आई एम इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ माय राइट अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, दूसरों का मुझे पता नहीं. अभी ये जो दूसरे कपड़े हैं ना, आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं. ठीक, क्या इसमें कभी यूनिफॉर्मिटी हो पाएगी? That is the reason. Correct? That's the reason. If you try to bring the uniformity on how, it will not be possible. So, how do I protect my body? By wearing jeans, by wearing trouser, by wearing pajama, by wearing dhoti, by wearing lungi. It's a choice of an individual.
and there cannot be an uniformity. But do I want to protect my body? There is no choice. So this natural acceptance answers to the question on what to do and not how to do. Let me bring out difference between the natural acceptance and acceptance. Acceptance, which means how to do. Natural acceptance, which means what to do. Okay? Relationship or opposition? Relationship or opposition? Relationship. What? Finding out answer to the question on what is natural acceptance. But when I try to find out the answer to the question on how, it is acceptance. Right? Respect or disrespect? Respect. How do I express my respect? Shaking hand, holding hand, touching feet, hugging. These are all different ways. But this is how. Two things you introduced. One is natural acceptance, another is simply acceptance. Yes. Acceptance is based upon choice, and natural acceptance is universal. Yes. Can I remove this? See, often there is a little confusion on two very different concepts. But this confusion has to be clear. The one is the natural acceptance, and the other is acceptance. Acceptance is not universal, because this acceptance answers to the question on how. But the natural acceptance is always universal. Okay, let me ask you some questions and tell me whether this question is based on the acceptance or natural acceptance. Tomorrow breakfast, idli or dosa? That's also not natural acceptance. Okay? Okay. You want me to add a few more options? Idli, dosa, vada, sambar, poha, upma, paratha, aloo paratha, methi paratha, paneer paratha. Tell me. Anything. Tell me. Why the answers are not same? Because now we are asking these questions, how do I nurture my body tomorrow? Now, when it comes to how do I nurture my body tomorrow, there is likeness, there is dislikeness, there is taste, there is color. Now let me ask you want to nurture your body tomorrow? Yes. Everybody is saying yes, right? What do I need to do as a human being? I need to nurture my body as a human being. This is natural acceptance. So this natural acceptance is universal. This is innate in each one of us. This is invariant, which means it does not change with the time, place and people. In all the time, all the different places and people, it remains same. So this is called natural acceptance. And if I am with this natural acceptance, then I am in harmony with it. Just a minute, let me complete. Okay? इसके साथ अगर मैं हूं तो अपने में सुखी हूं. But this acceptance
influence. Again, I'm coming to that student batch, right? We followed this batch and observed many things. So when these children, they came to college in the first year, more than 60% of the children, they were speaking fairly bearable language. Anybody can speak, understand and listen to that language, okay? But the same batch of the student, when in the third year, only 15% of the students were using this minimum bearable language, which means 85% of the students have developed a lot of abusive words in their language in 2 years. Okay? So we asked the student, when we observed you in the first year, and in the first year your language was quite good. And this one of the students said that, I am always afraid to talk in front of my father these days, because I don't know when any sort of gali will come out. And you know, it has happened. 2-3 times it has happened. I was talking to my father and the gali came. Right? It just came. And then we asked him how this change has happened into you. So he said that I came from a village, took admission into this college first year. And when I started interacting with my senior, I found that they always use abusive words. So I thought that this is the language of professional people. And if I would not speak the same language, I will not be accepted by them. So I changed my language. Correct? This is influence. I may accept the things by peer pressure. One of the students who came to the first year, he was non-alcoholic. By third year, he started consuming alcohol very heavily. And again we asked, what has happened? He said that in the first year and the second year, I could manage without alcohol. I used to go to the party with my friends. But no, I never touched the alcohol. Now one day what has happened, it was birthday of my best friend. And then he said, have one take, because it's my birthday. So I simply refused. I said no. Then he said, dosti ke liye. If you are my friend, you will have one sip. And he said that yes, he was my friend. And I wanted to prove that I am your friend. What is this? Peer pressure. So under the peer pressure, I am accepting to decide, take the decision. But even when this peer pressure is working, if I take a pause and ask this question to myself, do I want to nurture my body or do I want to harm my body? What will be the answer? So when we say the natural acceptance, basically the decisions are mine. Acceptance, the decisions are influenced by. So peer pressure is another source for the acceptance. Similarly, sensation. The test of something. Right? So under the influence of this sensation, I started accepting something, I started taking decision. So this is sensation. Similarly, my own preconditioning, or the preconditioning which has been set in the society. Right? ये क्या हुआ? प्रभाव हुआ, ये दबाव हुआ, ये मान्यता हुई, ये संवेदना हुई. तो कोई भी प्रभाव, दबाव, मान्यता
या संवेदना के आधार पर अगर मैं डिसाइड कर रहा हूं, तो वो निर्णय नहीं कर रहा हूं, मैं स्वीकार रहा हूं. आई एम ओनली एक्सेप्टिंग इट. So this is called acceptance. ठीक है? लेकिन जब भी मैं अपने स्वभाव से पूछता हूं, जो नेचुरल एक्सेप्टेंस से पूछता हूं, so that is my decision. And this is always invariant. This is always definite. So this is the difference between natural acceptance and acceptance. So, in acceptance, earlier you have given a lot of choices, and breakfast example you have taken. But suppose there is no choice at all. Whatever is there, I should accept. Then which category of this it will happen? It will fall into? Acceptance. So that is fine, acceptance. But which one? Because four are there, no? Influence, peer pressures, and... Yeah, it's only acceptance. I'm accepting it. That's it. That can be instance also. Yeah, but there is no choices available, right? No choice. For the to get influenced by, you need something. But when there is no choices available, so I am accepting something, there has to be something which I am. Can you elaborate your question? For example, what kind of no choices available? Yeah, he said that tomorrow morning in the breakfast there is only poha. Right? So whether I like it or not, I have to eat it. There is only poha. And the question is that, out of these four, which category it will be? If you like, it will go to the sensation. If you not liking, still it will go to the sensation. But this is an acceptance. In that scenario, what would be natural acceptance? Nurturing the body. Nurturing the body. Okay? Any other question? Alright, we already discussed on this thing, so I'm skipping the slides. What to do, how to do, this discussions are happening. Yeah, let us talk about the guidelines of universal human value. The number one important guideline, that the content of universal human value is universal. Right? Is universal. So this is very important for each one of us to understand. How many of you have already done minimum one FDP on UHV? Good number. 2 FDPs? Good number. Shared UHV 1 in the induction program? Okay. Teaching UHV 2 as 3 credit course? Okay, good number. Okay. So at least more than 90% have done minimum 1 UHV. The content of the universal human value is universal. I'll share you one of our experience. This is one of the major central government university in the northern part of India, where the Vice Chancellor had taken the decision of introducing UHV in their curriculum. And then we were having meeting with the Vice Chancellors and their senior dean about implementation program. So we said that number of workshops are required. One faculty development program is not enough, but the follow-up programs are required. So then they asked, like, how many faculty development programs? We have no answer to this question. 20, maybe, may not be, right? If you are attending 20 faculty development program and not relating and connecting the proposals with your natural acceptance, nothing will happen. See? So we said that, yeah, this is like introductory workshop is there, level 2 is there, level 3 is there, and we have follow-up program. We conduct weekly meeting, we conduct morning sessions, and you can encourage your faculty members to be the part of this transformation so that their competence will get developed and they will be able to share the values. Then one of the senior dean by age said, what is big deal in teaching values? From the birth, I have been learning about the stories of the values. But let me tell you,
That is not the content of value education. Sharing the stories of Mahabharata and Ramayana, Bible and Quran Sharif, Guru Granth Sahib is not the content of universal value education. That is the content of that particular philosophy. And that is also equally important, right? If I'm taking class on Hinduism, I can talk on Mahabharata and Ramayana. But if I'm taking class on universal human values, the content is universal. So even the examples, we should not give from any sort of scriptures, right? It's a universal content, not based on any sect, creed, nationality, race or gender. The number 2 guidelines is the rational. So based on the logical reasoning, the student should ask lots of questions, and we should encourage students to ask the lots of questions. Sometimes we need to confuse the student, to create that confusion in the classroom so that the questions will come up. If you are convincing the students and the student is getting convinced, then the process of exploration will not initiate in the student. So there is a possibility you are taking a lecture and the class is not convinced at all. That's the best class, I would say. Because they are not accepting you, accepting the proposal, but they are exploring with it, asking these questions, right? So that's the second guideline. The third is the verifiable. The student should be able to verify this value on their own right. So we need to create that conducive environment for the verification. And this conducive environment can be created not by imposing the proposals on them. If we keep imposing, you should do the respect. This is not the language of universal human values. You should be happy. No. You want to be happy or not. You want respect or disrespect, right? This is the process of value education which helps in verifications of this proposal. And the last important thing, that the content leading to the harmony at individual level, family level, society level, nature and existence level. So these are the guidelines of universal human values. And whenever we share the content of UHV in the classroom, we shall keep this guideline on the background, and on the basis of these guidelines, we can share the content. Any question here? Okay, this part we already covered, understanding thoughts, behavior and work. So this is the process of value education. The process is of proposal. So when we are placing the proposal, take your time, okay, and don't be in a hurry if the student is not able to accept it. There is a possibility that 10%, 50%, maybe more than 50% of the students will not be able to accept the proposals. But still, we just put it as a proposal. So whatever is said in the proposal, verify it on the basis of your own right, on the basis of your natural acceptance, and this is the natural acceptance. So we can always verify on the basis of our natural acceptance. When we see this process of self-verification, it has 2 steps. The step number 1 is attentive listening to the proposal. You want to be happy or unhappy? Just by answering happy, will you be happy? No. This is just first step of the proposal. Trust or mistrust? Trust is naturally acceptable to you. This is the first step. In the first step, we are only verifying the proposal on the basis of our natural acceptance. Is this enough?
efforts are required, right? So, relationship is naturally acceptable to me, then this proposal on relationship will help me in development of understanding about the relationship. Okay? So in the first step, I am asking this question to myself, relationship or opposition? So the naturally acceptable answer is relationship. Now I am taking this proposal to develop my understanding about relationship. I am studying relationship now. ठीक? जब हम पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे, उससे हमारा कॉम्पिटेंस डेवलप होगा, एबिलिटी इंक्रीज होगी, और इस इंक्रीज एबिलिटीज के साथ में हम स्टेप नंबर 2 कर सकते हैं. स्टेप नंबर 2 क्या है? एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन ऑफ द प्रपोजल. क्योंकि सारी जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है? जीने की. लिविंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ईच वन ऑफ अस. If the feeling of relationship is naturally acceptable to you, then develop this feeling of relationship and live with the feeling of relationship unconditionally and continuously with every single human being around you, and see the result. Are you in harmony or disharmony? This experiential validation is required. Correct? After passing through this experiential validation only, you will get the confidence. And with this feeling of relationship, when I am interacting with the other human being is feeling that harmony or not. Whether it is leading to the mutual happiness, whether it's leading to the mutual prosperity. So through this, I can do the experiential validation of this proposal. जब जीने जाते हैं, तो कुछ इशू आ जाते हैं, right? I'm able to have this feeling of relationship towards my wife for, let us say, Monday to Friday. But Saturday morning something happens. So instead of this relationship, again that opposition comes in. So again, I have to take efforts for the development of my right understanding. So again, exploring the proposal, developing the ability, living with it, experimenting, whatever I am able to understood, I will be able to live with it. जो नहीं समझा है, वो मैं जी नहीं पाऊंगा. It's a continuous process, right? This is the continuous process till the completion of right understanding for them, which means till I develop the ability to live in continuous happiness and prosperity. Every moment's harmony with them. So this is the process of self-verification. Any question here? How many of you think that after 8 days you are going to be happy? Very good. Let's have this confidence. Nothing will change. Right? Why after 8 days? Yeah. Let's have this confidence that not many things are going to change after 8 days. Because, we are talking about this transformation of our understanding, our feelings, our thoughts. Unless I involve myself into this continuous process of self-exploration within, nothing will happen. But if I involved into the process of self-verification within, the things may start happening even right now, right here. Now tell me which process is naturally acceptable to you. The process of self-verification, where I am also taking it as a proposal and I am placing it as a proposal to the other, or the process of do's and don'ts. The first or second? How many times we use the process of self-verification in our family interaction? With our friends, with our colleagues. Mostly, we say do's and don'ts. You do these things or you don't do these things. Now you tell me, if I start imposing these do's and don'ts on you, will you be able to accept me? No. That is the reason the people have rejected us.
right? That's the reason my own child had rejected me. Because every now and then I impose the things on my child. Do these things, don't do these things, don't do these things. This is not naturally acceptable to any human being, because every human being wants to take the decision on its own right. So we can help others in developing this capacity to explore within. Right? So that's the process of exploration. So what we discussed in this particular session, I'll just quickly sum up. That, I guess there is no need to discuss on is there any need of value education now, because there is a need, right from United Nations to UGC to AICT to our college and to myself. Every individual is able to see that there is a need for value education, and that is the reason it has become the part of our curriculum. So if this has become the part of our curriculum, then the option remains on us to understand these universally acceptable values through the process of self-exploration for the fulfillment of our own basic aspirations of continuity of happiness and prosperity. So this much we have discussed today. Now we'll take a short break. After the break, this 5 to 6 o'clock is small group discussion time. How many groups are there, Didi? 3. Okay, so there are 3 groups. Didi will inform you about the groups, right? The group and the venue of this group discussions. In the whole day today, we had a lot of proposals and discussions in the big group. So sometimes, our questions, our sharing. So since today is the day 1, in the group discussion, what we'll do, we'll get introduced to each other. And then whatever we could learn through today's proposals. See, what is the meaning of learning? I have understood right understanding relationship and physical facility. That is not the learning. It's basically concept. But then there was a proposal placed, and I explore this proposal. Through the exploration, I'm able to see certain conclusions. So how that exploration part, as a sharing we can place in our group discussions today. Thank you for the day. See you tomorrow. Namaste. Listen many things carefully, whatever sir has given the idea, and there is acceptance and universal acceptance. The 2 concepts I could clearly understood, and then values also about the pain, what example you are giving. There are some doubts are there in the mind, but why it's a value. So why we should call it universal, and at this moment universal, will it be required for all the things or not, or only human values? We have to restrict. That is what my question is. Yeah, every unit has a value, and the value of every unit is definite. Not only human being, but every unit. Yeah. Also from Pune, Sri Balaji University is working place. I am teaching management students. Okay, fine. So over here, when it comes to universal human values, entire day we have learned many things. My takeaway, which I can club into certain things into one particular formula. As Sir is from mathematics, I'm also from statistics. I can talk about the Venn diagram. Venn diagram, I think everybody can relate to it. So in that Venn diagram, the universal set is the universe, which is talked about, the existence of a human. Over there, I may have a unique feature, which could be one of these sets, set A. Or probably that unique feature I may align with somebody. So there could be an intersection between me and my partner, probably, or my friend, or my mother, or whosoever. So this is how we need to try widen the intersection between the possibilities of spreading human value. That is what I have understood so far.
Myself, Mrs. Rupali. I'm from the same college. I done UHP 1, first face-to-face UHP 1 workshop from my college only, last July. Then I done UHP 2, PVG face-to-face. This is third workshop. But every time we are getting chance for the self-exploration. Today, lot of things we discussed. But one thing I would like to again tell you all, if we have the right understanding, then we can behave rightly, and we can have behavior is right. Then we have right thoughts. So that is what. So as a most experienced person in this country. Three years. Yes. If $650 billion is spent on education of the students, health of the African community, they will be on par with Americans. So we have to respect humans on an equal term. Then only there will be a change in the society. The moment you have different values assigned to different human beings, there will be always an inequality and will not have an equitable society. So again coming to discourses, so that if we can make a difference to the students, go to the class, talk to them that you are as good or as bad as the person sitting next to you, irrespective of your score, irrespective of the religion you come, irrespective of the money that your father earns. You are as good or as bad as the person sitting next to you. That's it. Thank you, sir. In addition to his comment, one comment also you have made, 30 times nuclear weapons are now they are investing in that. And you said that it has no use or anything like that. But still, because of competition or something, they must be going, I don't know, to be a supremum or superior, something like that. That way, maybe the... And regarding this, I completed UHP 1 last year, and this is my next second FDP UHP 2. My takeaway from today is that, universal human values is not a empty workshop or something. It is a way of life. It is a way of life. First, we need to inculcate in us. Then only we can, reflect it upon on others. That's the first one. Second one, happiness is, we say continuous process. We want, all of us, this is the nature acceptance. We want happiness, we want prosperity. But the question is how? Here, I'd like to quote one example. A few days back, I was going through one document. There, I found one of the most happiest tribe. We could say, they found in the jungle of Africa. They live like a tribal, completely away from physical facilities like us. But they are considered as the happiest one. They sleep only for 4 hours at night because of the adversity of the jungle. Snakes are there, wild animals are there, but they are the happiest one. How? 2-3 things they take into consideration in their life. First one, in their language, there is no past tense, there is no future tense. Their language is present tense. If something happens with their children, anybody else, the entire people take care of the other person. So they don't have to think about what will happen if I pass away, who will look after my children. So this is what the mutual connection is there. It means what you narrated actually during the workshop, I could easily relate it to that. Since they were living in the moment, and next is entirely mutually connected. Their societies develop on the basis of mutual relations. So that's my takeaway. If we want to bring a continuous happiness in our life, we need to foster upon the relationship we have with others. Myself Dr. Sunashna Vispute. I'm from Mumbai and I'm an MCA professor. Basically, Which college? Kirti College, Deccan Education. Basically, I'm an MCA professor. We have 3 campuses. In one campus, we have 3 institutes. So, Naveen Chandra Mehta Institute, so MCA and MMS College. Campus is Kirti College campus. So, first thing, I have completed UHV 1 last year, and this is the next level.
Since morning, what is takeaway from my side is, I think we have one habit. We are always thinking that everything is right or wrong, and that's why I think lots of queries are like that only. कि मैं ये कर रहा हूँ तो ये सही है ना, मतलब वो situation ऐसा है. I'm not pointing out anyone. Only thing is कि today's moral is what you are thinking. No, you have to categorize it. If I'm thinking, is it a natural acceptance or it is only acceptance? So it's a self. I think acceptance is much more important for today's session. What you are thinking, what you are behaving, first understand that. कि if you are reacting like this, if you are behaving like this, वो कौन सी category में जाना है? So universal values में आपका thought process, आपका thinking कौन से category में जा रहा है, ये आपको पहले समझना है. क्योंकि अगर हम लोगों को अपना सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगा तो वी कांट अवेयर स्टूडेंट और वी कांट टीच स्टूडेंट कि तुझे ऐसे नहीं ऐसे बिहेव करना है, बिकॉज द कोर वैल्यू इज दिस. सो दिस इज माय टेकअवे. Working as an assistant professor in the Chinese College of Engineering from the mechanical engineering department. So after attending today's session, I learned that to remain in the phase of the happiness continuously, first we should inculcate habit of right understanding of any kind of situation, and instead of reacting it to the particular situation, we should start responding it. And during that, and to keep myself happy, to remain in the phase of continuous happiness, I should first change myself. Then I should try to build a proper relationship with my family, friends, and other members in the society with the right understanding. And so that if I am able to do these things, then I can participate in the mutual happiness and the prosperity of the society. Hello everyone, I am Dr. Chaitra from BMS College of Engineering. From BMS College of Engineering, Bangalore. I teach mathematics for engineering students. I have completed the UHP1 online in 2021, and I was so impressed by the course that I wanted to do a face-to-face FTP, so I am here. So I think most of you all have covered whatever was done in class, but I just want to take one example. It is the speaker himself. The very first thing what he said was, you have to listen to whatever the other person is saying before you respond. And this is exactly what he did from the morning till the evening. He was patiently listening to each and every person. He never responded unless the other person completes his conversation. So that is my greatest takeaway. Good evening everybody. I am there as an assistant professor teaching in ENTC department. First time I am taking this UHB 2 subject in my department and I got this opportunity to attend this workshop. So today's takeaway from today's session, that is 3 priorities, proper priority for continuous happiness, that are the your right understanding, then relationship, and then after least priority for the physical facility, and proper differentiation between a right value of a right, of anything like chalk, like person, and of a human also. Human's value will be there if he participates in that. Likewise, his value for himself, if he takes care of his body, if he takes care of his soul, then he is having some value for himself. If he is taking participation in his family, some family decisions, then and then only he will have some value in family. Generally, someone says that he is not having any value in his family. That's because of his participation. His value will be decided by himself only by participation.
That is the greatest takeaway. And one that is your takeaway will be that the speaker gets sessions by gently he takes towards the points and clears them. Besides too much his theory, too much discussions, he proposes some questions and later on he comes to the conclusions and summarize it. That is all about the today's session. Because although working as a director in just training and training, I have done usually one online work that long back. That was a gap, so I thought I should do one face-to-face program, and that's why I did it. My takeaway will be because there are certain things, so many things once the discussion started, I was like, okay, I fit into this, I don't fit into this. So right and wrong. So understanding that, and then how do I inculcate in students? Because what I see, because this generation requires this inculcating of these human values when they talk, when they respond to the, because I am relating it to my placements, because I see there is a company, we run behind the student, this is useful for you, and he is like not bothered, like, so how do I use all these whatever learnings I'll be doing here, and how will I be able to make that change? That will be the most important achievement for me after this program. And if I put it in my whatever process is there, and it affects the students, it changes the mindset of the students, that would be my biggest achievement. Good evening, I'm Jivita, I'm from Tamil Nadu. So I teach nutrition and dietetics. So I'm from Vivekananda College of Arts and Science for Women. So this is my first UHV, and I think we are the first kind to attend this kind of FTP from my college. So my takeaway today would be like, in schools generally we used to study the paper well education, but we never inculcated. But today I honestly realized how important the human values and the importance of well education, because I belong to a partially medical background, and most probably we also treat patients, so I connected with that point. And as a teaching profession, we also play the important role, because from whatever we learn here, we are going to directly teach to our students. So today I really came to know the importance of UHV, because I don't know I'm the first one, and how it plays the major role in holistic implements and all. So the importance of listening and understanding a concept, building a communication, so breaking barriers. These are the small concepts which I understood today. So that would be my takeaway. Thank you. Yes, good evening all. Myself, Balasab Gadekar, assistant professor. I am teaching here for mathematics last 20 years. I attended one FDP last year. Today's session, most important thing what Madam rightly said, whenever any proposal is there, listen carefully. With right understanding, try to understand it. If you have any experiment, then we can do it, and then try to understand what is the proposal, and then give the response. That is the most takeaway from this lecture. What do you do? Good evening. Good evening. What do you do? Yes, sir. Good evening, Honorable President here. I am Dr. A. Vadivelu, Assistant Professor of Department of Economics. I am coming from Tamil Nadu. Same both are, we are Vivekananda Arts and Science College for Women in Autonomous. So this is first time attending UHP program. And another one is today's session is very interesting, and session, our session is very interesting, and very interesting of this session for myself, understanding of the value education. In value education means individually every unit or participation in large number of the human value. Say example, individual value or group of the value. Say example, I understood. So individual value means it is a in whole society or whole family. Is a valuable of my point of view.
And another then group of values, it is a separate. So my point here. Another one is it is a society and nature. So society means it is an example of the any one good culture and good value for in any one reasons for it. It is following of the other than people. It is a group of people means. Good. Yeah, in fact, when we say individual and then family, what is the meaning of family? Family means it's group of members. Small unit. Individuals, right? And now we say society. So society is a group of family. Which means individuals. Correct? And then we say nature. So nature is the collection of units, different units. And one of those different units is human beings. So it's me who is there everywhere. Many times we do this compartmentalization of individual life, professional life, personal life, social life. Is it possible to have this different type of life? It's not possible. It's me who is into all this. So I can't have my personal life and professional life different. It's the same. It's me who is taking the classes in the college and I say professional life. It's me who interact with my child in the home and I say personal life. So whether it's a personal, professional, individual, social, everywhere I want to be in a harmony with them. And with everyone I want to live with a feeling of relationship. That is the value. So one simple thing is living harmony with them and with the feeling of relationship with everyone. So that everyone includes every single unit which exists in the whole existence. So that is the meaning of values. Values based on Dr. Venushri. Yes. So I am Dr. Venushri and I am teaching English language here in JSPM itself. Recently I have completed UHV 1 and I am Art of Living volunteer. So somewhere these topics attracted me a lot. By default it attracted me. And like today what I learned, like till today I had this thought about if your behavior is good, you are good. Everything, like if your karma is good, everything is good. But today I learned the relationship between understanding, feeling, thought and then behavior. So till today I was just moving around behavior, karma and everything. And I have this question when it comes to natural acceptance. So I have this question in my mind, like as a woman, we are accepting so many things by hook or by crook. Like we doesn't want to do few things, but we are accepting it and we are believing that we are accepting it naturally. Or we are seeing our grandparents or we are seeing our grandmother, mother, they are also accepting everything. They are not denying to do something. They don't. In fact, they don't realize that they don't want to do. So what about this? That as a women, we are accepting so many things by hook or by crook, and we are realizing, okay, this is for us. We have to do this, and we are accepting, and we are thinking that okay, this is naturally we are accepting it. Exactly the same thing we were discussing. Yes, like this happens. It is. See, It's a pressure from coming to generation. negotiation, compromise, adjustment is not natural. Because with all this, you are in disharmony. So when I say natural acceptance, which means I am in harmony with it. Okay. So we are accepting many things. We are accepting many things as norms of the society, as the traditions, as the customs. But when you understand, like I tell you, one of the examples of this faculty, lady faculty, she said that in her family system, after the marriage, she said that every day when I get up, I have to touch feet of my mother. And every day before I go out to bed, I have to touch feet.
for the past 15 years, I was feeling this as a huge burden on me. Why do I? Every day morning and every day evening, before I go on the bed. But now I understood that I want to live with a feeling of relationship even with my mother-in-law. So maybe I need to learn how to control myself and develop, kind of a little more sensitivity towards everyone, irrespective of whose kids they are. So that's it. Thank you, everyone. Hello everyone, myself Sujata Lavande. I am not from teaching faculty. I am an architect in Mada. Maybe you all are having this sessions now, right? Yeah, In August. I'd like to share this with you that MIDA will be having activity with all those officials. They will be having trainers who will be having the sessions with them. That is the good thing, and it will be happening in August. Yes. So I think she is coming to have a highlight. I was going back to where I started my journey. I was searching for my answers, not like for teaching like people, but I was searching for my own answers, and I found meditation like Vipassana and all that I did. Then I came to know about this Jivan Vidya and the book which I read about written by Manish Sisodia ji, and I came to know about this concept, and then I did workshops, not many workshops in lockdown period, and then in 21 I did UHD online, and this is my first offline workshop, and what I found is how can I use this in my actual life. So I can see a lot of transformation in me, like everybody has a peer pressure. So that is what happens in our life, day-to-day life. And what today sir told that value education. What is the human value? We know the values of everything around us, but we don't know what is our value. That today also we have seen. We don't know what is human value. So when we are harmonious within, then only we can participate around us. So that is a very important point what I learned, and that is what I am implementing and trying to learn every day through like observing myself throughout the day, and little progress is happening. Any changes you have felt or somebody has felt in your family or in your work area? Lot of changes. There are few newcomers, so that might help them. Yes. Lot of changes have happened to me. Actually, right now also I am not very comfortable talking to people. This is happening because of, I can say, UHD. I could see what is sensation I can feel, and I am slowly overcoming this. I am not very comfortable talking to people. So, like sharing, always this happens in the workshop, and this is making me little comfortable every time. I can share whatever I want to share. Most of the points skips, but still I can share. So this is the one major change what I have seen in myself. In the family, I have harmonious relationship with my husband, my kids, and all. My mother-in-law, which was not previously. This is, and in office also, I can talk to my every staff without shouting on them, without scolding them, and I can handle them very peacefully, because previously when I was like the same person. I was not scolding anybody before also, but this after doing this, what ensures me inside that if I am talking nicely to people will not going to make use of me or taken for granted for me. This thing has removed from myself, and I can talk anybody with nicely and softly, and I can put my point across. So that is the change I can see, and many more to come. Thank you. Thank you. Namaste all. I am Dr. Maruti Kenatkar from Pimpri Chinchwad University, Pune, from School of Liberal Arts. 3 takeaways. First, I am the only person who can make me happy, and my happiness
should not get affected by others. That is the first takeaway. Second is, I have to give more time to my family and friends. That is the second takeaway for myself. Third one is, I have to contribute something to this holy process of making this world a harmonious world. Thank you. Good evening, I am Sandeep Kisway from PCCU, College of Engineering, Intelligence World. Friends, this is my second UHG setting. Here I had attended first one. But first of all, I would like to share the important takeaway from UHG first. When I attended many times, as today only I have completed 18 years in the teaching. But here I have one question that there is a huge gap what we learn and what we face actually, what I learn and what I face. So when I joined that UHG first, that time I realized that that gap is actually there, but I am the person who is there to feel that, and I always think that somebody else will work on it, but I have to work on it. That is the takeaway from it. And even three things I learned from that: harmony with self, harmony with family, harmony with society, harmony with nature. But that time I realized that at the age of 35 to 45, at my family relation with my daughters and my wife, so there is no even single conflict within this year. After completion of this UHG, I would suggest to all people, those who have actually at this stage, and that because in family, the expectations to the joy of our life. The same thing is happening with me also. As family is growing, expenses are increasing, so these things was happening. But after attending UHG, I understand. Means I take one feedback and I try to understand it and then respect also. Lots of changes happens within me. And today's session I learned many things. Actually, I firstly realized that as in our session they have given an example of bank. So really it is eye-opening session to us that how if we not upgrade ourselves, then there is no existence for the teachers. So that anyone as the changing scenario, when the students are is far ahead than us. So though I had read 2,500 books and completed 5 masters and more medicine and all these things, this will not work in actual in today's classroom. So through this session, we learn that yes, still we have to upgrade ourselves and we have to work on yourself. You are the only one person that you should make you happy. Your happiness should not rely on others. That is the one thing. And another one thing is that actually take less and give more. So that is the thing. And always, rather than blaming others or blaming what things are happening, we have to just keep positive and work for the nation. Thank you so much. I do not have this thing or that thing. That gap creates unhappiness. So I have to work hard to make that gap lesser and lesser. We cannot completely get rid of that gap. मैं ये नहीं कह सकता हमेशा मैं हैप्पी ही रहूँगा, हमेशा हैप्पी रहूँगा, कोशिश कर सकता हूँ, वो कोशिश मैं रोज़ कर रहा हूँ, कोई ना कोई बहाना ढूंढ के। सेम चीज़ मैं अपने ब्रदर की बात करता हूँ, मेरा ब्रदर बिजनेसमैन है, मेरी फैमिली पूरी बिजनेसमैन है, मैं अकेला ही एक टीचिंग उसमें आया या किसी प्रोफेशन में आया, उसकी एक अपनी हैप्पीनेस की एक अलग थॉट है। उसकी एक हैप्पीनेस की थॉट ये है कि दैट वी ऑलवेज लुक फॉर द पीपल, जैसे कोई ठेले वाला है, कोई सब्जी वाला है, कोई भी काम कर, अगर वो खाली करा, कई लोगों के पास रश होता है, हमेशा देखते हैं, कई लोगों के पास रश होता है, वो खुश हैं क्योंकि उनका काम अच्छा चल रहा है, पैसे कमा के जा रहे हैं,
और एक बंदे की शक्ल के ऊपर वो हुआ कि उसके पास ज़्यादा आज कमाई नहीं हुई, तो वो ऐसे लोगों को देखता है जिसकी आज कमाई नहीं है, जिसके पास ज़्यादा लोग नहीं है, तो वो उससे परचेज करता है और हमें भी कहता है कि उससे परचेज करो ताकि कम से कम उसका काम चले और वो खुश हो जाए, उससे उसको खुशी मिलती है। तो हमें जिस काम से खुशी मिलती है हमें अगर हम ढूंढ लें, we find that thing, then that creates or lessen the gap between what we want means the happiness जो हम हमेशा चाहते हैं और जो आज हमें मिला है अपनी वजह से। तो अगर हम खुद ही ऐसा एक्ट करेंगे, वही मैंने हमने यहाँ पे पढ़ा कि अगर हम खुद ही एक ऐसा एक्ट करते हैं, हम अपनी पॉजिटिव थॉट को लेके चलते हैं, तो अल्टीमेटली हमारा एम जो हैप्पीनेस का है वो कम हो सकता है। वेज अलग हो सकती हैं, आप किसी चीज़ में हैप्पीनेस फील करते हो, आप किसी चीज़ में करते हो, बट अल्टीमेटली वही हाउ वाला पार्ट आ गया। मगर व्हाट तो वही है कि हमें हैप्पीनेस चाहिए। यही चीज़ मैंने जो अंडरस्टैंड करी है यहाँ पे अभी तक। थैंक यू। That is physical facility. Means जैसे कि I am working as a lecturer, so I am getting the salary. So physical facility is essential. For example, it is a classroom, so it is having the nice LCD, blackboard, and marker. Yes, that all. It is a requirement because to increase my effectiveness in the teaching. As well as equal is that the harmony. So harmony. So I starting from myself, my satisfaction, then my family, because since I am working from 9 to 5, and if I am giving time for my society, for my family, means every day I am calling on my mother. Weekdays, weekend, I am spending my valuable time with my family, and coming back to the college again. So that is my satisfaction, and if I will be able to give the time for my society, for my family and mother, then ultimately they are satisfactory. So that is my happiness. And next time is that my job is teaching here. So many times here I got satisfaction. So whenever I am teaching, then I am able to interact with each and every student among the all 60 students here directly, so that I can share my directly when I am teaching the science. I start asking their names. Then from where, from which region you are, what is the specialty from that region here. So that is, and then when I am able to talk with the students with full satisfaction, and I am able to track the queries of all the students here, so that is actually my satisfaction. So whatever the students will be happy, so that I am getting the more satisfaction. And even I am very, even though because nowadays teachers are having the many responsibilities, teaching apart from teaching, rank, NRL, whatever that here. So somewhat it is that we are giving the lesson of the students, but when students are asking the query, where I am free, then I will call the students and I am trying to solve the queries of the students here. And when that is actually my satisfaction, that I am giving the justice all the students for the teaching. Okay, so that is the thing. And another thing is that here in our college, apart from the students, I am having the good interaction with each and every faculty here. I am talking with respect to them. That is, I am taking the help from them. I am helping them, and even the mouses, whatever the college. So I am interacting with every component in the college. I am sharing the thoughts. So I think that is a full harmony, and that is actually the satisfaction. I'm teaching biology. And the way I will handle it later, there will be difference. I tell you one small example. From 1st, 2nd, and 3rd of July, this July only, there was an introductory workshop at Tatta College of Engineering.